How you finish very important in the short contest of 6 overs against the southpaw. He's just been instructed by the pavilion to access the leg side, but there is protection on the onside here. Man at deep square leg, man at deep mid wicket. .35 the score. Current run rate 7. Good leave there. Cool as a cucumber, this man. Sony, like I said, a left-hander, very, very important in any lineup. Just to get that variety in your lineup and ask the bowler to do something different. Really go away from their plan A's and plan B's. Starts off with a wide here. Scores on 35. Full ball! Hit away. There is a man there taken. Another simple catch taken. The ball seems to be on a mission to find the fielder's mittens. It was a full ball, an error delivery. But the batsman just couldn't get enough power there. Was better off trying to go over cow corner, over mid-wicket. Sony has to walk back. The idea was right. I think he wanted to go over mid-wicket there, but the bat face turning in his hand at the last moment goes a little straighter, and there was a man prowling there like a tiger to take another catch. They might be at the risk of getting bowled out here with 7 wickets already lost, 5 balls remaining in the contest of the first innings. Right arm over the wicket to the new man in. Gets the under edge. There is a man at short square leg who will keep it down to a single. The score is on 36. The score is on 36. Elvis. Tailenders not usually the best at dealing with movement in the air, but you can feel that the batsmen are under pressure here because they've lost wickets, their batters have not scored runs, and those deceptive slow balls, very difficult for the top order batsman to pick. Lower order batsman, it becomes even more challenging. Oh, this is in the air. Another chance, another catch. Oh, it's wickets galore here. Who says cricket is a batsman's game when you have bowlers who are running havoc? Here at K.S. Hegde Cricket Stadium, another slower delivery. Batsman trying to force the proceedings, but doesn't really make it into the scorecard. Another wicket falls. The score will move on to 36. What an over this. What an over here from Elvis. Dr. Prajwal is the new man in. Can he get those lusty blows? Get some respectability into this total, which is languishing at the moment. Oh, this is in the air. I think he's got enough of it. No, he hasn't. Another wicket goes down. Oh, can you believe it? The ball is on a mission, I tell you, to find the fielders. It's as if there's a magnet on the ball and it's getting attracted to the fielder's hands. Excellent captaincy this. He's got the right men patrolling the right areas, the right hotspots on the ground. They're taking their chances. Any ball that goes up in the air inevitably finds the fielder on the fence. The score is stuck, I tell you, at 36. 1 ball remaining, 1 wicket left. Will it be a sixer? They're hoping, they're praying. Omkar, the captain, is moving around the ground with a bit of anxiety. I don't think his team has got enough here. It's a runner ball total at the moment. Will it be a big finish? No, it won't. Drill down the ground. Chance for another non-strikers, and the ball is looped
to the non-strikers and eventually will result in a run out. The score will be on 37 after the completion of 6. It is a monumental comeback from the fielding side. They look dead and buried after the first couple of overs with 18 on the board. But the next 4 overs, they've only conceded another 19 runs. Kudos to the fielding side. The Black Mambas have beaten their opposition black and blue in the first innings there. Captain will be very happy. He'll be very happy with the effort that his team has put up. 36 runs were scored of the first 5 and then a single off the last ball. 37 is what they've got. Eagles, they were soaring high in the first 2 overs but then had to crash land due to an economical performance by Black Mambas, reposing their faith, their trust in the captain's decision to chase first. Well begun is half done, they say. It's going to be an interesting chase here, but all the cards right now with the Black Mambas. The team wearing black and white have got a task on their hands at the moment. With 38 to defend of the 6 overs, it's going to be a mammoth task for the fielding side to defend. For the batting side, they don't have to do anything spectacular here. All they need to do is get that odd boundary and rotate the strike and they'll be scot-free. They will reach their target. What a sensational death bowling effort there earlier in the day. Just a bit of statistics here. In 2012 and 2016, in the T20 World Cups, when West Indies won, they had the best economy in death bowling, and that is why they went on to win both those trophies. Very, very important in a short fixture like this, 6 overs. Defensive bowling can sometimes be really the advantage, the edge that the teams need. Unusual bowling action there. Not the start that the captain would have wanted. I request the captains of Bypass Brigades and Raj Blasters to kindly report to the comm box for the task for the next game. Bypass Brigades ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನತ್ತ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. Here back live here Hisham. Skiddy bowler. Right arm over. Full delivery down the ground. Beautiful looking shot that. Pristine on drive. They say if you get the on drive right, it means that you're in good touch, because that shot really requires exceptional balance and timing to get that single away.
Rahul is off strike. Not surprised someone named Rahul gets off the strike very quickly with a single. Our state especially has a rich history with producing cricket players named Rahul. So that's a good delivery. That's a good delivery. No, it isn't. Umpire disagrees with the com box. And he says it's a wide and... I request the umpire to just hold on for a minute. Is that wide plus 2? Yes, yes. Clear, clear. Oh, that gets the top edge. Dangerous delivery that. That's one way to get the batsman out to take him out. But it was dipping at the last moment. So it will be a couple of runs that is added. Just a couple of runs there. Batsman looking to heave it on the onside. Can be very difficult to pull a full toss because as a batsman, you're more often than not looking at the pitch. But sometimes when the ball comes at a beamer height, it becomes very difficult for you to gauge the speed of the ball. And another couple of runs taken. Sloppy fielding that. When you're defending a low total such as this, you really have to be up and about. Put your bodies on the line. Show that desperation on the field, which is missing at the moment. Somebody needs to provide that source of motivation or inspiration on the field at the moment, because right now they look down in the dumps. The fielding side, this is short. Let's that one go. Another wide. Another wide here. He's not getting his line, neither getting his length at the moment. Oh, Hisham. He's under a mountain of pressure here. The captain doesn't look happy. The shoulders have dropped in the field. He's got a task on his hand, has Hisham. It's never a good sign if the umpire is having a chat with the bowler. Maybe he's tired giving wides at the moment. Some discussion there with the captain. Some discussions regarding the tram line there. Remember, the tram line is only relative. It's just a guideline for the umpire to make that decision. There is no hard and fast rule regarding the wides. At least tries to play the expansive cover drive. On the up, always dangerous. Finally, Hisham finding his radar right. Pulls the length back ever so slightly. Batsman pressing on the front foot. Throws his bat at it as the ball leaves the outside edge after pitching. So there is some deviation of this track. Oh, this is in the air. This is banged away on the outside for the first maximum of this tournament. Full toss, begging to be hit, and the batsman obliges with a scintillating shot over deep square leg. Oh, this is an expensive over. The game could be done in the first 6 balls here. Dilip. I request Dr. Manjunath and Santosh to kindly report to the comm box for the task for the next game. Bypass Brigades ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. I request the captains of Bypass Brigades and Raj Blasters to report to the comm box for the task. The score is on 17. They've knocked out almost half of the runs in the first over. End of a marathon first over. Oh, that was longer than some of the soap operas that we see on TV. I will tell the final 11 after the toss. Taking his time to get his run up right. The bowler, Govind, did walk on to bat, but that doesn't really narrow it down. Everybody walked on to bat from the fielding team right now, but against Rahul, who got off strike and enjoyed the show at the striker's end. Oh, this is magnificently played. Up and over the man at long off. A terrific shot that. A cricketing stroke, gets his foot to the pitch of the ball and swings those glorious arms to get a towering 6.
Oh, that was big. The ball was still going up as it crossed the fence. 2 back-to-back sixes here, and the batting team are well on their way. 13 coming off the last 3 balls. He is in a hurry to get this game done. Is the batsman. Goes again, this time flatter, this time straighter to the man at long on. Gets that single. He's sprinting like a cheetah out there. Makes his way to the non-strikers end with the score on 24. They just need 14 more to get home. What a start this is. What a start this is. It's not just a message to the fielders there, but also to all the teams around the ground that they are a power-packed batting lineup. What an opening stand. Bang on the outside. He had to take that, jumping in the air, burst through his fingers. Had to time that jump perfectly, but before he could make that calculation, the ball had zipped past him to the man at deep mid wicket. Will be a single, but more importantly, it's the wrecker in chief. It's Dilip who's on strike. 2 sixes in the 2 overs. I don't think he's showing signs of slowing down here. He's in 6th gear already. Down the ground. Oh, he lets that one go. I think they're thinking of a second here. Gets the single away. The score is on 26. Encouragement from the dugout here. His teammates are happy. They are ecstatic at the moment because this partnership is taking them across the fence with relative ease. Oh, beautiful. Deft touch. Vacant. 3rd man region there, and it will be 2 declared by the umpire. Uses the pace of the bowler there. It's not just slam dunk cricket. Sometimes those deft touches so very important in this game. He's rotating the strike. He's getting those runs. After the end of the first over, JK Eagles were just 5. That is the difference in quality between the 2 sides. Gets that single away. End of the second, is it? End of the second. The score is on 29. The current run rate 14.50. Required run rate was 6.33 at the start of the innings. But right now it doesn't matter. Those are all redundant, irrelevant details. As 8 runs are required in 24 balls. How the fielding team would like to play the Uno reverse card and reverse. And reverse the calculation here. Nine runs required. Hisham has been given the second over. That's a gamble. That is a gamble. Foolish delivery. That beats everybody. You can see that the ball is nibbling in the air a little bit. Tries to play the cover drive. Rahul, the only job that he's got is to get to the non-striker's end. That's the safest place to be. But at the moment, get it back to Dilip. When you play tournaments such as this, net run rate is also very, very important. So when you get ahead, you have to make sure that you really finish the game off early. And this is in the air. No ball, says the umpire. It's gone straight to the man at deep square leg. The arm is out. Nobody's celebrating because the call was early from the umpire. Batsman did swing his bat. Gets that single. Rahul, he's wearing a jersey number 1. I think that's also his favorite stroke to get that single away. It's been a good opening stand, but Dilip will face the free hit ball as he drills this, hammers this ball to the man at long off. Gets that single away. He's kicking himself, isn't he? It was a full ball. Very difficult to get underneath those Yorker and deliveries. Missed his mark only by millimeters, the bowlers. But Hisham, good comeback. This very good comeback after being carted around in the first over. This is slapped. A terrific shot. Class stamped all over it. It was short. It was wide. And he leapt on it like a tiger. Room for the batsman, and he obliges
with a blistering cut shot, a ferocious shot that gets that boundary. Does Rahul? I think he heard us here from the comm box that he was rotating a little too much. Pounces on the opportunity. Has great technique. This man Rahul has got good temperament as well. Sends the baller back. Hisham not happy. Hisham, most expensive bowler of this tournament so far, but we are still in game one, so you can excuse that a little bit. Beautifully played. Beautifully played. Again, using those supple wrists to get those couple of runs. And that's the game. That is the game. A comprehensive, dominating, decimating victory for the batting side. As they end their chase on a high, the captain will be very happy. They won the toss, decided to field first. Both his batsmen and his bowlers have really come into their own. Game number one, usually teams are quite rusty, but not this team. Not the Black Mambas, who've put on a literal clinic here, a clinical performance by the Black Mambas, who have outplayed the opposition in all three departments of the game. The deserved winners of game one of KPL. I request the captain of bypass brigades to kindly report to the com box. Bypass brigades ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರ commentary box ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. There seems to be a discrepancy here in the team sheet. I request the captain of bypass brigades to report to the com box. We have the team sheet of bypass brigades here.
I request the 13 men of both the teams to come into the com box. ಎರಡು ತಂಡದ 13ನೇ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. It's a chaser's dream here. We are at game number 2. Bypass Brigade have won the toss and have decided again to ball first. A decision that worked in favor of the team fielding first in the first game. So it's a repeat decision. History of the ground so very important when choosing to decide whether to bat or ball in this limited over fixture. It's the men in blue who've taken the field, and they're taking their sweet time in setting the fielders in the right areas. Uncanny, isn't their jerseys? The batting team look like Sunrisers Hyderabad, don't they? A team that is well known for their batting ballistic in the IPL against someone who looks like Mumbai Indians. Their jerseys remind me of Mumbai Indians. The most successful team in the IPL with 5 trophies, 2 Champions League trophies as well. So 7 trophies for the Mumbai Indians, and as well as 2 WPL trophies. So one of the most successful franchises in the game of cricket. They'll be hoping to replicate that. Bypass Brigades, as they've chosen to field first. Short and wide. Tries to play a tennis racket shot there. Beaten by the bounce and also deceived by the pace of the ball there. Thought it would come at him a lot quicker. Some minor adjustment needed by the batter to get on top of the bounce there. Good start here from the bowler. Oh, tries to go for the swivel pull. Misses it completely. Gets inside the line of the ball. But beaten comprehensively this time. This is a good start this. Shortest run up this man has got, but he's got some wheels. Has Shiv. Bright start here. Over the man at long off. Straight to him, is it? Yes! Oh, that's a big wicket early on. He's gone for a duck. There was room on the offside. For a moment there, he was trying to go over deep extra cover, but gets the inside half of the bat as the ball has landed safely in the kitten mittens of the fielder at long off. The ball was there to be hit. He's pointing at the deep extra cover region, doesn't find the gap, and he finds himself in the pavilion, being no more than a spectator to watch this game. An early wicket, an early breakthrough. This is what the captain would have wanted, having put his team on the field first. They needed that early wicket to get that momentum going. Such an important term in the game of cricket, to have that rhythm in your game. They've seen the back of a right-hander here. Durga Prasad, the new man in, short and wide, tries to cut it. Way too fast, that delivery there. Just throwing his hands at it. Doesn't get bat on ball. The man at fly slip, you can call. I don't think he's a man at short third man. He's waiting for any slips from the batsman there. Maybe something that catches the outside edge. He's waiting for those opportunities. He's the man at the
Third man, and I think he's found the fence, or has he? Yes, an unorthodox shot there. Little bit on the fuller side. The batsman opening up the offside fence. It was full. A dangerous ploy against this bowler, but he manages to get that from the middle and pierces the gap on the offside. Gets that first boundary. So important to really show the bowler that you are full of intent. Very important that you make the bowler realize that if he misses his line, he's going to get punished. Tries to do Control C, Control V there. Doesn't work this time as the bowler just pulls his length back a little bit and gets that dot delivery. The score is on 4 after the completion of the first over. Book cricket at the moment. There are only dots, only wickets, only boundaries at the moment. 0, 0, 0, 0, 4, total 5. The score is on end of the first. The score is on 4. Pratham. Pratham means first. That's why maybe his opening there might be a terrible logic to send an opening batsman. But Pratham has been at the non-strikers end, hasn't really showed us what he's got. Anup, the second over. Goes for the slog sweep. You can see a gust of wind, probably from the batsman there. He swung his bat so hard that there is a gust of wind across the ground. Doesn't make connection though. Gets another dot delivery. 7 deliveries ball, 6 dots, and a boundary. Need to rotate. Need to rotate. The lifeblood of any batting side are the singles. This is high. More height than distance. 2 fielders circling, and it is taken for a moment there. It looked like the ball was swerving away from the man at short square leg, but he stretches his arms out and plucks it out of thin air. An excellently judged catch, and another wicket goes down here. 2 ducks on the scorecard already. Oh, this is a good start. This is an excellent start. The coach of the fielding side, the captain of the fielding side would be very, very happy with the start that the fielding team has got. Bypass brigade. They've done well. They've done well. So important that you win the power play. So important that you restrict the opposition to a below par total, and power play is the key to doing that. They won the power play in the first over, and in the second as well, they've got another wicket, which means both the openers now are warming the benches at the pavilion. Number 3 and number 4 out there in the middle with Anup, who's picked a wicket off the previous ball. Place it down to the bowler. You have 4 fielders converging to stop a single. They're up and about. They're in high spirits at the moment because you have wickets tumbling, and there are plenty of dots in the scorecard as well. The batsmen are trying to survive in a limited over fixture. Such has been the precision and the aggression of the bowling attack here. Foolish delivery this time. Goes for the slog over the offside. Another dot. The pressure surely and slowly mounting on the batting side. They need to get that boundary away. But where is it coming from? Where is it coming from? Doesn't seem to be the case because the fielding has been top-notch. The bowling has been brilliant. Batting side being cooked here. Gives himself room. Gets it over. Only just. It was in the air for a small amount of time. But the ball just swerving away from the fielder at point to get that single. Usually your best fielders are at point. You have Jonty Rhodes, Ricky Ponting, Martin Guptill, Glenn Phillips, our own Yuvraj Singh and Mohammad Kaif. That quadrant of backward point and cover point really changed the face of Indian fielding. But back live here, right arm over. This is shot. This is wide. This is hammered over mid wicket. Has he got that boundary? I think he has. No, as the ball just plugs into the outfield, and he'll get only a single there. Not the best of running between the wickets. I know it's hot. I know it's humid. But you really have to get those quick twos when you can. Get those blood pumping into the legs. Because that is when you have some
runs on the board when you're not getting those boundaries. Important that you keep rotating. Important that you put the ballers under pressure with those quick singles and twos. And put the fielders in the outfield under pressure. Right now, they're not. They know that the batsman will only run a single. End of the second. The score is on. Score is on 7. The current run rate at an appalling 3.50 runs per over. The middle order, they need to come to the party here. They cannot take more time to get in. There is no time in this limited over fixture with 4 overs remaining. The score is on 7. They need some blistering boundaries. They need some sixers. Because right now, the innings is in a coma, it seems. There are plenty of doctors around the ground. But the only man who can get this run rate out of the coma, the batters there. Doctors cannot help, unfortunately. Right arm over to the right-hander. Man at deep extra cover, long on, long off, deep mid-wicket and deep square leg. An orthodox field set. Oh, that ball bounced. Tries to play a shot that was in between a cut and a drive. Played a nothing shot in the end as the ball beats the outside edge safely into the wicketkeeper's hands. This is shot and wide. Goes for it again. Oh, there is plenty of swings here. Reminds me of my dating life. Plenty of swings, very few hits. It's been a sorrow story, this innings. 14 balls. The score is on 7. Current run rate at a 3. Would the captain be tempted for a retired out like yesterday? It was a strategic out yesterday for Hardik Pandya. Oh, this is shot. This is wide. This is in the air. There is a man at deep extra cover who has to take this catch, but he puts it down. He puts it down. The longer the ball is in the air, the more time, the more thoughts in the fielder's mind. It was a sitter. Went straight to him. Had no idea where the boundary was. Thought he was closer to the boundary than he actually was. Tries to go for the reverse here. Appeals. Does the batsman. Usually when the batsman appeals with the umpire, it is more out of desperation. Because you're not getting any runs with the bat. Maybe the umpires can help you out. Tries to open the face of the bat. Another dart. The bowling here is tighter than a jar of pickles at the moment. No freebies given. No free runs given. Extras have not been bowled in this inning so far. As the ball again kisses the outside edge. The dreaded finger has gone up. He's thrown his bat out there. A suicidal shot that wanted to get away from the 22 yards. I request the owner of the Innova car that is parked to the right side of the comm box. I request the owner to kindly park it elsewhere. It's blocking the road there. Innova with the number board KL07 CM5024. CM5024 Innova ಕಾರಿನ ಮಾಲಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request the owner of the Innova car parked to the right of the ground to kindly move it elsewhere. It's blocking the road. Last ball of the third. Driven down the ground. Driven down the ground straight to the man at long off. They're thinking about the second, but will remain a thought. Score is on 9. The score is on 9. He's taking guard, this man, but they need a dose of adrenaline at the moment because it's been very slow. It's been very underwhelming, to say the least. Good throw to the wicketkeeper there. Santosh will be very happy, like his name, to bowl the fourth over because the batsmen are really not getting anything away. Another dot. Another dot at the moment.
They couldn't loan a run from a bank if they wanted to. Such has been the effectiveness of this bowling attack. Short and wide. He cuts it away. The ball will spin. But the fielder at deep extra cover has been encouraged by the wicketkeeper there. Good fielding. It was cut handsomely, but very difficult to get those cut strokes away in a tennis ball game. Full ball, driven down the ground. Fielder has a bit of running to do and another single taken. They're dealing with singles at the moment, the batting side. Raj Blasters, they need to blast their way here. Time is running out at the moment. Is that the first boundary? No, it isn't. Gets the bottom half of the bat there. Gets the Q end. Gets another single. It seems like they've got a cycle to an F1 race. Because the run rate is well below what's needed. And the score is on 13. After the completion of 4 overs. Current run rate 3.25. Someone needs to go big here. They need to go big. Otherwise, this game could be over in the first innings. We've seen in the second innings of the first game that you can still go bang, bang and get those boundaries. But not to be in this innings. So miserly has been the bowling attack. He's come to reap havoc once again. Has Shiv into his second over. Driven now. This time finds the gap. Handsomely driven, I must add. One of the most good-looking strokes in cricket is that cover drive. And a desperate dive in the end. Encouraged by the batting team there. Raj Blasters would be cheering on every single run at the moment because they are at a premium. Oh, that's good. That is looking good. But no, it isn't. Should be taken easy. Taken cool as a cucumber. Oh, that was taken with some swag, wasn't it? Man, a deep extra cover. Jersey number 10 completes the formality. And a struggling innings comes to an end. Nagraj, the man who's played the most deliveries in the innings, is walking back without making an impact in the game. Reminds me of that innings that Yuvraj Singh played in Dhaka 2014 World Cup final. It was India versus Sri Lanka where Yuvraj Singh just couldn't get going. Scored 11 runs off 21 balls and resulted in India going on to lose that famous game. But back live here, Nagraj's innings, he toiled hard. He tried with all his might, but just one of those days where he couldn't get anything away. This is a full delivery, full toss in fact, straight to the man. Excellent fielding, that exceptional commitment shown on the field. That is what you need to see as a fielding group, commitment to stopping that additional run. Every single run counts here. Good to see that the fielding side are not complacent. They're not overconfident, even though they've restricted the batting side. They want to restrict it even more. This is high. This is going. This is going. And the batsman has to go. It was touching the clouds. There's more height than distance. It took off like a rocket, but didn't make it across the fence. A well-judged catch. Another catch taken in the end. Score will remain on 16. Sabinesh's innings ends. He's got some advice to the new man coming in. Not sure what the talk is about. Maybe asking the batsman to target a bit more on the onside. Maybe go over deep mid wicket because that is the natural angle for the batsmen to free their arms, to really have that step and hit. You can see there Sabinesh really telling the batters there why he was deceived with that cutter. Number 23 walks in. Zaid. Very pretty looking bat he's got. Zaid with those pink stickers. Reminds me of Faf du Plessis. In the IPL used to have a similar bat here. Chance of a stumping there. The umpire says it isn't out. Batsman did meander past his crease, but not to be. Not to be. With the wicketkeeper so far behind, always difficult to get those quick stumpings in.
Oh, this is drilled down the ground, straight to the man at long on. Another wicket goes down. Full toss, and the batsmen keep hitting straight for some reason. Very unusual batting this, because usually the batsmen really like going at the cow corner. But low full toss, 4 wickets for Shivu. What a stupendous performance that is. 4 wickets means he's not only got 4 dot balls in those wickets, he's also got those important batters of the oppositions out. 1-1 walks in here. They need a miracle here. At this point, they need something out of the ordinary to get this score above par. Right now, they're languishing at 16 at the moment. End of the 5th, the score is on 16. Can you believe it? Oh, they've not got enough. They've not got enough in this batsman's friendly conditions. With the wind blowing across the ground, you have to make merry. And he does. He does. This is in the air. Once again, and another catch. And another catch taken. The batting team seem to forget how to score runs. Oh, they're just coming to the pitch, looking at the ball and just leaving. Somebody needs to tell them you need to score runs. Not happening at the moment. Just one of those days, off days here for the batting side. They've lost another for 16. If the top order batsman can't get runs, I don't think you can expect much from the tail. Especially in these conditions where the bowlers are bowling these magical spells. They're unplayable at the moment. Anything that goes in the air inevitably goes into the hands of the fielders. And this time an under edge gets that single, a waiver throw. Plenty of encouragement, plenty of chirping that's going on in and around the stadium here. Dhruva, short in stature, this man, very skiddy action. This has been hammered to the onside, and a leaping fielder thinking about a second here. Chance of a run out at the non-strikers, and there is still a chance at the strikers. Let the disappointment set in, did Dhruva. There was a chance at the strikers and as well, had he collected the ball cleanly and had a shy at the stumps, but not to be, Dhruva. That is the first extra of the innings. That is remarkable. That is remarkable accuracy here from the fielding side. They've not given anything away in the form of extras. The bowling coach would be quite happy with the discipline shown by his boys. Oh, that's hammered. That's a good shot in the air. And a sensational diving stop there. Oh, he's put his body on the line, didn't he? Saved 2 runs. One shot, insult to injury for the batting side. All that running only for a single. Beautifully struck that. Gets that single. Hit away on the onside. Should be a single. He is a single in the end. He's a single in the end. The score will be on 22. We are in the final over. And final ball. Can it be a sixer here? 2007 World Cup, Wankhede Stadium. Thisara Pereira hits a 6 to close out the innings, but not to be. Not to be. The batter showing he's no Thisara Pereira. Chance of a run out at the non-strikers end, and it does end. The innings ends as it began. It's a full circle of an innings. It began with a wicket of the 3rd ball, ends of a wicket in the last ball, and they've restricted the opposition to a paltry 22 with 23 to get off the 6 overs. Well begun is half done, they say. And I would say this is 80% done, because it's been a professional performance by Bypass Brigade. They've assessed the conditions well. They've got a good group of young fast bowlers who are really at the top of their game. And some discussions there, no doubt, from the captain, who's leading that talk, saying they've got this game in their hands. They've got this game in their hands. But we've seen teams lose from stronger positions in international cricket. Very happy. Very happy.
Reminds me of a game in 2002. It was a Champions Trophy semi-finals, India versus South Africa. South Africa were chasing 261, and at one point they were 191 for 1, and they went on to lose that game. So anything can happen in this gentleman's game. That is why cricket is called a game of glorious uncertainties. But right now, all the cards with bypass brigades. I request the captains of Force Forensic and Wiki Vikings to kindly report to the com box for the toss. ಫೋರ್ಸ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಕಿ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Always a $1,000,000 question. What do you do after winning the toss? So many factors that decide that. One of the factors, of course, is the venue of where you play. For example, you have venues in Pakistan, Lahore and Karachi, where the team batting first has only won 4 of the first 44 test matches played there. That is an unbelievable record. And the one at Karachi is even worse. I think it is 44 out of 44 or 43. So it's got a similar record, right? So there are certain venues where you win the toss and bat first. Karachi and Lahore are not those venues, but there are venues that favor batting first, like Adelaide in Australia, the SCG in Australia, that are similar to the Indian pitches here. That is why you see Indian batters playing their best innings in SCG. Sachin Tendulkar, a prime example, got that famous 240 odd against Australia at the SCG. So winning the toss and choosing what to do is heavily dependent on the venue that we are playing at. And right here, the winning strategy, the winning mantra seems to be to field first. And it's working in their favor. So much of cricket fortunes are tied to colors sometimes. You can see that Raj Blasters are wearing the jerseys of SRH. Their fortunes are down like SRH at the moment in the IPL. With 23 to defend, they need divine intervention. They're probably calling some of their counterparts in the IPL to take some advice, because they would need that at the moment. Early wickets, you never know. You can see one of the spectators there enjoying this game of cricket. It's been slow going, hot and humid conditions here. Sole spectator in the pavilion. Of course, there are cricket lovers and cricket enthusiasts in and around the stadium as well. There's another resting in the shades of this glamorous cricket ground here. Lush green outfield. Very difficult to maintain an outfield such as this, especially in the blistering weather conditions here in Dakshin Kannada. But the groundsmen have really done a fabulous job. Kudos to the groundsman. The batsman trying to get some grip on his bat and also a grip on this chase. They don't need to do anything spectacular here. Just common sense cricket, just sensible cricket will get them over the line. But the fielding side would be hoping that something miraculous happens. They're wearing blue jerseys, but we've seen in international cricket a team wearing green jerseys often fail to achieve even the smallest of totals. Bangladesh, Pakistan.
And also South Africa, the final, the fateful final against India, where they needed a runner ball in the last 5 overs, went on to lose the game. So something with the green jerseys and choking under pressure. But back live here against the men in blue. Often tagged as slow starters in the IPL, even this time as well. They've lost 3 games out of the 4. They'd be hoping some of that creeps in. Because right now it looks like a straightforward chase, a walk in the park for the batting side. But like I said before, cricket is a game of uncertainty. Straight to the man at shot, third man, chance of a run out of the very first delivery. They need to attack the ball. They cannot afford to give those easy singles away. It went off the outside edge, went pretty slowly to the man at shot, third man. But a risky single, a sneaky single. And they're up and about, up and away. Scoreboard moving, single taken, 22 to get of 29. I request the captains of Vicky Vikings and right. So game 3, Vicky Vikings have won the toss, and no awards for guessing. They've chosen to ball. Everybody wants to ball first on this track. Tries to play the cut. Tries to play the cut. He's got a wide stance. Does the batter. Santosh was very good with the ball as well. You can see the wide stance. Something that Kevin Peterson of England used to do. Had a very wide stance. Really gives him that good base to play those unorthodox shots. This is short and wide. Slashes. Misses it completely. A couple of dots. And you never know. You never know. Couple of early wickets, some pressure added. The batsman might be tricked into making a false decision, a rash decision. But it's a good start. Good start by the bowler. Foolish delivery. This time another cut shot. This time a little too wide there. Too much room for the umpire to deem it a legal delivery. But he'll be happy with that. He'll be happy with that. He's quickly gauged that this batsman is more of a front foot player. Probably doesn't like the ball being a little hard length, being a little back of a length. This time plays it down, straight to the man at short, extra chance of a run out. He needed a direct hit. The fielding was exceptional, but the throw didn't match that. You need to stop those singles. If you're in the 30-yard circle, your only job is to stop those singles. You need to be a little more proactive there. Whipped off his legs. No was the call. There was a chance. It's a direct hit. Bullseye at the non-striker's end. And I think the finger has gone up. Yes, it was a disaster waiting to happen. Third mix-up in the over. And finally the fielding team strikes. And the batting team have gifted that wicket away. Have bypass brigades. Oh, there was never a run there. Went straight to the man at mid-on. And a nice and easy throw. He took all of his time to get that throw away, but enough to dismiss him. And the first wicket goes down. The score is on 4. After the end of the first over. 19 to get, is it, of the remaining 5? 19 to get of the remaining 5. I request the extra players of Raj Blasters to kindly vacate the area near the fence. It confuses the batsman. Slinging arm delivery there. Went straight to the man at shot, third man. And they're trying to sneak a single off here again. Haira Kiri here. That slinging arm, so very effective. Such an advantage if you have a slinging arm bowling action in limited overs cricket, because you get more revs on the ball. The ball will swing in the air, and it's easier to bowl Yorkers as well because you have a lower release point. Oh, short and wide, too quick for the batsman there. The umpire unmoved. Judges in the favor of the bowler.
back of Ellen this time. Adjust his length. This is a good start. The score is on 4. 23 to get. 19 to get here. Harish. He's hurrying the batsman. All right, he's Harish. This time he gets it. Plays a lovely square cut and the ball is racing towards the fence. Two fielders in pursuit, but not to be. That's an excellent shot that waits for the ball to come onto the bat, opens it at the right time. The timing, exquisite. The placement, perfection. And he gets that boundary right when the pressure was building on the batting side. He gets that boundary away. Oh, those square cuts. Those square cuts are a thing of beauty. Slinging arm that the ball's natural angle is to go away from the batsman, and the batter takes full toll by using the pace of the bowler against him on that occasion. Foolish delivery, uses the bottom hand straight to the bowler. A crowd catch there, no damage done. He's disappointed. You can see that Harish is disappointed with the boundary that went off the previous ball because he's too good of a bowler to ball a rank loosener that disappeared to the deep cover fence. But he's made a good comeback here of the previous ball. Right arm over to the right hander. This is shot. This is pumped away on the onside. The ball doing a bit of a curve on the outfield as the batsmen get away for another couple. That was hit hard. It was hit flat. But some unevenness there in the outfield. Got some bad bounce. Really can't blame the fielder there at deep mid wicket. But did well to get his body behind the ball and keep it down to a couple of runs. Full ball, hammered away, a blistering hit, and he gets that boundary, or is it? We'll have to wait for the umpire's decision. Yes, a marvelous hit that, a sensational strike, sinks to one knee and pass it over the man at deep mid wicket. Finds the fence this time, gets a couple, so important to get him off strike at the moment. It was the misfield of the previous ball that got Dhruva back on strike, and he's made the fielding team pay with the score on 14. They're halfway there. They're more than halfway there with 9 runs to get in the remaining 4 overs. 9 runs to get in 4 overs. Required run rate 2.25 at the moment. Only the man at deep short third man is not near the bowler. Everybody is having suggestions. Everybody is having opinions. But my friend, the game was lost in the first innings. You don't need a discussion. You need an annual general body meeting to solve this crisis. Because with 9 runs to get of 4 overs, you need some overseas players, it seems, to defend this paltry total. But back live here, the score is on 14 with 9 to get of the 4. Seems to be a round of discussion there going on with the captain and the fielders. Some disagreements maybe. Often when you start to lose, such things do tend to happen. But remember a game in 2007, I think it was Sri Lanka versus South Africa, where Malinga took 4 and brought his team back from the brink of defeat. They need something like that. They need more than that, to be honest. With 9 runs to get, all it will take are 2 biggies. Two lusty blows and the game is in the kitty. The batting team are bossing this game, especially Dhruva, who's looked set, who's looked good right throughout this innings. He's got a boundary of the previous over as well, which means Durga Prasad, sensational in his first spell, has been brought back. Nothing short than
of a hat-trick can save the fielding side at this point. Seems like a formality for bypass brigades who almost bypassed any risk in this game because they finished it in the first innings itself, one would have to say. Short and wide, he's pulled that. What a hook shot that is! Will only get a couple of runs, but what a magnificent shot. Gets inside the line. A shot that Australians play quite well. Even Jack Callis of South Africa, his favorite shot is the hook shot. Gets inside the line, and famously Sachin Tendulkar hit Caddick from England out of the ground in the 2003 World Cup. Some memories being brought back by the local players here of some immaculate innings played by the Indian national team. Back live here, the score is on 16 with 7 runs required. Plays it down, finds the gap, opens the face of the bat there, but the ball sticks in the right hand of the bowler, of the man at a short third man. I beg your pardon, gets that single away. Dhruva back on strike. Can he finish it with a big one here with 6 runs to get? It's a matter of how. It's a matter of when and not a matter of if at the moment. Goes for the reverse. The connection is immaculate. It's a terrific stroke from a sensational batsman. Sits on one knee, allows the ball to come to him, and he smashes it over the vacant deep point fielder. The bowler is in disarray at the moment. They've got no answers to this batting heroics from Dhruva. It's Dhruva versus Raj Blasters at the moment. He is finishing this off in style. He is finishing this off with a bang. It's gone over and he's plucked that out of thin air. A moment of magic, a moment of brilliance in the field. Oh, something for the fielding team to cheer about, something to write home about. He puts his hand out in the air like Superman and he plucks it out. Oh, that needed to be a stunner to send Dhruva back to the pavilion, and it was. It was. You see there in the replay there. Oh, he's got some Fevicol on his hand, I'm sure, because the ball just sticks in his hands, lands safely in his mitts. Oh, that was quick as well, and Fevi-Quick. Oh, excellent catch. A stupendous effort. A stupendous effort. Too little, too late, I'm afraid. But some entertainment for the spectators and the supporters of Raj Blasters. Tries to play the leg glance, gets the thigh pad. No single run taken. The score is on 21. Durga Prasad gets a consolation wicket. Driven handsomely down the ground, all along the carpet. Gets that single away. The score is tied. 1 run to get. End of the third. End of the third with 1 run to get. 1 run to get and 3 overs to go. The umpires would have hoped that the game finished in the previous over, because now it's going to take time to start the new over, set the new field. Very difficult shoes to be in. The umpires, very professional in their approach. The match officials. The sun is beating down on all the players there. It's seeping the energy out of players, but the energy still buzzing. The energy around the ground very good. The anticipation for all the matches is quite high. All the teams on paper at least look very evenly matched. 1 run to get. Everybody inside the circle. Even the men at the boundary are 5 or 6 yards inside the fence. Shashank has the opportunity to finish the game. And he does. Straight to the man. They refuse the single. It was short and wide. You can see some screaming out there, out of the outfield, that it was going to be a wide. Shashank wanted to play the glory shot, wanted to be the hero to finish the game, and this time plays the expansive shot in the air. Could be gone. He's gone. He's gone with 1 run to get. They've lost more wickets than scoring the other 22. Quite a weird game this. Quite a strange game this, game of cricket.
against the run of play. Another wicket goes down. Shashank wanted to finish things off in style, but ends up throwing his wicket away. Had an opportunity to spend some time out there in the middle, but again, the wind across the ground is towards the offside, which means those reverse hits, the switch hits are very much on this ground. But the batsman still trying to go down the ground, trying to take the baller downtown, not a good strategy. Gets it off the outside edge. Another dot. Another dot. What is happening here? It's a game of two halves. It's an innings of two halves. Suddenly out of nowhere, the fielding side are mounting pressure. The infielders are putting some much needed pressure on the batsman at the moment. This is shot. This is wide. Finally, the batsman connects over the man at point. Throws his hands at it, and the game has ended with that boundary over cover point. It was short, it was wide, not the best of deliveries, but the batsman rocks back on the back foot and opens the face of the bat over the man at point, gets that boundary, ends the game, but it was an inevitability. The game was won and lost in the first innings when bypass brigades restricted the opposition to a below par total. It was the bowlers who won them the game, and they'll be very happy with this performance because we've seen two games and two comprehensive victories, one from the Black Mambas, the other from bypass brigades. They've outplayed the opposition in all three departments. Lot of soul searching to do, lot of thinking to do, and Raj Blasters will be hoping that their players learn from this experience and really get better through the tournament. Very important that you get off to a good start in a tournament such as this. But Ajay Bhai, they don't need to worry. The Raj Blasters, they've only lost one of their games. Remember, the Indian team took 20 years to win their first test match. They won their first test match in 1952. India started playing test matches in 1932. So 20 years is a long wait. As I welcome my co-commentator, the experienced, the inimitable voice of Hindi commentary here in Dakshin Kannada district, Ajay Bhai. He's here with us. It was a comprehensive defeat. How does the captain, the coach, motivate his team to come back from a huge defeat for Raj Blasters? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप विवरण सुना रहे थे, तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। और इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला में क्षेमा प्रीमियर लीग 2025, और इस वक्त स्वरूप जिस तरह से, जिस पैशन के साथ, जिस समर्पित भावना से वो क्रिकेट को विवरण आपको सुना रहे हैं, उसमें उत्साह, उमंग और जिस तरह से कहते हैं जोश का वातावरण आपके अंदर वो भर देते हैं। शानदार क्रिकेट श्रृंखला चल रही है। राज ब्लास्टर्स की अगर बात करें, कमबैक उनको करने का अवसर है नहीं है, हालांकि अभी देखकर मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन उनका प्रयास बहुत अच्छा था। मैं समझता हूँ कि आपको अपने माइनस को देखकर इस मैच में कहां पर कमी रह गई उससे कुछ सीख लेते हुए आने वाले मैचेस में आपको उसको प्लस में बदलना होगा, तभी जाकर अच्छा बनाया जा सकता है। आइए, इस वक्त एक और शानदार मैच शुरू होने जा रहा है। विकी वाइकिंग्स और फोर्स फॉरेंसिक के बीच में टॉस जीतकर विकी वाइकिंग्स के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, दोनों टीमों के 12th मैन से अनुरोध है, कैप्टन से अनुरोध है, कृपया वो अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स की दिशा में भेजें। एक्स्ट्रा प्लेयर को बहुत जरूरी है।
थैंक यू। डीजे हमारे साथ मौजूद हैं, शानदार धुन वो बीच बीच में बजा रहे हैं, उनका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोरर स्टैटिस्टिशियन इस वक्त मेरे साथ हितेश मौजूद हैं, जो कि मैनुअल स्कोरिंग के लिए तैयार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाइकिंग्स और फोर्स फॉरेंसिक के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला विकी वाइकिंग्स का। शानदार मौसम है, ये मैदान अगर देखें तो ऐसा लगता है कि प्रकृति के बीच में कुछ इमारतें उग आई हैं। शानदार दृश्य है। केएस हेगड़े मेडिकल एकेडमी का ये बहुत खूबसूरत मैदान, कैंपस का ये मैदान है, हरियाली से भरा हुआ है और जिसमें कहना होगा कि जितने सारे खिलाड़ी इस वक्त इस मैच में योगदान दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर अच्छा करें, शुभकामनाएं देते हैं। इस मैच में आते हैं, दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। 12th मैन, कृपया दोनों टीमों के 12th मैन, दोनों टीमों के 12th मैन पहुंच चुके हैं। समय इस वक्त शानदार 3:40 हो चुके हैं और सूरज आकाश में चमकता हुआ अपनी रोशनी को मैदान पर फैला चुका है। शानदार पिच बना गया। 2 शानदार एम्पायर इस वक्त मैदान पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि 3 एम्पायर्स हैं, जिसमें से 2 मैदान पर हैं। मैं समझता हूं कि एक राजेश उडपी हैं, दूसरे एम्पायर धनुष इस वक्त ऑन फील्ड। ये दोनों जो कि इस वक्त बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर देव है, नॉन स्ट्राइक एंड पर फरहान और गेंद को लेकर आदित्य आक्रमण पर दूर वाले छोर से, इमारत छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। अंपायर राजेश जी ने संकेत किया कि खेल शुरू। इस छोर से आदित्य आक्रमण पर तैयार, उनकी गेंद स्ट्राइक गेंद पर देव तैयार है। फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, पहले इस गेंद पर आते हैं, लंबी दौड़ के साथ मध्यम तेज दौड़ लगाते हैं, पलटकर गेंद को खेल दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन गेंद हवा के रास्ते सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गई। शानदार 6 रन। तो ये शानदार छक्का, इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे थैंक यू डीजे। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से जा रहा है, इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्ट कर दिया है। शानदार 4 रन। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। इस छोर से गेंद को लेकर आदित्य थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। राउंड विकेट, ये गेंद हवा में गेंद को खेल दिया, जानबूझकर गेंद के स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत नहीं लगाया, कलाइयों का थोड़ा सा इस्तेमाल था, बहुत खूबसूरती के साथ बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को इनफील्ड के ऊपर से हल्के हाथ से लॉफ्ट कर दिया। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंच पाते, गेंद को समेट पाते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया। रन बढ़कर पहुंच चुका है 11 पर। तो जिस तरह से देव ने शुरुआत की है पटाखेदार विस्फोटक बल्लेबाजी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य बनने वाला है। फरहान स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, आदित्य को योजना बदलनी होगी। हालांकि पहली बार उनके सामने इस वक्त फरहान आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने विश्वास को रखते हुए शानदार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत धीमा दौड़ लगाते कूदने के अंदाज में उनकी ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी और शॉट ऑफ गुड लेंथ कहा जा सकता है। टप्पा खाने के बाद मिडलर लेग स्टंप के लाइन के ऊपर आ गए, उस उछाल को देखा, थोड़ा सा पीछे हट गए, बल्ले पर आने दिया, टॉप एज देखकर गेंद को बैकफुट में डिफेंसिव स्ट्रोक जिस अंदाज में खेलते हैं, गेंद को पुश भर कर दिया। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। एक छोर पर वो बैट्समैन जिसने शुरुआत में ही बहुत जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी की, देव ने 11 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस छोर से राउंड विकेट, ये गेंद इस बार घुमाना चाहते थे, बीट हो गए, गेंद उनके घुटनों से जाकर टकराई, रन लेने का अवसर नहीं है। और नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन देव आकर अपने साथीदार फरहान को इस वक्त समझा रहे हैं। उनके कान में 2 शब्द डालने के पश्चात वो दोबारा अपने बॉल स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में जा रहे हैं। आदित्य ने इस ओवर में अब तक 11 रन खर्च किए, लेकिन इन 2 गेंदों में उन्होंने बैट्समैन को मानसिक तौर पर परेशान किया। ओवर विकेट, ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, क्या कमाल की गेंद, और गिल्लियों को डाले गई। यू मिस मी, आई हिट यू। ഗുജറാത്തി കാതള കെട്ടിയ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ, പഞ്ചാബി ലഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടി പെണ്ണാണു നീ, മയിലാട്ടത്തിൽ കരകാട്ടത്തിൽ ഈ കൊലസിന് തഞ്ചം പോരടി പഞ്ചാര
थैंक यू। क्या बात है, शानदार धुन बजाई जा रही है और इस क्रिकेट श्रृंखला के स्तर को डीजे ने बहुत ऊंचा कर दिया। जबरदस्त धुन बज रही है और इस वक्त एक बहुमूल्य विकेट, जिस विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025, एक ऐसी गेंद जब गेंदबाज परेशान हो जाता है। आदित्य के चेहरे पर वो चिंता दिखाई पड़ रही थी, वो दबाव, वो प्रेशर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अपने आप को साबित करना था उनको और इस गेंद ने साबित किया कि आदित्य बहुत अच्छे गेंदबाज है। आदित्य, एक ऐसी गेंद जो डिप होकर स्टंप्स की दिशा में गई और बैट्समैन गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए, बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं। तो पहले आघात के पश्चात कहीं ना कहीं फोर्स फॉरेंसिक इस वक्त एक और बल्लेबाज के साथ निश्चित तौर पर अच्छे रनों को बटोरने का प्रयास कर पाएगा। पहला ओवर जो कि समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए इस छोर पर नवनीत आक्रमण पर आ रहे हैं। सिर्फ एक छोर से गेंदबाजी की जा रही है और बाएं हाथ के बैट्समैन देव इस वक्त तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अक्सर कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आमतौर के गेंदबाजों को वो, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस बीच इस छोर से गेंद को लेकर नवनीत किस योजना के साथ इस बाएं हाथ के बल्लेबाज देव को आक्रमण करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फील्डिंग में ऑन साइड पर अगर देखा जाए, दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग नजदीक है, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है। इस छोर से गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को और अंपायर ने कहा कि डिक्लेयर है, 2 रनों को डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑफ द बैट है, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थी, 2 रन डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया गया। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 13 पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस छोर से ये गेंद राउंड विकेट देव के लिए, देव ने ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है, क्या जबरदस्त एफर्टलेस स्ट्रोक रहता है उनका विश्वास स्ट्रोक से झलकता है। लेंथ में ज्यादा थी, बिल्कुल आसानी के साथ उन्होंने गेंद को स्ट्रोक में बदल दिया और दौड़कर 1 रन को उन्होंने पूरा कर लिया। 1 रन के साथ रन बढ़कर 14 पर पहुंच चुका है। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। देविन इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, अंपायर से गार्ड लेकर तैयार हो रहे हैं, अपने पैरों को फैलाकर खड़े रहते हैं, थोड़ा सा ओपन स्टांस है और क्या वो गेंदबाज पर इस वक्त हावी होने के प्रयास में सफल हो पाएंगे। नवनीत आक्रमण पर, ओद विकेट उनकी गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंद थी, वाइड गेंद थी। जी हाँ, अंपायर को इस गेंद को वाइड करार देना पड़ा, थोड़ा सा स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली, स्विंग थी लेकिन रफ्तार जिस तरह से गई, उस रफ्तार में गेंद घूमकर बल खाती हो बाहर की दिशा में गई और अंपायर को मजबूरन वाइड घोषित करना पड़ा। एक और गेंद फिर उसी अंदाज में लेग स्टंप के बाहर और 2 रन लगातार वाइड के रूप में बन चुके हैं। इन 2 रनों के साथ, यानी कि पहले वाइड और इस वाइड को मिलाकर 16 रन बन चुके हैं। अपनी लाइन को तलाश कर रहे हैं नवनीत। इस छोर से मुश्किल से 6-8 कदमों का फासला उनका, इस बार इनफील्ड के ऊपर से उछालने के प्रयास में मिड विकेट में कैच कर लिया गया है, शानदार कैच लपक लिया गया। एक और विकेट। तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात न लाका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात न लाका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात न लाका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात न लाका 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात न लाका लाका दिसा पांढरा शर्ट खाकी पॅन्ट टाकून मी कडक चेहऱ्यावर तेजपणे चकाचक आवाजात वजनी बोलणे ते नाचतात म्हणून तर ऐकणारे नाव घेतात हक्कानं। जे तुला डाग दिसतात अंगावर माखलेलो मातीच्या रंगात, जे पण काही दिलेले देवानं मिरवतोय हक्कानं। क्लब मध्ये क्रिटिक्स तर मराठी वाचणारच हमखास। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीजे ने धुन धुन के देश भर से अच्छे नंबर्स को लगाकर चुनकर रखा हुआ है। ये मराठी सॉन्ग था जिसमें शानदार धुन बजी। बहरहाल इस छोर से डिविन के आउट होने के पश्चात नए गेंदबाज, इस छोर से गेंद इस बार लेंथ में ज्यादा थी और जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा धीमा रिलीज किया और इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्लेबाज को थोड़ा सा रुकना पड़ा। मयूर ने गेंद को हल्के हाथ से नीचे दबाते हुए पुश बार कर दिया। 1 रन चुराकर अपने साथीदार को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। देव जब भी स्ट्राइक एंड पर आते हैं तो दर्शकों में थोड़ा सा उत्साह जग जाता है कि ये बैट्समैन कुछ आक्रामक स्ट्रोक तो जरूर खेलेगा। जबकि चुनौती से इस वक्त नवनीत गुजर रहे, उनकी गेंद जानबूझकर गेंद को फिर से धीमा कर दिया। स्लो आर्म डिलीवरी थी, थोड़ा सा इंतजार करते हुए बल्ले का निचला सिरा देकर देव ने खेल दिया गेंद को। 1 रन उनके खाते में जोड़ लिए गए। कुल रन संख्या अब बढ़कर
पहुंच चुका है 18 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, जबकि आक्रमण पर फिर से नवनीत जारी है। बोथ विकेट उनकी गेंद, इस बार ग्लांस करने का प्रयास और बल्ले से लगकर गेंद घोषित एरिया में, 2 रन खाते में, और इन 2 रनों के साथ ही ये ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर इज ऑन 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। शानदार मौसम है और आज सवेरे से अगर आप देखें प्रकृति का साथ तो जरूर है, लेकिन सूरज बादलों की ओर में से आंख मिचौली खेल सवेरे से खेल रहा है। आज सवेरे इतनी ज्यादा धूप नहीं थी, उसका मतलब यह है कि आकाश में, अंबर में जितने बादल जो गहरे समाये हुए थे वो सूरज को रोके हुए, उसकी रोशनी को रोके हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी अपनी रोशनी को बाहर निकालता हुआ सूरज इस छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज राउंड विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया, बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो इस जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट है क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। इस विजय गेंद इस बार थोड़ा सा पैतरा बदल लिया विजय ने, गेंद को उन्होंने अच्छी तरह से, थोड़ा मुझे लगता है कि मिडल और ऑफ स्टंप के लाइन पर निकालने का उनका प्रयास था, जिसमें थोड़ा उछल कर आई। उसको देखते हुए देव ने थोड़ी सी योजना बदलकर मेरिट पर खेलने का जो उनका प्रयास था, गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में धीरे से ढकेल दिया, 1 रन चुराकर अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी है। राउंड विकेट इस छोर से एक और गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के हथेली में गेंद कैद हो गई, लेकिन इस अपील को अंपायर ने एक तरह से अनदेखा कर दिया है। शायद बल्ले से नहीं लगी थी, उत्तेजनात्मक अपील थी और इस अपील को अंपायर ने साफ साफ नकार दिया, हालांकि देखा ही नहीं कहा जा सकता है। राउंड विकेट शॉट ऑफ लेंथ थी, पुल किया गेंद को, अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर गेंद को रोकने में लगे हुए, लेकिन जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाए, दोनों बल्लेबाजों ने तेज कदमों के साथ दौड़कर दूसरा रन पूरा कर लिया है और इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 29 पर पहुंच चुका है। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर मयूर तैयार है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त देव का साथ देते हुए। फिर से शॉट ऑफ लेंथ पुल करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर गए, गेंद उनके शरीर से आकर टकराई। इस हाफ ट्रैकर को ऑन साइड की दिशा में पुल करने के प्रयास में वो थोड़ा सा पेस से बीट हो गए, उस रफ्तार से बीट हो गए, जिसकी वजह से बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। विजय का आक्रमण जारी, राउंड विकेट उनकी एक और गेंद, फिर से शॉट ऑफ लेंथ थी, फिर उस गेंद को पुल कर दिया, इस बार सफल हो गए। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद के ऊपर फील्डर आ चुके हैं। 1 रन आसानी के साथ लेने का अवसर बैट्समैन को, बल्लेबाज को मिलेगा। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर और 3 ओवर के समाप्ति पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर इज ऑन 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और आप देख रहे हैं क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंपायर ने इस वक्त संकेत किया है कि वो बल्लेबाजी का पावर प्ले लिया जा रहा है। निर्धारित 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर्स का खेल अभी बचा हुआ है। विजय हालांकि इस वक्त, माफ कीजिएगा, मयूर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर सिंगल उन्होंने बटोरा था। हालांकि सारे दर्शक यही चाहते हैं कि कुछ विस्फोटक स्ट्रोक खेले जाएं, उसके अलावा देव को ज्यादा स्ट्राइक अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो गेंदबाजों की कमर तोड़ देते हैं। बहरहाल इस वक्त नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज महर्षि आ चुके हैं। महर्षि इस वक्त, महर्षि शेट्टी आक्रमण पर आ रहे हैं, दूर वाले छोर से, इमारत छोर से उनकी गेंद और ओवर द विकेट ये गेंद फुल टॉस थी और बीट कर गई बैट्समैन को। बल्ले का किनारा लेकर गेंद शायद स्टंप से टकरा गई है, देखना होगा। लेकिन अंपायर ने इस वक्त
नो बॉल का संकेत किया है। थोड़ा सा डीजे आतुर हैं, जल्दबाजी में हैं, थोड़ा सा धीरज धरें। चौका छक्का विकेट लगने पर वो शानदार धुन को बजाएं, उनका योगदान बहुत जरूरी है। इस बीच इस गेंद को खेलने के प्रयास में मुझे लगता है कि बल्ले को चूम कर गेंद गिल्लियों को उड़ा ले गई थी, लेकिन अंपायर ने इस दौरान हाथ को बाहर निकालकर संकेत किया कि नो बॉल है, तो बैट्समैन को फ्री हिट का अवसर मिलेगा। ये आधुनिक नियम के अनुसार है। तो गिल्लियों को दुरुस्त करने के पश्चात बैट्समैन तैयार हो गए। अंपायर को देखना होगा क्योंकि आजकल की गिल्लियां भी बड़ी चिपकी रहती हैं। इस छोर से इस ओवर की गेंद ऑफ द विकेट और फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, मिस कर गए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकल गई। विकेट कीपर ने अपना काम कर लिया और इस फ्री हिट के अवसर को बल्लेबाज ने गंवा दिया। देव आकर अब समझा रहे हैं अपने साथीदार मयूर को कि आखिर क्या करना चाहिए। बल्ले से बल्ला टकरा गया और फिर से देव अपने नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में बढ़ते हुए, जबकि आक्रमण पर इस वक्त महर्षि तैयार हो रहे हैं। महर्षि कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर कर रहे हैं। निर्धारित 6 ओवर्स का मैच है। वो द विकेट ये गेंद इस बार फुल टॉस से इनफील्ड के ऊपर से गेंद को कवर की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव कर दिया। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है और ये गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है। शानदार 4 रन मिलेंगे, शानदार कवर ड्राइव। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो शानदार कवर ड्राइव, लॉफ्टेड कवर ड्राइव था। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर को आज बहुत व्यायाम करना पड़ रहा है। तीनों अंपायर्स को मैं समझ सकता हूं। और वाइड घोषित किया अंपायर ने। लैटरल रेज इसे व्यायाम की भाषा में कहते हैं, जो कंधों के एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज के पश्चात फॉलो अप में किया जाता है। बहरहाल इस छोर से एक और गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। विकेट ये गेंद इस बार इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया। बहुत करारा स्ट्रोक है। गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। इस ओवर की एक और गेंद ऑफ द विकेट, फिर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जा रही है। फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे और ये शानदार 4 रन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जबरदस्त छक्का, एक और एक चौका, उसके पश्चात एक और गेंद फिर से लॉफ्ट कर दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। फिर गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 6 रन। थैंक यू दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। 52 यानी कि 50 का आंकड़ा पार हो चुका है। 50, अब क्या बात है। शानदार बल्लेबाजी चल रही है। मयूर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगा नहीं कि देव के मुकाबले में वो इतना आक्रामक स्ट्रोक लगाएंगे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के और। इस छोर से इस ओवर की गेंद फिर से उछलने का प्रयास मयूर का, लेकिन इस बार वो बीट हो गए और 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और फोर्स फॉरेंसिक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि उनके अपने नाम में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। फोर्स फॉरेंसिक नाम रखा गया है, जिसमें एक छक्के को जोड़ना होगा। फोर्स सिक्सेस फॉरेंसिक रखना होगा, क्योंकि पिछले ओवर में आपने देखा होगा चौके और छक्कों की बरसात हुई है। तो ये नाम सूट करता है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी चल रही है। वो छोर पर विकी वाइकिंग्स के गेंदबाज पर इस वक्त दबाव ज्यादा। 5वें ओवर की शुरुआत, राउंड विकेट ये गेंद, अच्छी गेंद हो सकती है जी, निश्चित तौर पर अच्छी गेंद थी। बैट्समैन को चुनौती देती हुई ये गेंद स्विंग होकर बाहर की तरफ निकल गई और इस गेंद को खेलने के प्रयास में मयूर अंतिम क्षणों में रुक गए और अपने आप को रोक लिया, हालांकि कुछ नहीं कर पाए। फिर से विकेटकीपर ने गेंद को संभाल लिया। देव आकर अपने बल्लेबाज साथीदार मयूर को समझा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि गेंद को लेकर इस छोर पर वैभव जो कि आक्रमण पर तैयार है। 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के पश्चात एक और ओवर शेष बचा रहेगा। राउंड विकेट ये गेंद और गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ बॉल कर दिया। फील्डर वहां पर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार धुन डीजे बजा रहे हैं। प्रियांशु इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। इस छोर से राउंड विकेट, ये गेंद वैभव की ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक था, थोड़ा सा ऑन द राइज खेला गया स्ट्रोक था। अब ऑफ साइड पर कहा जा सकता है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद गई। कमेंटेटर्स बॉक्स जो है इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में कवर के पीछे रखा गया है, जिसकी वजह से गेंद की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से साफ साफ बताना मुश्किल है। बहरहाल हम प्रयास यही करेंगे कि पूरी तरह से आपको जितना ज्यादा अच्छा बता सके। वैभव आक्रमण पर तैयार है। डीजे अच्छी धुन बजा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सही समय पर बजना बहुत जरूरी है। राउंड विकेट इस छोर से गेंद इस बार घुमाकर खेलना चाहते थे, गेंद उनके शरीर से टकराई, रन लेने का अवसर नहीं है। पांचवा ओवर वैभव इस वक्त बहुत योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। ज्यादा विड्थ वो बल्लेबाज को नहीं दे रहे हैं इसी प्रयास में, हालांकि उनको एक विकेट मिला है। और इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट खेलने के प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर शायद गई थी, विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया। देव खुद अपने कदमों को बाउंड्री लाइन की दिशा में, डगआउट की दिशा में ले आ रहे हैं। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट गिर चुका है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 54 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नए बैट्समैन का बल्लेबाज का आगमन। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर रंजीत आ चुके हैं। गेंदबाजी में वैभव बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस ओवर में खास तौर पर जो उन्होंने गेंदबाजी की है वो बहुत कमाल की रही है। राउंड विकेट उनकी है गेंद, इस बार रंजीत को फुल टॉस गेंद उन्होंने दिया और गेंद स्क्वायर लेग के बाहर गई। बहुत जबरदस्त सिक्सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं थैंक यू न कहूं तो डीजे धुन बजाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि सही समय बहुत ज़रूरी है। चने खाने को तब मिलने चाहिए जब मुंह में दांत हो। अगर मुंह में दांत नहीं और चने मिल जाए तो आप चबा नहीं सकते हैं। बहरहाल इस छोर से माफ कीजिएगा, जोक सपाट, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। आप बहुत शानदार धुन बजा रहे हैं। इस छोर पर गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। आखिरी ओवर को लेकर इस छोर पर आक्रमण के लिए विकी वाइकिंग्स की तरफ से मुरली शंकर भट्ट आ रहे हैं आक्रमण के लिए। उनकी गेंद ऑन विकेट, इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, पुल किया गेंद को, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ एक रन दौड़ कर पूरा करने का अवसर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। रन्स बढ़कर 61 पर पहुंच चुका है। 61 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 61 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त मयूर आ चुके हैं। मयूर ने रंजीत, माफ कीजिएगा, रंजीत आ चुके हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन है। रंजीत स्ट्राइक एंड पर, माफ कीजिएगा। तो रंजीत के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। अंपायर ने फिर दोनों हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है। तो अतिरिक्त के खाते में एक और रन की बढ़ोतरी। कुल मिलाकर 62 रन बन चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 62 फॉर 4। आखिरी ओवर इस वक्त पादान पर है। शॉट ऑफ लेंथ थी, मौका हो सकता था, लेकिन रंजीत इस मौके को गवा चुके हैं। थोड़ा सा जल्दी उन्होंने किया, मुझे लगता है कि पहले कमिट हो चुके थे, जिसकी वजह से गेंद के रफ्तार को नहीं पहचान पाए और बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और फिर से इस ओवर की अगली गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हुए। उल्टा और फुल टॉस गेंद, बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद को उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली शंकर इस वक्त उनकी ये गेंद और इस बार बीट कर गई बैट्समैन को। खेलने के प्रयास में बीट हो गए, शरीर से गेंद टकरा गई और रंजीत दोबारा स्ट्राइक एंड पर है। रंजीत आक्रमण कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये निर्णायक ओवर चल रहा है। 2 छक्का वो अब तक लगा चुके हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। ओद विकेट, फिर से उछालने का प्रयास, लेकिन इस वक्त
बीट कर गए बैट्समैन को। मुरली बड़ी योजना के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद को वो धीमा कर रहे हैं, लेंथ में ज्यादा कर रहे हैं ताकि बैट्समैन को लगे कि ये हाफ वॉली है, और इस प्रयास में बैट्समैन बीट हो रहे हैं। ऐसे वक्त में आखिरी निर्णायक ओवर इसी बुद्धिमानी के साथ करनी होगी, और मुरली फिर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में मुझे लगता है कि अभी आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है। रंजीत स्ट्राइक एंड पर हैं। गिल्लियों को दुरुस्त करने के पश्चात स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर फिर अपनी दिशा में लौट गए और रंजीत बल्ले को थाम कर तैयार हुए। मुरली की ये गेंद ओवर द विकेट, रंजीत को उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को हथेलियों में कैद किया। शानदार कैच के साथ ही 5वां झटका। Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद डीजे को। और अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कृपया वो टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। और जेके ईगल्स और राज ब्लास्टर्स और जेके ईगल्स दोनों टीमों के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आए टॉस के लिए। और इस वक्त बहुत कड़ा मुकाबला चलता हुआ फोर्स फॉरेंसिक जिन्होंने चौक और छक्कों की बरसात की, और इस मैच में एक बहुत बड़ा लक्ष्य उन्होंने बनाया। 68 रन उन्होंने 68 रन उन्होंने बनाए हैं। 69 का टारगेट, 69 रनों का टारगेट उन्होंने विपक्षी टीम के सामने रखा हुआ है, विकी वाइकिंग्स के सामने, जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तब क्या होगा इस मुकाबले में, बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस मुकाबले के लिए थोड़ा सा और जोर, उत्साह, जोश को भरने के लिए, जी हाँ, इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक लिया जा रहा है। दोनों अंपायर्स वे थोड़ा सा ऑन फील्ड बातचीत कर रहे हैं, और फील्डर्स अपने आप पे थोड़ा सा तर्क मशवरा करते हुए छोटा सा मुझे लगता है कि मिनटों का ब्रेक है। वापस आते हैं, तब तक डीजे को शानदार धुन बजाने का अवसर देते हैं।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैच शुरू हो चुका है, एक और शानदार मैच। ये इस मैच का टेम्पो बढ़ाते हैं। इस छोर से गेंद, पहली गेंद को ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेल दिया। क्या खूबसूरत सो के फील्डर गेंद को रोकने में लगे हुए, उन्होंने गेंद को अंदर की तरफ ढकेल दिया, लेकिन जब तक वो गेंद को अंदर की तरफ ढकेल पाते और दूसरा फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दोनों बल्लेबाजों के पास कुछ रनों को बटोरने का समय और इसी के साथ रनों का बनना शुरू हो चुका है। तो जेके ईगल्स और राज ब्लास्टर्स के बीच में यह मुकाबला चल रहा है। जेके ईगल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद, इस बार पलटकर खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई। पिछले पैर को घुटने को झुकाकर, जो आमतौर पर नेचुरल स्टाइल में उनका बैकफुट होता है, उसको उन्होंने झुकाया भर ऑन साइड की दिशा में पलटकर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर स्विच हिट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो आकर उनके घुटनों से टकरा गई और वो मिस कर गए। रन्स अभी भी वहीं पर स्थिर है। देव आक्रमण पर है। देव की एक ये गेंद हवा में खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, दौड़कर उन्होंने गेंद का पीछा किया और फिर डाइव लगाकर अपने शरीर के संतुलन को बनाने का उन्होंने अच्छा प्रयास किया। इस बीच गेंद नीचे गिर चुकी थी और बैट्समैन को कुछ रनों को लेने का अवसर मिला। रन्स बढ़कर 3 पर पहुंच चुका है। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज नवनीत आ चुके हैं। इस छोर से ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया, रन लेने का अवसर नहीं। उनहत्तर रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे विकी वाइकिंग्स, माफ कीजिएगा। इस बीच ये गेंद हवा में उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को अपने झोली में कर लिया। शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट गिरा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ओवर की एक और गेंद, फुल टॉस थी, गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में उछाल दिया, फील्डर फिर गेंद के नीचे और गेंद को कैच कर लिया उन्होंने। एक और विकेट लगातार, दूसरा विकेट गिरा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पावर प्ले का संकेत अंपायर कर रहे हैं। फोर्स फॉरेंसिक टीम के कैप्टन से अनुरोध है, कृपया अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजें। फॉरेंसिक टीम के कैप्टन अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में जल्दी भेजिएगा प्लीज। मुझे लगता है कि आप सुन रहे हैं इस वक्त। फॉरेंसिक टीम के कोई सदस्य कृपया कमेंट्री बॉक्स में एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया जल्दी आए। स्कोरर के लिए सहूलत होना चाहिए, इस वक्त बहुत जरूरी है। तो इस वक्त विकी वाइकिंग्स रनों का पीछा कर रहा है, 69 रनों का। ऐसे में 2 शानदार विकेट उनके गिर चुके हैं। और विकेट छोर से गेंद और पलटकर गेंद को खेलने का प्रयास था, बल्लेबाज बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन्स अभी भी वहीं पर सिर है, 3 पर 2 विकेटों के नुकसान पर, 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
डॉक्टर मुरली इस वक्त स्ट्राइकर पर है। गेंदबाजी में आखिरी ओवर उन्होंने बहुत कमाल का किया था, क्या वो इस वक्त बल्लेबाजी में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? ये गेंद उछलने का प्रयास मिस कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को उठाकर तुरंत थ्रो करने का प्रयास किया उन्होंने स्टंप्स के ऊपर, लेकिन निशाना नहीं लगा और फिर रन्स अभी भी वहीं पर से रहे। गेंदें डॉट में तब्दील हो रही हैं, बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ता हुआ। विकी वाइकिंग्स इस वक्त बहुत बड़े रन का पीछा कर रहा है। रंजीत की गेंद और ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास, हाँ ना करते करते इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में मुरली जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि कुछ मजाकिया किस्सा आपको ऑन फील्ड देखने को मिला। पहले रन चुराने का प्रयास में नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन विजय आगे आ चुके थे, अंपायर ने वाइड घोषित किया और फिर मुरली ने उनको मना कर दिया। फिर अचानक गेंद ओवर थ्रो के रूप में, फिर दोनों हाँ ना करते करते आखिरकार मुरली नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच गए। एक रन जो कि पूरा हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेल दिया, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। रन बढ़कर इसे के साथ पहुंच चुका है इस वक्त 6 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रंजीत आक्रमण पर रहे। रंजीत ने बल्लेबाजी में जो बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी की, जबरदस्त छक्के उन्होंने जड़े और इस वक्त आक्रमण पर बहुत अच्छी गेंदबाजी के प्रयास में, और मुरली ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ, टाइमिंग के साथ, प्लेसमेंट के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया। शानदार राउंड ड्राइव है 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। तो मुरली शंकर भट्ट इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। डॉक्टर बहुत खूबसूरती के साथ इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या शानदार स्ट्रोक उन्होंने लगाया है। लेंथ में उतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन गेंद को जज करना, उसकी लाइन को परखना बहुत जरूरी था और उस गेंद को खूबसूरती के साथ उन्होंने ऑन ड्राइव में तब्दील किया 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद, फिर से प्लेसमेंट के साथ गेंद को उन्होंने पुल कर दिया है। एक और शानदार चौका लगेगा मिड विकेट क्षेत्र में। थैंक यू। तो 14 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं। 2 लगातार चौका लोग इस वक्त मुरली शंकर भट्ट जी ने लगाया। खूबसूरत स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद का उन्होंने भरपूर फायदा उठा लिया। राउंड विकेट रंजीत की एक और गेंद, इस बार अच्छा कमबैक था। क्या खूबसूरत गेंद थी, टप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बाहर की तरफ निकल गई, गुडलैंड स्पॉट से गिरकर उसको ऑन दी अप ऑन द राइज गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर और 2 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 14, 2 विकेटों के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लक्ष्य है 69 रनों का, 69 का टारगेट इस वक्त है और ऐसे में बचे हुए हैं केवल 24 गेंदें, यानी कि 4 ओवर्स शेष बचे हुए हैं। 4 ओवर्स में बचे हुए रनों को बनाना होगा। मुझे लगता है कि बहुत परिश्रम का काम होगा। हर ओवर में चौके और छक्कों को लगाना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? विजय स्ट्राइक पर है। 1 रन बनाकर वो बल्लेबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। हुसैन सोफी जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर, उनकी गेंद, हुसैन की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को और विजय गेंद को खेलने के प्रयास में गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच पाए। खड़े खड़े उन्होंने गेंद को स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। और विकेट, फिर से गेंद, फिर से बीट कर गई बैट्समैन को और क्या बात है, बहुत करारा खेल इस वक्त चलता हुआ। हुसैन की ये गेंद जो कि बैट्समैन को बीट करती हुई लगातार 2 बार उन्होंने मानसिक तौर पर जीत हासिल कर ली है। एक और गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलती हुई, थोड़ा आगे खेले पीछे खेले, इस दुविधा में फंस गए। गेंद को थोड़ा सा पीछे हटते हुए कट करने का प्रयास किया लेकिन चूक गए और फिर गेंद डॉट में तब्दील हुई। हुसैन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉट ऑफ लेंथ थी, हवा में गेंद को उछाल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। मिड विकेट क्षेत्र में शानदार कैच के साथ ही एक और झटका।
थैंक यू। तो आदित्य खरब इस वक्त स्ट्राइक एंड की दिशा में बढ़ रहे हैं और तीन शानदार विकेट जो कि प्राप्त कर लिए। इस तीसरे विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 और गेंदबाजी हुसैन की बहुत जबरदस्त चलती हुई। पिछली गेंद पर उन लोगों को विकेट मिला जो हाफ ट्रैकर थी, कैच कर लिया गया मिड विकेट क्षेत्र में। यह गेंद इस बार अच्छा स्ट्रोक था आदित्य का। गेंद को देखा उन्होंने, गेंद स्टंप्स के सीध पर लगभग मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर थी, उसको थोड़ा सा पीछे हटे हुए ग्लांस के अंदाज में खेल दिया। एक रन चुराकर अपने पार्टनर को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है और इस एक रन के साथ रन अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। हुसैन लाइन और लेंथ और चतुराई उनकी गेंदबाजी में जो है वो देखने लायक है। बहुत योजना बनाकर वो गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त उनके सामने मुरली शंकर भट्ट है। मुरली शंकर के लिए गेंद ड्राइव कर दिया, लेंथ में ज्यादा थी, बहुत जल्दी गेंद को साइड करते हैं मुरली। उन्होंने गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन साइड की दिशा में। अच्छा ऑन ड्राइव था, लगभग मिड ऑन डीप में फील्डर गेंद को समेट चुके हैं और इसके साथ ओवर जो कि समाप्त हुआ। संख्या ओवर की बढ़कर 3 पर और 3 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 16 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। 53 more runs to get in remaining 18 balls। 18 गेंदों में 53 रनों की दरकार और बहुत संघर्ष इस वक्त करना पड़ेगा विकी वाइकिंग्स को। ऐसे में फोर्स फॉरेंसिक के टीम की अगर बात करें तो वो बहुत विश्वसनीय गेंदबाजी उनकी चल रही है। वो जानते हैं कि स्कोर उन्होंने बहुत बड़ा बनाया है, रनों का शिखर उन्होंने बनाया है। तो बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाज दबाव में है, उनको सिर्फ सटीक लाइन और लेंथ को रखना है। इस छोर से ओवर विकेट, ये नया ताजा ओवर ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया। एक रन आसानी के साथ लेने का अवसर है मुरली के पास। उन्होंने दौड़कर अपने आप को इत्मीनान के साथ पहुंचा दिया नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में। रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 17 for 3। जबकि आक्रमण पर इस छोर से गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को अच्छा ऑन ड्राइव था, फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रन बढ़कर 18 पर पहुंच चुका है। डॉक्टर गांडेव इस वक्त गेंद को लेकर आक्रमण पर हैं। अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर वो कर रहे हैं। ओवर विकेट गांडेव की गेंद, इस बार अच्छी गेंद और इस गेंद को बहुत जल्दी पहचान लिया कि ये ब्लॉक होल में आने वाली थी और मुरली शंकर भट्ट जी ने इत्मीनान के साथ थोड़ा सा जड़ से निकालकर जिस गेंद को डिफेंस करते हैं उस अंदाज में गेंद को दबाकर उन्होंने पुश भर कर दिया अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। ओवर विकेट, ये गेंद पलटकर खेलने का प्रयास लेकिन मिस कर गए। गेंद थोड़ा सा देर से आ गई, मुझे लगता है कि बल्ला थोड़ा जल्दी चल गया, स्विच हिट करना चाहते थे और इस प्रयास में गेंद डॉट में तब्दील हुई। जैसे जैसे गेंद डॉट में तब्दील होगी दबाव बल्लेबाजों पर बढ़ता जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से भरपूर प्रयास मुरली शंकर भट्ट कर रहे हैं। विकेट उनके लिए गेंद फिर से उसी अंदाज में पैरों तले की गई थी, रन आउट का मौका शायद बन जाए, जी नहीं। और आदित्य जल्दी उन्होंने अपने गलती को सुधारा, जल्दी पलटकर घूमकर अपने क्रीज की दिशा में वो पहुंच गए, वरना खतरा हो सकता था नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में। रन अभी भी वहीं पर से रहे। तो मुरली शंकर भट्ट स्ट्राइक एंड पर। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद को लेकर गांडेव तैयार हो रहे हैं, योजना बना रहे हैं और गेंदों को ज्यादातर वो ब्लॉक होल और यॉर्कर लेंथ करने का उनका प्रयास रह रहा है। गेंद को थोड़ा सा फुल टॉस दिखाकर डिप करने का उनका जो प्रयास रहता है उसमें वो काफी सफल हो रहे हैं। स्टंप्स को दुरुस्त करते हुए इस वक्त अंपायर गिल्लियां दुरुस्त कर ली गई है। कभी कभार बहुत ढीली पड़ जाती है, हवा से भी गिर सकती है, तो इसलिए अंपायर को थोड़ा सा आश्वस्त होना पड़ता है। ऐसे में इस छोर से गांडेव की ये गेंद स्ट्राइक एंड पर मुरली शंकर भट्ट जिन्होंने अच्छा प्रयास किया, शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, पलट कर गेंद को खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन वहां पर इस स्ट्रोक को रोकने के लिए पॉइंट में डीप में खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है। अगर वहां पर फील्डर नहीं होता तो निश्चित तौर पर यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ देती। बहरहाल एक रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। तो संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 5 पर। 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 19। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आई रिपीट 19 for 3। 19 रन्स, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स स्कोर इज ऑन 19 for 3, यानी कि अभी 2 ओवर्स बचे हुए हैं। 12 बॉल्स टू गो। 50 रनों के दरकार।
12 balls to go. इस छोर से गेंद और मुरली शंकर भट्ट जी ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ मिड विकेट और मैदान के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। जबरदस्त सिक्सर। थैंक यू। तो मुरली शंकर भट्ट जो कि अपने विश्वास को दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि वो अभी भी दमखम बाकी है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक उन्होंने लगाया। इस छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। इस छोर पर महेश आक्रमण पर तैयार। राउंड विकेट उनकी एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को देखा मुरली शंकर ने, नजरों से गेंद का पीछा किया, अंपायर की तरफ सर को घुमाया। अंपायर ने देखा और कहा कि ये वाइड है, दिशाहीन गेंद थी। 1 रन खाते में और जोड़ लिए गए, जबकि गेंद को लेकर महेश दोबारा तैयार हो रहे। राउंड विकेट गेंद हवा में खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ गए। सिर्फ एक हाथ से, अपने दाहिने हाथ से उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ बहुत बड़ा विकेट गिरा। मुरली शंकर भट्ट आउट। थैंक यू। तो करुणाकर इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, महेश आक्रमण पर। इस ओवर की गेंद ऑन साइड पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को ड्राइव कर दिया। लॉफ्टेड ड्राइव था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर। उस शानदार कैच के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। पॉइंट की दिशा में जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने गेंद को हवा में उछलकर अपने दाहिने हाथ से कैच कर लिया। इस छोर से गेंद फिर से गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल दिया। 1 रन लेने का अवसर। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 रन से खुश होना पड़ेगा। तो वो शानदार कैच इतना आसान नहीं था, लेकिन मुझे याद है पिछले मैच में स्वरूप आपको बता रहे थे कि फेविकॉल हाथ में चिपका हुआ हो। फेविकॉल को चिपकने में थोड़ा सा समय लगता है। आज के दौर में मुझे लगता है कि फेविक्विक जो बहुत जल्दी चिपक जाता है। ऐसे में ये गेंद जिसको खेलने के प्रयास में विकेट कीपर के पास मात्र गेंद गई, बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए। इस गेंद के साथ ही गेंदबाज का विश्वास बढ़ेगा। बहुत कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। महेश पहली गेंद पर छक्का लगा था लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, फिर रनों पर अंकुश लगाते हुए गए। राउंड विकेट उनकी गेंद, लेकिन इस बार क्या इस गेंद को रोका जा सकता है? लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सो दूरदर्शक दीर्घाव में गिरी 6 रनों के लिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। वो स्ट्रोक बहुत कमाल का था और इस बीच आखिरी ओवर को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, दूसरा रन भी उन्होंने पूरा कर लिया। तो उस गेंद को जिस तरह से करुणाकर ने ऑन साइड पर, माफ कीजिएगा, खूबसूरती के साथ उछाल दिया था 6 रनों के लिए। कौसों दूर हवा में गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गई दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। उसके पश्चात 2 रन खाते में और इस वक्त आक्रमण पर देव आ रहे हैं। आखिरी ओवर प्रगति पर चल रहा है। और विकेट ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी और चारों खाने चित हो गए। यू मिस मी, आई हिट यू।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकी वाइकिंग्स को इस वक्त 4 गेंदों में 36 रनों की दरकार है। हर गेंद पर भी छक्का लगा देते हो तो बात नहीं बनेगी। इस बार गेंद को हवा में खेल दिया और वही फील्डर जिन्होंने शानदार तरीके से दाहिने हाथ से कैच कर लिया था। आश्चर्य की बात है, एक हाथ से वो कैच कर सकते हैं, 2 हाथ से नहीं कर पाए। गेंद उनके हाथों से झांक कर बाहर निकल गई हथेलियों से और आखिरकार फेविक्विक की बात हमने बिल्कुल सही कही थी। उनके हाथ में फेविक्विक था जब वो दाहिने हाथ से गेंद को कैच कर रहे थे। इस बीच एक और गेंद जो डॉट में तब्दील हुई, अच्छा मौका हो सकता था कैच का। बहरहाल दौड़कर शरीर का संतुलन भी बनाना और गेंद पर निगाहों को टिकाए रखना आसान नहीं था। और इस वक्त आखिरी 2 गेंदें मुझे लगता है बची हुई हैं और रनों की दरकार ज्यादा है। इस छोर से गेंद ओवर द विकेट, बल्लेबाज तैयार, उछालने का प्रयास, हवा में गेंद गई, फील्डर गेंद के नीचे, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और एक शानदार कैच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकी वाइकिंग्स इस वक्त हार के कगार पर खड़ा है और मुझे लगता है कि इस वक्त आखिरी गेंद पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार हो रहे हैं, जेके ईगल्स और राज ब्लास्टर्स। आखिरी गेंद को, फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए गेंद ड्राइव कर दिया। गेंद को अच्छा ऑफ ड्राइव था, गेंद गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। 1 रन को पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ जी हाँ, फोर्स फॉरेंसिक ने शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। क्या कमाल का प्रदर्शन उनका बल्लेबाजी और गेंदबाजी में रहा है। बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया और विकी वाइकिंग्स को इस मैच में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, हार का सामना उनको करना पड़ा। उनको अगले मैच के लिए, श्रृंखला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। गलती से सीखने का अवसर आपके पास है। ऐसे में नया ताज़ा मैच शुरू होने जा रहा है जेके ईगल्स और राज ब्लास्टर्स के बीच में। सारे फील्डर्स मुझे लगता है कि अब जल्दी मैदान पर उतरेंगे और इससे पहले कि वो मैदान पर उतरें और शानदार एक और मैच आपके सामने प्रस्तुत हो, माइक्रोफोन पर मैं अपने शब्दों को विराम देकर आगे थोड़ा सा और तेज रोमांच को पैदा करने के लिए अंग्रेजी में साई स्वरूप को बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Se viene el pasito y la martita, pero dos, dice Tadeo, dice Raulito, con fuerza muchachos. A-N-G Saura.
Thank you, Ajay Bhai. As the sun begins to slowly dip around the horizon, it's casting long shadows across this beautiful cricket stadium, which will pose a challenge to the infielders because it really messes with your depth perception. If you are at catching positions, these long shadows, the early zing, the early venom in the pitch has now dried out, and this pitch looks good and ready for the set batter to make merry. This crucial contest is between Raj Blasters and JK Eagles, both yet to taste that sweet nectar of victory. They're winless so far. First game, Raj Blasters got blasted in the first innings itself, and the Eagles were prevented from taking off. But game number 2 for both these teams, yet to get that first victory. Plays the paddle in an awkward position there, but gets it away for a couple of runs. And we are up and away. Raj Blasters and JK Eagles in the previous game lost the game by batting first. So the captain is very wary of that decision. JK Eagles having won the toss, obviously deciding to field first. Once bitten, twice shy, they say. Doesn't want to taste defeat after making a similar decision now. Gets another couple of runs here. Difference in length. But the result all too similar. 4 runs already scored of the first 2 balls without a boundary being hit. That is one of the advantages for a batsman here with the dimensions that we have, is that they can get those couple of runs without taking a whole lot of risk. Full delivery, crunched on the outside. I think he's found the fence here. Or has he? Yes, indeed. Yes, sir. Over the deep mid-wicket fence for a fantastic boundary. Not on the legs. Not on the legs. You cannot ball there to an Indian batsman. He will whip you all day long in that region. For a tall bowler, he really needs to use that advantage of hitting those hard lengths. Short and wide this time. Frees his arm over the man at short extra cover and finds another boundary here. Fantastic batting this. Back-to-back boundary for this man who is playing around the field at this point. Pressure on the bowler. The onside, then on the off, he's showing that he's got shots all around the cricketing field. This time down the ground, I think there is a man there, but the fielder decides to take it on the bounce and gets through to the non-striker's end. Gets a single, the score is on 13. The score is on 13 in the first over. Like I said, this is the golden hour for the batsman to get those big boundaries. Because as the light comes on, it is the bowlers that will take charge. But before that, this couple of hours, before the sun sets, you have to get that run rate roaring. Right arm over the wicket, first time to Pratham. Oh, back leg, full on the back leg, no chance there. Tries to just whip it out on the onside, but no harm, no foul. End of the first, the score is on 13. Manjunath looking quite confident. What is it about Indians and producing swashbuckling short right-handed openers? Started from Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, and that legacy is still continuing here at KPL KS Hegde Stadium. Hisham, very expensive in the previous game, but the captain still showing faith in him. He's got the potential, but he's got to somehow churn out a performance from that potential. Not the easiest of tasks, given that there is a quick turnaround between the games. So, very difficult for you to find form if you've lost it through the tournament. It'll be interesting to see what the strategy is. Some advice there by the man at mid-on, I beg your pardon, with the new ball. Plenty of talking going on between the players. Maybe they've confused it for a Zoom meeting. Usually happens in a corporate environment that
There is more communication than actual work that is being done. This is coming from corporate experience, of course. Right arm over the wicket to the right hander. Oh, that was there to be hit. He goes for the wild swing, misses it completely. Chance of a run out at the non-strikers and a shy at the stumps and misses everything. Oh, he was a gunner. Not even in the picture. There would have been an unfortunate end for what has been a blistering start here by Manjunath. 1+1. Hisham again. An indifferent start from the previous game. Oh, down the ground. I don't think he's got all of it, or has he? I think it has. The breeze has taken it over, or has it? We'll have to wait for the umpire's decision, and he will point to the heavens to signal a belligerent six here in his slot, and he puts it away magnificently. Giving it the full Monty. The classical step and hit. Clears the front leg and clears the fence. Oh, he's got some power, this man. Just asking for an additional bit of time there. I can understand Hisham's urgency because he wants to get through the over as soon as possible, Ajay bhai. Because he's been expensive. He's balled extras and he's giving sixes as well. What does he do differently here? Plays it away on the onside. Good cricket all round. 6 of the previous ball and gets a single away this time. You cannot get out at the non-strikers end. I mean, you can. There are ways to get out there as well. Mankad is one of the ways. You can also, the ball can ricochet off the bowler's hand to the stumps. But the safest place to be is at the non-strikers end. Now, Manjunath. Let's that one go. Beaten everybody there. Hisham. It's a wild delivery. Wide +2 in the process. There is this amazing story of Imran Khan, the great Pakistani all-rounder who won them the game, the World Cup in 1992. That when Imran Khan started his career in cricket, the umpire used to say, neither right arm over the wicket nor right arm round the wicket. The umpire used to say, right arm anywhere. Because he was just fast. There was no direction to Imran Khan's bowling. But that seems to be the case with Hisham as well. He's got some wheels. He's got some pace. But control is something that he'll have to work on. Landed it perfectly the previous ball though. Foolish delivery. That is hammered down the ground. One of the biggest sixes of the day on one knee. And bang, it went over long on for a scintillating sixer. Hegde Cricket Stadium. He errs on the fuller side one too many times in the over. He was not punished the previous ball, but this time destructive hit from this man. Both the openers, Manjunath and Pratham, are making the bowlers pay. They're going full Monty. They're going hammer and tongs at the bowling attack. They're taking a look at the ball. Just a couple of seconds with the batsman there. Maybe some sort of mantra. Not quite sure what he was checking the batsman on that occasion, but we'll see. What happens on this ball will give us an idea. Gets the single away. To deep mid wicket. They're trying to steal the second here. Terrific running between the wickets. Oh, they were running like hares. One there. Pressure on the deep mid-wicket fielder. It was a call for a 2. And 2 is what they get. They're playing the field at the moment. They're getting the boundaries. It is an exhibition of what an opening partnership should be. Good start this. They've gotten off to a flyer here. Disappointing in the previous game, Raj Blasters. But this game, it seems like they have switched on. They've flipped the switch. And early on in this game, they are under pressure. Some discussion there with the umpire. The score is on
1.534. The Eagles need a way to get back into this contest. Goes off the leading edge. Should be a single. Is a single in the end. 35 of the 2 overs. Oh, this is already looking daunting. They are on their way to a mammoth total at the moment. Raj Blasters, as their name suggests, are going after the bowling from ball 1 here. And they've got the results. They've got the results. 10 wickets in the kitty. Some suggestions there from the batsman. Just telling his non-striker that inform the umpire before you wander off the crease. There was this famous game, Australia versus England in the Ashes, when Johnny Bairstow wandered off the crease and was declared run out after the fielding team has appealed. It is going to be a power play, is it? Yes, it is. Oh, it's insult to injury. I think it's going to be a big over this as well. If they don't pick up a wicket, it's going to be early funeral for the fielding side. It's a batting power play. Just 2 men allowed outside the inner circle. I think it's at times like this that the bowlers avoid eye contact with the captain. Nobody wants to bowl. They don't want their personal figures to be ruined. Omkar, the captain. The captain has taken the onus upon himself. If he gives runs here, whom does he blame? That's a question, because he's taken the important over. Just taking a look at his end of the pitch. But what this long break has caused is a break in momentum. Omkar, a local boy, of course. A foolish delivery, and that's been bombed over mid-wicket. What a start to the batting power play. An amazing hit, an astonishing display of power. That's the 3rd 6 for Pratham in 3 different areas. Full delivery. Oh, he was begging to go off the ground, and that's where it's disappeared. Ball number 1, boom, out of the ground. What's in store for ball number 2? Again, over square leg, different area. Same result. Pratham is on fire at the moment. Oh, he's putting the bowling team under pressure is an understatement of at the moment. You ball it outside the off stump, he'll carve you over extra cover. On the legs, it's over square leg. On the stumps, it's over mid-wicket. He is a magician who's making the ball disappear one after another. Oh, everybody wants a break. We are very happy that we are near a hospital, because this sort of batting could cause some cardiac arrhythmia at the moment. It's Pratham who's taking on the onus of getting those big boundaries. Two balls, 2 sixes. Will it be 3 on 3? Omkar to Pratham. Right arm over the wicket to the right-hander. Let's it go. Let's it go. I think it's a no ball. Is it a no ball? It is. Oh, it's getting worse from bad at the moment. No happy signs. It's going to be a free hit. Not that Pratham needed a second invite, but he will oblige. 2 sixes off the 2 balls. 3, is it? No, off the cue, an important catch to be taken. It is, but it's a free hit. It is a free hit. False joy around the stadium. Won't last a delivery. But it's Pratham who's been given a reprieve thanks to that no ball. Even though it was a free hit, I tell you what, Pratham would have got after it. Nevertheless, slog sweep. Misses it completely. Omkar finally hammers length out on this pitch. You've seen all the sixes that have disappeared. The balls have been really full in the slot, asking the batsman to drive down the ground. And boy, did they drive it down the ground and out of the ground on many an occasion. Length is the way to go. Hammer length. He does hammer length, but it doesn't matter. This is flat as a pan. Over square leg once again. Doesn't matter.
if he did not transfer his weight on the back foot, a front foot pull over square leg is an astonishing shot. Oh, magnificent this. That's his 4-6. Third six in the over. It's raining sixes without a cloud in the sky. Pratham, he is in a mood. That's the only safe place to ball. Outside the wide lines. That's the only way to survive here. He is in a murderous mode. He's muscled the ball everywhere and the bowler is out of options. Every bowler is thinking at the moment that he's not handed the ball. But Omkar, the captain, down the ground, smashed down the ground. And you can almost hear a sigh of relief by the fielders as Pratham gets off strike. End of the third, I beg your pardon. Pratham will be back on strike for the fourth. The score is on 56 of 3. Can you believe it? 56 runs of 3 overs. Run rate is 18.67. 21 runs coming off the last over. It doesn't matter who at the moment. Wherever you ball, it's going only one way. Oh, it was in the slot. In the slot, but the umpire, wreaking misery once again on the bowler, says it's an illegal delivery. We're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Oh, that's lobbed up. Should be taken here. Top edge. Nobody moved. Can you believe it? They kept looking at each other when they had to be looking at the ball. They could have had that first wicket, but not to be that sort of a day for JK Eagles. Oh, that was a definite chance. Nobody tried. Nobody wanted to get close to the ball. They're running away from the challenge. Manjunath tries to go over the onside. Why says the umpire? Wide says the umpire. Whipple, known more for his batting than his bowling exploits, but he's got a job to do here. He's a part-timer. High on the bat. Tried to go over mid-wicket. Pratham wants the strike against Whipple. He is itching to get those big bombers on the onside. You can just feel it here in the comm box that every time Pratham is on strike, something big is about to give. Whipple, right arm round to Pratham. Excellent ball. A sensational delivery there. But no, the umpire says, not yet, my friend. The misery is not over. Whipple once again has to reload, has to recalibrate, has to recoil against Pratham. Oh, as he has that chance of a run out here, where was he going? Where was Pratham going? He's been sold down the river, desperate to get back on strike, did not see where the ball went. The ball landed safely in the hands of the wicket-keeper, and he's been dismissed after playing one of the knocks of the tournament so far. Oh, has he won them the game? Too early to tell, but that is a defining blow, a definite blow to the batting side, having seen Pratham depart. You'll see plenty of claps, plenty of applause, not just from the dugout, but spectators all around the ground for that terrific opening stand. Opening stand broken. Can they make a comeback here? Eagles. They've named after a predatory bird known to take its chances, play the high risk
Iris game and this is in the air. Could be 2-2. Is it? Yes, it is. And a golden duck for the new man in. Is this a new tail in this novel? You never know. Not the best of deliveries, but it does not matter. 2 wickets now. 1 and 3 back in the hut. But it doesn't matter. It doesn't matter. They've got 8 more warriors out there with those timbers in hand. Wickets are not the problem. Runs are the premium here. 8 and 8. Walks out to the middle. Nagaraj, the new man in. Is it true that you want it? Then act like you mean it. I request the 12th man of the Blasters team to kindly report to the comm box. The 13th man of the Blasters team. It was a hat-trick ball. Survives. Does the batsman? End of the 4th. The score is on 63. End of the 4th, the score is on 63. 15.75 the current run rate. Start of the 5th here. Opener. Straight to short extra. Chance of a run out at both the ends. And directly it is. The finger has gone out. That's 3 wickets and 4 balls. Oh, everything happening here. After the departure of Pratham, he's been joined by 2 more of his colleagues in quick succession. A champion, Marshall is a champion, Bungie is a champion, Folland is a champion, Lara is a champion, Gale is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly and a champion, 958, both a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows it, bravo a champion, 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 champion. Everybody knows Chris Gale is a champion. Cricket is a funny game. Before Pratham could pull up a chair in the pavilion to sit, 2 other colleagues have pulled up chairs beside him. New man in. The opener is still there at the non-striker's end though, where he can do nothing but watch. Oh, that's a good hit. That's in the air. It's touching the clouds. There's 2 men calling for it and another catch taken. That's 4 wickets in 5 balls. They're falling like 9 pins. They're falling like flies at the moment. Oh, what's happening here for the Raj Blasters? I think it's panic. Maybe they're too enthusiastic to get those boundaries. More importantly, of the 5 deliveries, only one run has come. Oh, this is going to get interesting if this trend continues. ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਐਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਗਲ ਕੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਚੌਲ ਵੀ ਵਾ ਖੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਦੇ ਪੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ Manjunath. ਹਾਏ ਵੇ ਵੀ ਤੂੰ Manjunath is greeting strikers like he's been visited by guests at the moment because nobody seems to stay. Yaka, the mother of all deliveries, yet another dot. This game is turning and it's turning very quickly in favor of the fielding side. I request the 13th player of Raj Blasters to report to the comm box. This is a magnificent hit and the shackles are broken. That has been pumped and powered over the man at deep square leg region. On his ankles the full toss and he's picked it away stylishly for a huge 6 there. There was a man there, but it does not matter as the ball flies over his head. A terrific 6 and the score is on 69. The score is on 69. Finally a big shot comes. The release shot comes. Goes for the repeat. Tries to get to the non-striker's end. Manjunath is not interested. Akshay on strike.
This time gets it off the queue end. Should be a single in the end. It is a single. Manjunath gets back on strike. But at the end of the over. So strike is retained by Akshay, who's hit that huge six over the onside. Not the easiest shot to hit, particularly when you're new at the crease, but that low full toss. Oh, that bottom hand should be made of stainless steel to get that much power when the ball is tipping on you. But it's a huge score already. It's a mountain already with the score on 70. The score is on 70 after 5. Round arm action. They've already crossed the highest score of this tournament here. 70. Raj Blasters have put on a blistering display of power hitting. Oh, he wanders down the ground. Has he been caught short of his crease? No, the umpire says he's quite safe. Very peculiar action. This man has got Vipul. Short in stature, but his action reminds me of Sohail Tanveer, who played for the Rajasthan Royals in the first edition of the IPL, which they went on to win, of course. Lot shorter than Sohail Tanveer, it goes without saying, but Vipul has been good. Vipul has been very good. Probably underestimated, underrated in his team as a bowler. We thought he was a part-timer when he came on, but he's been given the second over because the premier bowlers have really been carted around. A full delivery, a tipping, full toss. Wanted to really bang it away on the onside. Gets a single, gets off strike. Manjunath has been starved of the strike. And yes, of course, no runs taken because no leg byes here. No leg byes, so he'll have to be back on strike, disappointedly. So Akshay, quite enthusiastic to run down the track. Vipul has been very good. 3 dots here. Can he make it 4? He can! He absolutely can. It's been an innings of 2 halves. One when Pratham was going bonkers at the crease, and now no runs whatsoever. No runs whatsoever. It's the bowlers who are making the ball talk. This is smashed down the ground to the man at long on. Will be a single 1-run score of the 5 balls. Can he end the innings on a high? What started as a nightmare for the fielding side for JK Eagles has suddenly turned into a bittersweet innings with the bowlers coming into their own. End of the first inning should be a single. They're thinking about the second, will remain a thought. The score is on 72. 72 after the completion of 6. Still an impressive 12 runs per over is what they've managed to get after the completion of 36 balls. And Manjunath will carry his bat to the pavilion being unbeaten. He was the anchor to this innings. He was the backbone of this innings. Made sure that his team passed the highest score of this tournament so far. And on the back of this batting masterclass by Pratham, it's going to be a tall chase. It's going to be a difficult chase for JK Eagles, having won the toss and having put the oppositions into bat. Cause this is Africa. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. ಹೊಸ advanced comfort, smart freshness technology. చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు
क्रीज पर पहुंच चुके हैं। इस छोर से दूसरी पारी की पहली गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहा है। आक्रमण के लिए इस छोर पर दुर्गा प्रसाद तैयार हो रहे हैं। शानदार मौसम है। इस दूसरे पारी की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जी नहीं, स्टंप्स के बाहर, लेग स्टंप के आसपास थी मुझे कहना होगा, जिसको खेलने के प्रयास में थोड़ा सा ऑन द राइज गेंद को उछालने का प्रयास किया, बीट हो गए, मिस कर गए। रन्स अभी भी वहीं पर स्थिर है, जबकि शून्य पर रन लेने का अवसर नहीं। अच्छी गेंद, पहली गेंद अगर गिर जाए तो विश्वास गेंदबाज का बढ़ जाता है। दुर्गा प्रसाद की एक और गेंद थी और गेंद को पुल कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। फील्डर गेंद को रोकने में असमर्थ हो गए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये शानदार 4 रन। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शानदार चौके के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। और विकेट, एक और गेंद, फिर से गेंद को उछालने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद जाकर टकनी से टकराई और बैट्समैन जो कि इस वक्त बीट हो गए। रन्स अभी भी वहीं पर स्थिर है, जबकि रनों का शिखर का पीछा कर रहा है। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद, लंबे कदकाठी वाली गेंदबाज, और दुर्गा प्रसाद की गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया। क्या कमाल का ऑफ ड्राइव है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन। थैंक यू। तो कार्तिक उस कहावत को, उस वाक्य को सही साबित कर रहे हैं जो स्वरूप ने कहा था। इस बीच ये गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, 1 रन लेने का अवसर बल्लेबाज के पास। तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बात उन्होंने की कि चेस, बड़ा लक्ष्य चेस किया जा सकता है, उसी तरह से उस बात को सुनकर हौसला बढ़ाया और 2 शानदार स्ट्रोक्स लगाए बल्लेबाज ने। कौशिक ने फिर गेंद को आक्रामक तरीके से उछालने का उनका प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद उनको भ्रम में डालती हुई बिल्कुल निकल गई और विकेट कीपर ने गेंद को समेट लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर 8 रन बना लिए गए बगैर किसी क्षति के, आघात के। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला जेके ईगल्स का था, जिन्होंने क्षेत्ररक्षण किया, और राज ब्लास्टर्स ने अपने नाम के अनुसार ब्लास्ट करते गए और एक बहुत बड़ा विशाल स्कोर उन्होंने बनाया। 72 रन उन्होंने 36 गेंदों में बनाए, जो इस श्रृंखला का सर्वाधिक स्कोर कहा जा सकता है। तो उसका पीछा करने के लिए निश्चित तौर पर शुरुआत में इस रन को अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता है। अंपायर ने फिर संकेत वहां से किया कि यह बल्लेबाजी का पावर प्ले शायद लिया जा रहा है, तो एक और पावर प्ले, मैंडेटरी पावर के प्ले के पश्चात लिया जा रहा है। तो फील्डर्स अब उस पावर प्ले के अनुसार क्षेत्ररक्षण के 30 गज के दायरे के अंदर ज्यादा रहेंगे, और आउटफील्ड में मुझे लगता है कि सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। ऐसे में क्या होगा, दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। चौकों और छक्कों की बरसात करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है जेके ईगल्स को। तो इस प्रयास में शुरुआत में 2 शानदार चौके वो जड़ चुके हैं, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। उसको प्राप्त करने के लिए दोनों बल्लेबाजों को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। एक छोर पर कौशिक है, माफ कीजिएगा कार्तिक है, और दूसरे छोर पर ओमकार। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर ओमकार बल्लेबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं, और आक्रमण पर दूर वाले छोर से राज ब्लास्टर्स के 12th मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। कृपया अंपायर से थोड़ा अनुरोध है, कृपया 1 मिनट मैच को रोके। अंपायर थोड़ा सा मैच को रोके। 12th मैन बहुत जरूरी है स्कोरर के लिए। अपना 12th मैन बार बार बोलना माइक में अच्छा नहीं रहेगा, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे, सहयोग करें। 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में बहुत जरूरी है स्कोरर के लिए, तो एक अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में कंपलसरी होना जरूरी है। बार बार माइक में बोलना सही नहीं होगा, कृपया सहयोग करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरीश इस वक्त आक्रमण पर आ रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर ओमकार तैयार है।
तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। ओमकार बाएं हाथ के बैट्समैन है, इस छोर से राउंड विकेट ये गेंद ओमकार के लिए, उन्होंने गेंद को पुल कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, सीधे फील्डर की दिशा में गई। दायरे के अंदर जो मिड ऑफ पर मौजूद थे उन्होंने गेंद को उठा लिया। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि जो फील्ड प्लेसमेंट है 30 गज के दायरे के अंदर का, वो एक चक्रव्यूह की तरह रचाया गया है, बिल्कुल उसी के अनुकूल गेंदबाजी अनुसार गेंदबाजी की जा रही है। इस छोर पर गेंद को लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं, ये गेंद हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गगनचुंबी स्ट्रोक, दर्शक दीर्घाव में जाकर गिरे 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो ओमकार के बल्ले से जबरदस्त छक्का, इस ओर से एक और गेंद, इस बार बड़ी अच्छी योजना थी और गेंदबाज हरीश ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ब्लॉक होल में डालने का उनका प्रयास था, जो लगभग ऑफ स्टंप के सीध पर थी, उसको देखते हुए जल्दी बल्ले को ले आते हुए जड़ से गेंद को निकालकर पुश भर कर दिया, बल्लेबाज ने सुरक्षित कर लिया अपने आप को। बैकलिफ्ट बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर नियंत्रण में लाते हुए फिर हवा में कैच का मौका विकेट कीपर के पास, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई। बहुत अच्छा मौका हो सकता था और कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट हो सकता है। ओमकार बच गए, इस आक्रामक तरीके से गेंद को उछालने के प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के दिशा में गई। उन्होंने गेंद को कैच करने का प्रयास किया, थोड़ा सा डाइव लगाकर, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई और किस्मत वाले निकले इस वक्त बैट्समैन बल्लेबाज ओमकार। फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहा है। और विकेट, राउंड विकेट, ये गेंद बैकफुट पर गेंद को खेल दिया, फिर फील्डर के दिशा में जो मिड ऑफ पर मौजूद थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि ओमकार भाग्य लिखा कर आए हैं, 2 कैचेस उनके ड्रॉप हो चुके हैं, एक विकेट कीपर के जरिए जो बहुत सुरक्षित हाथ कहा जाता है, दूसरा कैच मिड ऑफ पर जहां पर फील्डर मौजूद थे। आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इसको कैच किया जा सकता था क्योंकि गेंद हाथ से लग कर गई हथेलियों से, जिसकी वजह से बैट्समैन बच गए। और राउंड विकेट, एक और गेंद फिर से जड़ में और इस गेंद को दबा देने का प्रयास, बच गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 14 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के, 14 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। अगले मैच के लिए आमंत्रित करता हूं दोनों टीमों के कैप्टन से, फोर्स फॉरेंसिक और ब्लैक मांबा। कृपया दोनों टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आए। ब्लैक मांबा और फोर्स फॉरेंसिक दोनों टीमों के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आए टॉस के लिए। इस वक्त ऑन फील्ड ऑफिशियल्स के रूप में जिम्मेदारी को निभाने हैं और इस छोर पर आक्रमण पर इस वक्त नागराज आ रहे हैं और राजेश उड़पी जो कि इस वक्त विश्राम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा विश्राम करने से अगले मैच में आप अपना 100% दे सकते हैं। ये अवसर अच्छा है। ऐसे में गेंद को लेकर कितना असर दिखा पाएंगे। नागराज आक्रमण पर तैयार, बहुत रोमांचक खेल चलता हुआ। शुरुआत में रन्स जितना अनुमान लगाया जा सकता था वैसे नहीं बना, लेकिन अभी उम्मीद की जा सकती है कुछ जबरदस्त स्ट्रोक लगे। ये गेंद बीट कर गई बैट्समैन को छकाती हुई, बहुत जबरदस्त गेंद थी। 70 पे 75 के रफ्तार की ये गेंद, जिसको खेलने के प्रयास में बहुत दूर कर रह गए गेंद से, लाइन से, और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और फिर से गेंद नागराज के पास आ चुकी है। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बल्लेबाज कार्तिक तैयार हो रहे हैं। लंबे कद काठी वाली गेंदबाज नागराज, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करने का उनका प्रयास। हाई आर्म एक्शन है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। अंपायर धनुष ने हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है। पटकी हुई गेंद थी, कंधों का ज्यादा उपयोग था और गेंद स्विंग होकर उछलकर बहुत बहुत ज्यादा बाहर निकल गई ऑफ स्टंप के।
जिस पर खेलने के प्रयास में बीट हो गया। बहरहाल वाइड के रूप में 1 रन का इजाफा हुआ। फुल टॉस गेंद को कासों दूर हवा के रास्ते बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025, केपीएल 2025 कहा जा सकता है। और ऐसे में उस जबरदस्त स्ट्रोक के साथ ही मुझे लगता है कि इस वक्त कार्तिक अपने हाथ को खोल रहे हैं। एक और गेंद जो डॉट में तब्दील हुई, अच्छा कमबैक इस वक्त गेंदबाज नागराज कर रहे हैं। वो जानते हैं कि पिछली गेंद जो छक्के में तब्दील हुई उसमें उन्होंने गेंद को फुल टॉस किया था, उसका फायदा उठा लिया बल्लेबाज ने। अब योजना बनाकर कुछ अलग पैतरे के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से उछालने का प्रयास, लेकिन गेंद बाहर निकल गई और अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। 1 रन की साथ ही वाइड के रन्स बढ़कर इस वक्त 22 पर पहुंच चुका है। 22 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 22 रन बगैर किसी नुकसान के। फिर से गेंद डॉट में तब्दील, क्या बात है। वाइड पहले थी, उसके बाद एक सही लीगल डिलीवरी थी, फेयर डिलीवरी, जिसको खेलने के प्रयास में बीट हो गए। गुड लेंथ स्पॉट से गिरकर गेंद बहुत तेजी के साथ निकल गई और बैट्समैन बल्ले को चलाते रह गए, मिस कर गए। ओवर विकेट इस बार उछाल दिया और इस गेंद को कोई नहीं रोक सकता है। लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए, जबरदस्त सिक्सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केपीएल जबरदस्त छक्के के पश्चात 2025 की एक क्रिकेट श्रृंखला इस गेंद पर कुछ नहीं बना, डॉट में तब्दील हुई और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्ति पर 28 रन बगैर किसी नुकसान के, 28 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, यानी कि अभी 18 गेंदें शेष बची हैं। और इक्वेशन आपको बता दें, बचे हुए 18 गेंदों में 45 रनों की दरकार है। 45 मोर रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। 18 गेंदों में 45 रनों की दरकार। एक छोर पर कार्तिक एक जुझारू बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओमकार उनका साथ दे रहे हैं। एक छक्का ओमकार भी लगा चुके हैं। कार्तिक ने अब तक 2 जबरदस्त छक्के और 2 शानदार चौके लगाए हैं। तो कार्तिक बहुत फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। उनको ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो रनों को ज्यादा तेजी के साथ बना सकते हैं। ऐसे में दूसरी ओर राज ब्लास्टर्स के कप्तान पर इस वक्त जिम्मेदारी है कि किस गेंदबाज को वो आक्रमण पर लगाएं, और इस जिम्मेदारी को उन्होंने इस वक्त हरीश को आक्रमण पर लाया गया है। तो हरीश कोटे का दूसरा और अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। और उनकी गेंदबाजी में फील्डिंग में जो प्लेसमेंट है, फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। ऑफ साइड में अगर देखा जाए, नजदीकी खिलाड़ियों में और लगभग पॉइंट और कवर के बीच में एक खिलाड़ी को रखा गया। कवर डीप में है और फिर एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर, जी नहीं, डीप में रखा गया है। एक खिलाड़ी मिड ऑफ में रखा गया है। और उसके अलावा ऑन साइड पर अगर देखा जाए तो स्क्वायर लेग थोड़ा सा बैकवर्ड है और मिड ऑन क्षेत्र में दायरे के अंदर एक खिलाड़ी, बाकी 2 खिलाड़ी डीप में दिखाई पड़ रहे हैं। एक खिलाड़ी मिड ऑन डीप में है, जबकि लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर भी एक खिलाड़ी मौजूद है। तो बहुत शानदार क्षेत्ररक्षण का फैलाव है। इस छोर से गेंद राउंड विकेट, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। 1 रन लेने का अवसर और फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई, लेकिन बच गए कि उनके पैरों से टकराकर गेंद वहीं पर थोड़ा सा रुक गई, जिसकी वजह से उन्होंने गेंद को दोहरे प्रयास में फील्ड किया। लेकिन इस दौरान बल्लेबाजों के पास 1 रन को बटोरने का समय था और इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर 29 पर पहुंच चुका है। 29 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 29 विदाउट लॉस। फील्डिंग में फिर से थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे समय काफी नष्ट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और अंपायर से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा पुश करें। कप्तान को कहें कि बार बार अदला बदली और स्ट्रैटेजी में योजना बनाने में समय निकल जाता है। ऐसे में इस छोर पर गेंद को लेकर फिर से हरीश आक्रमण पर तैयार। उनकी गेंद ओवर द विकेट,
इस बार हवा में उछाल दिया गेंद को, कैच हो सकता है, विकेट कीपर गेंद के नीचे आ गए, लेकिन क्या कहें, जब किस्मत साथ दे तो बल्लेबाज बिल्कुल बच जाते हैं। ये मौका विकेट कीपर ने गवा दिया। बहुत देर गेंद आकाश की ऊंचाइयों को नाप रही थी और ऐसे में विकेट कीपर के पास, फील्डर के पास मौका था कि वो जाकर गेंद को कैच कर पाए, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई और बल्लेबाज बच गए। एक रन को दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। ओमकार इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। कार्तिक बच गए। कार्तिक का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था। अगर कार्तिक ज्यादा देर क्रीज पर रहें तो वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर वो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे। इस छोर से गेंद लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी, अंपायर वाइड घोषित करेंगे इस गेंद को। जी हाँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। एक रन वाइड के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 31 पर 31 विदाउट लॉस। और योजना बनाकर गेंद को करने में हरीश थोड़ा सा इस बार विफल हो गए। गेंद दिशाहीन रह गई और फिर से गेंद को लेकर वो तैयार हो रहा है। इमारत छोर से उनकी गेंद, राउंड विकेट, फुल टॉस से हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया। फील्डर वहां पर है लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई एक्स्ट्रा कवर डीप में और बैट्समैन को, बल्लेबाजों को कुछ रनों को लेने का अवसर प्राप्त हो चुका है। 2 रनों को दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिया और दोनों बल्लेबाज आज कहूंगा कि तकदीर लिखा कर आए हैं, बच गए। ओमकार भी बच गए। इस बार अच्छा मौका था फील्डर के पास एक्स्ट्रा कवर डीप में कि वो इस गेंद को कैच कर पाए। इस कैच को अगर लपका जाता तो एक विकेट जरूर गिरता। बहरहाल उनके हाथ से गेंद छूट गया और फिर से राउंड विकेट इस छोर से गेंद उछालने के प्रयास में फिर कैच का मौका, लेकिन फील्डर इस बार बहुत दूर खड़े हैं, काफी लंबा फासला तय करते हुए गेंद तक पहुंच गए और बल्लेबाजों को अवसर प्राप्त हुआ कि वो 1 रन को दौड़कर पूरा कर लें। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 पर बगैर किसी नुकसान के, आघात के। दोनों बल्लेबाजों में आपस में कुछ शब्दों का लेन देन हुआ और फिर वो अपनी जगह पर ओमकार नॉन स्ट्राइक एंड पर, कार्तिक स्ट्राइक एंड पर। वो विकेट इस छोर से गेंद ऑन साइड पर उछालने का प्रयास था लेकिन गेंद हवा में पॉइंट दिशा में कैच कर लिया गया। इसी के साथ पहला झटका लगा और बैट्समैन आउट हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शानदार कैच के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। तो इस छोर पर इस गेंद को लेकर गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं। विकेट उनकी गेंद इस बार उछाल दिया, बहुत करारा हो गए। फील्डर गेंद के नीचे आए जरूर लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 40 रन अब तक बच चुके हैं। 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी 2 ओवर्स बचे हुए हैं, 12 बॉल्स टू गो और लगभग मुझे लगता है 33 मोर रन टू गेट। 12 गेंदों में 33 रनों की दरकार है। बहुत रोमांच इस वक्त चलता हुआ। औसत आपको बताए 16.50 का रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त दरकार है, आस्किंग रन रेट है। तो हर ओवर में 16 के ऊपर 16.50 का रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त जरूरी है टीम को। ऐसे में क्या होगा, इस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। 2 ओवर्स बचे हुए, 12 गेंदें बची हैं, 12 बॉल्स टू गो एंड 33 रन टू गेट। आक्रमण पर इस छोर पर
नरेंद्र तैयार हो रहे, उनकी गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद को उछाल दिया है। क्या कमाल का स्ट्रोक है लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। पहली गेंद को उन्होंने प्रहार किया, फिर से गेंद को उछाला है। एक और जबरदस्त स्ट्रोक हो सकता है दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। थैंक यू। ओमकार बल्लेबाजी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। 2 लगातार छक्का वो जड़ चुके हैं। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद राउंड विकेट थी, शॉट ऑफ लेंथ, फिर से गेंद को उछाल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, अंपायर ने कहा कि लगातार तीसरा छक्का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र इस वक्त बहुत खर्चीले साबित हो रहे हैं, ओमकार बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। याद दिला दें आपको, पूर्व में युवराज सिंह ने जिस तरह से 6 गेंदों में 6 छक्का लगाया था, क्या ऐसा हो सकता है? राउंड विकेट इस छोर से गेंद, फिर से गेंद को उछाल दिया, लेकिन इस बार गेंद छक्के में नहीं लेकिन चौके में तो जरूर तब्दील होगी। शानदार 4 रन। Open Gangnam Style. थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या बात है, परिस्थितियां बदल गई इस ओवर में। 11 रनों की दरकार है अब मैच को जीतने के लिए। 8 balls to go, 11 runs to get। इस बल्लेबाज ओमकार ने तो आज सारे दर्शकों का मन जीत लिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी वो कर रहा है। फिर से गेंद को उछाल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये शानदार 4 रन। कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरूप जाते जाते पहली पारी में कह गए कि साउथ अफ्रीका इतना बड़ा लक्ष्य पीछा कर सकती है तो क्यों नहीं होगा। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, फिर से गेंद को उछाल दिया, लॉन्ग रेल के ऊपर से गेंद जा रही है, एक और झन्नाटेदार छक्का। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। जेके ईगल्स की ये बल्लेबाजी, खास तौर पर ओमकार की अगर बात करें तो किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 73 रन का पीछा किया जा सकता है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक ओमकार ने लगाए और अपने टीम को ले आकर जीत के द्वार पर खड़ा कर दिया। 1 रन की जरूरत है उनको इस मैच को जीतने के लिए, और ऐसे में लंबे कदकाठी वाले बल्लेबाज इस वक्त मंजुनाथ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। गेंद को लेकर आक्रमण पर मंजुनाथ गेंदबाजी में आए हैं और स्ट्राइक एंड पर प्रतीक तैयार हो रहे। प्रतीक ने गेंद को खेल दिया, 1 रन चुरा कर इसके साथ जेके ईगल्स ने इस सर्वाधिक 73 रनों का पीछा करते हुए इस मैच को शानदार तरीके से बिल्कुल 8-7 विकेटों से जीतकर एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान बनाया है। बहुत बहुत अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी ओमकार ने की है। ओमकार का इंडिविजुअल स्कोर आपको बता दें, 42 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें
5 जबरदस्त छक्के उन्होंने लगाए और 2 शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को जीत का स्वाद उन्होंने चखा दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ ही जेके ईगल्स ने इस मैच को जीत लिया और आगे बढ़ चुके हैं, जबकि राज ब्लास्टर्स को इस मैच में वो ज्यादा, हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी तो उन्होंने की, लेकिन अंतिम लॉन्ग ओवर्स में रनों पर नियंत्रण वो नहीं रख पाए और इसी की वजह से इस मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा। उनको अगले मैच के लिए, श्रृंखला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और नया ताज़ा मैच शुरू होने वाला है और मुझे लगता है कि इस वक्त नए ताज़े मैच के लिए फिर से विवरण में बदलाव होने की जरूरत है। आगे विवरण के लिए स्वरूप जी से अनुरोध करूंगा कि फिर से शानदार नया मैच शुरू हो रहा है, फिर से उसी टेम्पो के साथ हम प्रयास करें कि एक और दिलचस्पी वाला मुकाबला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
here. Stylishly played on the onside. Uses those wrists of his, but doesn't get off the mark. Force Forensic have won the toss. They're the gentlemen draped in pink. Won the toss and have decided to bat first. An unusual decision on this ground, because you've seen time and again skippers generally decide to field first, but this is in the air and taken! Look at the celebration. They are up and about. They are in hoots, aren't they? The left-hander has been dismissed very, very cheaply. Second ball wicket here. A terrific start for the bowling side. They're searching for batters. They're searching for batters, aren't they? Force Forensic took a long time for them to send number 3. Just looking at the jerseys, it looks like past versus the present of Rajasthan Royals, because the fielding side, similar jerseys to their winning team in 2008, Rajasthan Royals, but now they're draped in pink, of course, which the batting side is wearing. But another left-hander, is it? It's going to be interesting. Number 1 and 3, if there are left-handers, they are. They are left-handers. Looks like a tactical choice, this. One southpaw dismissed, another walks in. Such an advantage having those southpaws in your team, having those left-handers. We saw in the previous game what a destructive weapon a left-hander can be. Yet to get off the mark here at the batting side. Force Forensic have not been able to establish that early start that they were looking for. They've lost one of their openers. Dave is the man dismissed, but Ranjit has replaced him, yet to get off the mark. Let's that one go, and will be a wide, is it? Yes! Slightly offline there. But finally some runs on the board. The first run on the board in the form of an extra. But what is a safe score here? 72 was struck down in the previous game. That will send down nervous jitters for the chasing team. Oh, this is in the air. Has it gone all the way? There is another wicket in the first over. 2 dismissals. 2 left-handers have been dismissed for a duck. Oh, this is a sensational start here. You can see they're up and about. Energy, enthusiasm on the field. 2 wickets for 1 run. It's a new man in Sauran who will walk in with their top order dismissed. Acid rocker. Hari Prasad, the experienced Hari Prasad, has really bowled well in the previous games, and he's hurrying the batsman, isn't he? Hari Prasad. He walks in again to another left-hander. Oh, this is slapped on the offside. No run taken. The only runs on the board. The highest scorer at the moment is in the extras column with only 1 run scored of the first 4 with 2 wickets down. They've got a bundle of lefties in their team. Down the ground, straight to the man. A diving effort will keep them at bay. End of a stupendous, a mesmerizing first over. Credit to the bowler there. He's been the wrecker-in-chief. Not only has he picked up those 2 wickets, he's not conceded runs as well. Just 1 on the board in the power play is a monumental effort. They've been put on the field and the bowlers have made the ball tuck. First round goes to the fielding side. Hussain is going to be facing for the first time in this innings, but he's under some pressure here. Will be a power play. What does he do? Does he play out this over? There is no time.
but he's lost 2 of his important wickets. What does Hussain do? With Venkatesh almost giving a false alarm to the batsman there. Batsman had his hand up like a traffic policeman, but the bowler, like a teenager, didn't really care. Just came running and steaming in. But false alarm. Here we go. First ball of the second over. Right arm over. Slower delivery. That's smashed down the ground. Has he found the gap? I think he has excellent effort there by the man at long off. Keeps it down to a couple of runs. Never easy that. But finally some runs off the bat. Hussain, lovely shot. On the front foot, he was on the charge. Cricketing stroke that looks like a classical player, this man. So important to do the basics right. Or this time on the stumps, can do no more than block it to the man at short mid-wicket. This is a fast start. You can see that Black Mamba, they're hunting at the moment like a snake in the grass. They have struck the opposition unaware. Smash down the ground to the man at mid-on. No run once again. Toss have been frequent in this innings. You can hear a pin drop in the Force Forensic Pavilion here. No one saying a word, no one uttering a word at this point. Things looking ominous here. Change in pace, a change up there. Batsman going for that drive one too many times. Predictability. It's a bane in the short format of the game. He knew that the batsman is committed on the front foot. Decides to ball the change up. Ball just gripping off the surface, beating the batsman on the outside edge. A victory for the bowler. Bang, down the ground, all power, no placement whatsoever. He's a gun fielder there at mid-on. He's not letting anything go past him so far. It was struck with some power, but not any placement. This is good stuff. They're building on the pressure. They're piling on the pressure on Force Forensic here. Will it force a mistake? Will it force a false shot here? Right arm over. Tries to cut it off the front foot. Not the best looking shot there. Loses his shape all over that delivery. End of a second. Just 2 of the second. 1 of the first. This innings is not going anywhere. This is the best time to bat in the innings. In the twilight zone we are. We are in the golden hour. And it is in this time of the day that the batsmen have to make the bowlers pay. Dr. Shoaib. Sauron, he's got some runs in his name, but not on the scorecard at the moment. Yet to get off the mark. Man dressed in pink. To the left-hander. How many times have we seen a short left-hand batsman really take on a tall right-arm bowler? Not very often in international cricket. This is heaved on the leg side. An ugly hoik. Doesn't get all of it. Gets off strike in the end. They've got that single. They've got 50% of what they've scored in this one ball, which is not saying much considering the score is just 3. Oh, that's been pulled into the gap, hopefully, but no, it isn't. Good tidying up this. Excellent ground fielding this. Whoever is the fielding coach of Black Mamba deserves a raise. Deserves a raise. I know we are not in the appraisal cycle yet, but excellent stuff this. We're seeing time and again that the fielders are prowling. Fielders are hunting in the outfield. Down the ground again. Singles won't hurt them at this point. Little too adventurous there. Over enthusiastic fielding. But no harm, no foul in the end. The score is on. The score is on 6. The opener still intact. Hussain is looked threatening, but not yet converted. Any of his hitting into boundaries again on the onside. That man at mid-on has been quite busy. If you look at his watch, I'll tell you what, he's got the more steps than any other fielder in this game, because quite a hot spot that. Mid-on. Down the ground. Hammered down the ground. Has he split the field? No, he hasn't.
bullet-like throw to the non-strikers will keep it down to another single. They're just getting those changes at the moment. They need those big notes. They need those big hits, which are not coming. Maybe their best batters are back in the pavilion. Is there a plan B for the batting side, who won the toss, decided to bat first, but tragedy struck in the first over? Again on the onside. They're bowling to a plan. No looseness whatsoever. Asking the batsman to take the risky option of hitting across the line. There is a lovely breeze that's blowing across the ground. The batsmen need to take advantage of these conditions. Right now they are not. The score is on 8 after 3. 6 runs coming off the last over. Respectable when you look at it only with respect to the over that was bowled. But overall, they're just at 8 runs. It's not enough. It's not enough. 72 runs were chased in the previous game. And if you're at 8 runs after the completion of 3, you're in dire straits. You're in dire straits. You need a magical innings. But remember, it was that man, Tewatia, Rahul Tewatia, who was dressed in pink, who turned the game around in the IPL. He was a left-hander. He was wearing that pink jersey for Rajasthan Royals in an IPL game where he smashed Sheldon Cottrell for 5 sixes that changed the game around. But is there a Tewatia here in Sauran who's got only 2 runs off the 5 balls that he's faced? Bad delivery. Bad delivery. He's lucky. He's gone only for a wide there. But they'll take it. But they'll take it at the moment. Runs are trickling at the moment. It was flowing in the previous game, but now it's come down to a halt thanks to some excellent bowling here. Oh, steps down the track. Shimmies down the track. But doesn't get anywhere near the pitch of the ball. Decides to go through with the shot anyways, but doesn't get any bat on ball. Another dot. Beg your pardon, it was a wide. And this is smashed over the offside. I think it's vacant and it's gone all the way. That is a sensational hit there. Gave himself room. The bowler tried to ball it away from the batsman's arc, but it was good enough to get some bat on it. And an excellent shot that to find that gap on the offside took some skill. And he's cleaned him up. What a comeback that is. Gets his man off the next ball. 4 of the previous. He has the final laugh, doesn't he? And there is a mess at the striker's end. It was full, it was straight. The batsman was backing away. And he gave too much room for himself as he's castled. And that small partnership is broken. An important partnership is broken as Sauran makes his whack back to the pavilion. He takes his seat. It was a slower ball, Sauran is telling his teammates. Doesn't read it in the air. Is beaten in the flight and has to pay the ultimate price. Finally, the first time in the innings, there is a right-hander at either ends of the ground. Will that make a difference? Left-handers have struggled in this game, but they were making merry in the previous. 2 right-handers in the middle order. Could there be a change in fortune with a change in hands? New personnel out there. He's taking his time to take his guard. The score is on 14. We are in the 4th. They need some lusty blows. They need some massive sixes here. White says the umpire. Bowler not happy. He's not happy there. But always be on the good side of the umpire to get those marginal calls. Some disagreement. The umpire saying, I'm in my best years. I can see quite right, my friend. White signal in the end. Mayur on strike. Oh, off the outside edge. Half chance there. Thought about the dive. Number 10, then realized he's got 3 more games to go. Best not to injure himself. Gets that one away, but not to a single though. Another dot.
got a balanced stance, this man. Oh, down the ground, down the ground. Has he picked up the man? He hasn't. A valiant effort. It was attacking fielding there. Really have to give credit to the man at long off. He took the riskier option, dives in front of the ball. But luck, fortune not favoring him as the batsman finally gets it away. Tries to repeat. This time the length not quite there for the batsman to free his arm. Not in the slot. In this pitch, it's a little uneven in the good length area. You have to hammer it there. You really have to hit length on this 22-yard strip to make the most out of it. This is in the air. This is high. This is handsome. This is taken in the deep. Oh, it was close. It's a game of millimeters. Cricket, it's a game of destiny. We'll have to wait for the umpire's decision. I think he's gone. Just a wisp of wind required for the ball to go over the top, but not to be. An excellent connection as the batsman looks at the replay with a forlorn face and walks back to the pavilion. That was their glimmer of hope. They were latching on to straws in the end. They wanted Mayur to play that big one at number 5, but not to be. Not today. There are some encouraging words here in the pavilion. He's saying he got a little unlucky there. The score is on 19. The score is on 19. 4 overs, 19. 12 legitimate balls to go in this innings. How much can they get? How much is enough on this batsman's paradise here? It's been a run machine, this pitch. Oh, down the ground, down the ground. It's gone all the way. Yes, it has. What a shot that is from Hussain Sophie. The stylish right-hander, the swashbuckling right-hander has hammered that ball over long on in the slot, brings his wrist into play and blasts it over the man there. A terrific start to the penultimate over. 11 balls to go. The score finally at a runner ball at 25. He is the opener. He is the man who's got all the responsibility on the shoulders. Again, he goes again. Swings and misses. Change in line. Change in length. You can see time and again. Once the bowler pulls his length back, the batsman really struggles to go through with the shot. With normalcy restored here now. After that dot delivery, Hussain Sophie, he's been there for the most number of balls in this innings. Can he make it count? Goes for the pull, finds the gap. Has it gone for the fence? Yeah, we'll have to wait for the umpire's decision there. Yes, two declared. Two declared. Two declared by the umpire. Change in decision, is it? Yes. Change in decision. Gets that boundary. The umpire is excited as well. He's wearing pink also. So you can see that he is excited with that boundary. Oh, it's a 6 of the first ball, 4 of the next. He's on his way, Hussain. Big, huge, massive hit over mid-wicket. Hussain's in the mood, in the slot, and away she goes. Over the fence. Oh, this is a batsman's dream, isn't it? He's well set and he's seeing the ball like a beach ball out there. He's middled that. Focus on timing. More than par on that occasion. Elegant looking batsman this. And he's killing them with those big boundaries once again. Lets it go. White says the umpire. Tries to go for the leg stump Yorker. Beaten completely. Someone as good as Hari Prasad. He's feeling the heat. Even as the breeze blows across the ground. Some advice there from the non-striker. Maybe to say you've got enough in this over. Time to rotate. But what will Hussain do? Will he go for the biggie one more time? Will he rotate? Pulls in front of square. Man at deep square leg should keep it to a single. Will keep it to just a single. The score is on
37. The score's on 37. Finally, it looks respectable. Finally, their bowlers will get something to defend. Last ball of the 5th. This is a free hit ball for the batsmen because they can go full Mountie here. Devin. Where is he targeting? Over mid-wicket. This is knocking on the doors of heaven as the ball comes down and taken by the man circling down. And an end of a partnership where Devin contributed nothing. It was Hussain all the way, but it doesn't matter. He took the right option, had to go for the big one, but he's dismissed in the process. A new man in, but all the more important fact is Hussain is back on strike for the final 6 balls. He's been on song. He's been in his zone. It's Hussain and Elvis in the 22-yard strip. 37 in 5 overs. They're still under par. They still need about 20 to make this interesting. As long as Hussain's there, the fielding side, Black Mamba will think that they've not yet sealed the deal. Anything under 50, Black Mamba will be very, very happy with the effort. 37 of 5 overs. Look at that stance. Technically perfect at the moment is Hussain. Brilliant. Down the ground. Has he found the gap? I think he has, but excellent fielding there. Keeps it down to a single as well. It went like a rocket to the man at long off who had to cover 5 or 6 yards to his right, and he does that swiftly. Hussain at the non-strikers, and that's not where he doesn't want to be at the moment. Can he get a single? Can he get Hussain back on strike? He can't. This is lobbed up in the air. Should be a simple catch. Is a simple catch in the end. He's stranded. Is Hussain at the non-strikers. Their best chance of posting a huge total is going down the drain. Each ball, Hussain is off strike. New man in, number 33. Priyansh, all he had to do was get that single over to Hussain, but he wanted to play that glory shot. Gets the splice of the bat. Elvis. Good so far. Just a single after the carnage in the previous over. Cleans him up, gets his man right through the batsman defense. Another wicket falls, and more importantly, it's another dot in the final over. Hussain looks at his partner with disbelief, disdain, and disappointment at the moment. He needs some support. He can't do this on his own. He needs to be on strike to get them to that total, but not happening at the moment as partner after partner keeps deserting him. The score will remain on 38. 3 balls remaining in this innings as the floodlights slowly come on here at K.S. Hegde Cricket Stadium. Things are getting really interesting here in the first innings. Full delivery on the legs. It's in the air. Another wicket it is. It is a hat-trick. Can you believe it? Just like that, the tables have turned. The tides have changed. Hussain stranded at the non-strikers, but jubilation by the Black Mambas. It is Elvis who's got the first hat-trick of the tournament. Elvis Presley, the famous American singer, had people dancing to his tunes, but this Elvis is making the ball dance to his tunes at the moment. He's been mesmerizing here. He's a magician with the ball. 3 wickets of the last 3 balls as Hussain looks at number 10, stares down number 10. Will they be all out here? 2 balls remaining. 2 wickets left. Oh, that was a nothing shot. Nothing shot, but in the end, Lady Luck favoring the batsman there. White says the umpire gets a glaring look from Hussain. He's seen 8 partners depart him.
Right arm over. What is the advice from Hussein? He wants the strike. He's gotten off. Strike off the first ball, and it's been nothing. Beaten by the bounce. Tries to open the face of the bat. Tries to play a cute little square cut. Doesn't get any bat on ball, but more importantly, it's the number 10 who will face the ultimate ball of this innings. The score has gone nowhere in this over. Just a single taken of the first ball. How will this end? Good looking cover drive in the gap as well. They're thinking about a second. They will scurry. They will hurry for those couple. And the end of the first innings. Black Mamba will be mighty pleased with their terrific bowling effort. It was a one-man show in the batting scorecard with Hussein Sofi remaining unbeaten and will carry his bat into the pavilion. 41 is what Force Forensic have got in their... 41 is what the forensic team have got in their effort to post that above par total, but not to be. They've fallen short by 15 at least in this limited over fixture. It's all up to the bowlers now, but Black Mamba, what a venomous effort with the ball. They made the ball talk, especially the last over, and even before that, they started well, they finished well. It was in the middle that they lost the plot a little bit, but their bowling coach will be mighty pleased with the effort. With 42 to get of 6 overs, it's going to be 7 runs required per over for Black Mamba to stage a victory as they move on in this tournament. As I hand over the commentating duties here, contrasting display in batting in the first innings. 73 was what was required in the previous game, but now you see that the first inning score has fallen down to 42. You think there is a change in conditions, Ajay Bhai, or is it just irresponsible, rash batting? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप। बहुत संघर्षपूर्ण मैच हो सकता है, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं केपीएल 2025 यानी कि क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। इस शानदार मैदान पर के मेडिकल एकेडमी का ये बहुत खूबसूरत कैंपस का मैदान है, हरियाली से भरा हुआ, और हमारे बाईं और सामने और बड़ी बड़ी इमारतें जो कि मेडिकल कॉलेज के दिखाई पड़ रहे हैं, और दाहिनी और माफ कीजिएगा बाईं और घने पेड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं जो आज हमारे साथ दर्शकों की भूमिका को अदा करेंगे। शानदार दृश्य है। समय इस वक्त शाम का चल रहा है, 6:10 हो चुके हैं और ये श्रृंखला एक नया इतिहास बनाने जा रही है। शानदार मौसम है आज, जैसा मैंने आपको बताया सवेरे से सूरज हमसे आंख में चोली खेल रहा था। कल रात को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं दर्शकों में और क्रिकेट प्रेमियों में थोड़ा सा दबाव था, थोड़ी सी आशंका थी कि आज खेल होगा नहीं होगा, लेकिन प्रकृति ने साथ दिया और शानदार खेल देखने को मिला। कुछ देर पहले आसमान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस वक्त आकाश में दूर दूर कुछ धुंधले गहरे काले बादल दिखाई पड़ रहे हैं। पंछियां अपने घोंसलों की ओर बढ़ रही हैं। बहुत शानदार मौसम है क्रिकेट के लिए अनुकूल। फ्लडलाइट की दूधिया और सुनहरी रोशनी जल उठी है, झिलमिला रही है। शानदार मौसम है। ऐसे में दो टीमों के बीच में एक बहुत बड़ा महासंग्राम होने जा रहा है, ब्लैक मांबा और फोर्स फॉरेंसिक। फॉरेंसिक आप जानते हैं मेडिकल भाषा में कहते हैं, और उसके अलावा ब्लैक मांबा की अगर बात करें, अफ्रीका का वो जहरीला सांप जो जिसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है, उस नाम के मुताबिक बहुत शानदार गेंदबाजी इस वक्त इस टीम ने की है। आइए दूसरी पारी की पहली गेंद की ओर चलते हैं, और पहली गेंद को लेकर आक्रमण के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। देव इस छोर पर आक्रमण पर है। देव आज शुरुआत में बल्लेबाजी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए, लेकिन फिर आज जिम्मेदारी गेंदबाजी में कुछ न कुछ उनको करके साबित करना होगा कि वो बहुत शानदार ऑलराउंडर है। आक्रमण वो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक एंड पर
राहुल तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद ओवर विकेट राहुल के लिए। राहुल ने गेंद को देखा, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर थी, उस गेंद के उछाल को देखते हुए अपने आप को पीछे की तरफ टो की दिशा में, टो पर उछल कर गेंद को दबा देने के अंदाज में बल्ले का टॉप एज देखकर गेंद को नीचे रख दिया और सुरक्षित कर लिया अपने आप को। राहुल स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की एक और गेंद ओवर विकेट, इस बार लेंथ में ज्यादा करते हुए इस गेंद को खेलने के प्रयास में थोड़ा सा हल्के हाथ से गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर पॉइंट की दिशा में थोड़ा तिरछा खेल दिया बल्लेबाज ने। रन लेने का अवसर नहीं है। दूसरी बात अगर करें, फॉरेंसिक ने जिस तरह से टॉस जीता पहले बल्लेबाजी की। पहले इस गेंद पर आते हैं, इस छोर से गेंद इस बार लेफ्ट कर दिया, गेंद को ड्राइव कर दिया, सुंदर स्ट्रोक। एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है, अपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज की दिशा में नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन को दोबारा खींचकर पहुंचाना पड़ा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। रन 0 पर है। देव का आक्रमण अभी जारी है, वो कूदने के अंदाज में दौड़ते हैं। ये गेंद लेंथ में ज्यादा थी, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ गई। शानदार कवर ड्राइव है, 4 रन। विकी वाइकिंग्स और बाईपास ब्रिगेड के बीच में अगला मैच खेला जाएगा। विकी वाइकिंग्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। इस बीच इस ओवर की गेंद, इस बार फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस, जिसको बल्ले का निचला सिरा देकर धीरे से कट भर कर दिया। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 पर बगैर किसी क्षति के आघात के। बल्लेबाजी की अगर पिछले पारी की बात करें, हुसैन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, अगर उनकी बल्लेबाजी न होती तो मैं समझता हूं कि इस मैच में फॉरेंसिक निश्चित तौर पर बहुत पिछड़ रहा होता। एक जबरदस्त जाबाज दिलेर बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई और अपनी टीम के उस आन बान को बचाकर एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आखिरी ओवर में उनको बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला। नॉन स्ट्राइक एंड पर वो देखते रह गए कि दूसरी ओर विकेट किस तरह से गिर रहे हैं। इस छोर से एक और गेंद हवा में उछाल दिया, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घाव में जारी है 6 रनों के लिए। तो जबरदस्त छक्का, और डीजे से अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सा तैयार रहें। हर चौके छक्के और विकेट्स के पश्चात शानदार धुन बजती है, वो स्तर को थोड़ा सा बढ़ाती है, इस वातावरण को चकाचौंध करती है। इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। रन्स आपको बता दें, कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 11 बगैर किसी क्षति आघात के। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करने का प्रदर्शन दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। इस वक्त राहुल 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले का संकेत अंपायर ने किया है। दूसरी छोर पर दिलीप बल्लेबाजी कर रहे हैं। रंजीत आक्रमण पर, उनकी गेंद थोड़ा सा आगे निकलकर गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में, रन आउट का मौका, थ्रो विकेट पर गिरा जरूर है, लेकिन अंपायर इस रन आउट से कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं हुए और इस अपील से प्रभावित नहीं हुए। ओवर थ्रो के रूप में 1 और रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। और अब इस अपील को देखते हुए अंपायर ने जाकर स्क्वायर लेग पर खड़े अपने साथीदार अंपायर से जाकर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या इस अपील को स्वीकारा जाए। नहीं, नजदीकी मामला था और अंपायर ने आखिरकार तीसरे अंपायर की ओर संकेत किया है कि इसको देखकर वो बताएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इस वक्त खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। क्या बल्लेबाज क्रीज में पहुंच गए या नहीं, इसको देखने के लिए तीसरे अंपायर इस वक्त कैप्चर किए गए दृश्य को रिप्ले में देखकर बताएंगे। और जितने सारे टीम मेंबर्स हैं उनसे अनुरोध है वो कृपया पीछे न जाएं, क्योंकि अंपायर की जिम्मेदारी है कि वो इसको देखकर बताएं ताकि बाद में बात का पतंगड़ न बने। और इस वजह से सारे खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा। तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। तो अंपायर ने कहा कि आउट है। इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। शानदार विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 डीजे।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केएल राहुल आउट होकर पवेलियन लौट गए। मैं देखना चाहता था केवल केएल राहुल का नाम सुनकर कौन इस तरफ मुड़कर देखे। बहरहाल राहुल आउट होकर लौट गए, माफ कीजिएगा। तो राहुल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नॉन स्ट्राइक एंड पर आउट होकर लौट गए। दिलचस्पी कितनी है, कितने लोग कितने ध्यान से कमेंट्री को सुन रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेक करना था। बहरहाल फ्लडलाइट की रोशनी झिलमिला रही है। एक बहुमूल्य विकेट गिर चुका है और आक्रमण पर फिर से रंजीत तैयार हुए। दौड़कर उनकी गेंद हवा में उछाल दिया, कैच होगा। फील्डर थोड़ा सा पीछे वाइड है, वो गेंद तक पहुंच गए। टप्पा खाने के बाद गेंद उनके पास पहुंच गई, उनके हथेलियों में समा गई, लेकिन बल्लेबाज के पास समय था कि वो एक रन को दौड़कर पूरा कर ले। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर 12 पर पहुंच चुका है। मध्यम धीमी गति से कुछ तेज हवा बह रही है। क्या बात है, शानदार हवा बहती हुई इस वक्त इस वातावरण को बहुत ठंडा बना रही है। बहुत सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मैदान में जितने सारे धूल मिट्टी हैं और उड़ रही है हवा में, और मुझे लगता है कि रंजीत इस अवसर पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो उनके गेंद को कुछ ज्यादा रफ्तार मिलेगी। क्या वो ऐसा करेंगे या फिर थोड़ा सा रुकेंगे? बल्लेबाज चाहते हैं कि वो थोड़ा सा रुके, क्योंकि ज्यादा पेस वो शायद सामना न कर पाए। कैमरामैन और टेक्नीशियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि मुझे नाम नहीं पता कि कौन सा टीम इस वक्त काम कर रहा है लाइव टेलीकास्ट के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो विकेट इस छोर से गेंद इस बार अच्छी गेंद थी। अच्छी गेंद का सम्मान करना जानते हैं बल्लेबाज। हरिप्रसाद ने इस गेंद को देखा जो स्टंप्स की सीट पर थी, लेंथ में अच्छी खासी आ रही थी, उसको विकेट को कवर करते हुए बिल्कुल एक अच्छी तकनीक के साथ कॉपी बुक स्टाइल के अंदाज में बल्ले को सामने ले आए। दोनों पैरों को कतार में ले आकर गेंद को कोहनी को आगे करते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया। वो विकेट, एक और गेंद, अच्छी गेंद, और बल्ले को चूमकर विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। एक और विकेट का पतन। डीजे गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ काजळ लावून आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातलाय असाच, दिसते मी भारी जाऊ अप्सरा मी खास, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि डीजे ने देश भर के अच्छे अच्छे धुनों को चुनकर रखा हुआ है आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। क्या बात है। एक और शानदार डीजे हमारे पीछे मौजूद हैं, वो अपने म्यूजिक सेट को लगाने ही वाले हैं। इस बीच रंजीत आक्रमण पर तैयार, इस ओवर में 2 विकेट वो अर्जित कर चुके हैं। उनकी गेंद, विकेट कीपर ने दोहरे प्रयास में गेंद को दोबारा कैच करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी थी। अंपायर ने कहा कि वाइड है, लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंद थी। इस गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास किया था स्ट्राइक एंड पर खड़े बैट्समैन ने, बोपन्ना ने, लेकिन मिस कर गया। अंपायर ने कहा कि पुरस्कार के रूप में ही सही आपको ये रन दिया जाता है वाइड के रूप में, तो एक अतिरिक्त रन। रंजीत आक्रमण दोबारा तैयार हो रहे हैं। वो विकेट, उनकी एक और गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी और गेंद के लाइन को देखा, लेंथ को जो टप्पा खाकर उठकर आ रही थी उसको कवर करते हुए पूरी तरह से थ्रू द लाइन उन्होंने गेंद को डिफेंस किया और बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को पुश भर कर दिया। इसके साथ दोनों बल्लेबाज आपस में इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। रंजीत ने 2 शानदार विकेट अर्जित कर लिए हैं और हरिप्रसाद आउट जब हो गए तो थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि उनका स्टांस, उनकी बल्लेबाजी लग रही थी स्ट्रॉन्ग टेक्निक के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो आउट होकर लौट गए। इस बीच गेंद तिरछा खेल दिया, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को बल्ले का सिरा देकर खेल दिया था। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 13, 2 विकेटों के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है और टीचर्स, नॉन टीचर्स जितने सारे हैं वो सभी इस क्रिकेट श्रृंखला में सहभागी हुए हैं। और दर्शकों की तादाद, जैसा मैंने आपको कहा कि रात में बहुत ज्यादा संख्या में दर्शक यहाँ पर उपस्थित होंगे इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठाने के लिए। और एक बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया हमारे सामने, यानी कि बाईं ओर, जहां पर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, हालांकि जिसमें लाइव स्कोरिंग भी अपडेट किया जा रहा है। और ऐसे में विकेट को दुरुस्त करने के पश्चात अंपायर तैयार हो रहे हैं। आज हुसैन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर वो न होते
होते तो आज मैच बहुत फीका पड़ सकता था, खास तौर पर फोर्स फॉरेंसिक के लिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को सम्मानजनक लक्ष्य देने का एक बहुत भरपूर प्रयास किया और वो सफल हो गए। आखिरी ओवर में अगर उनको स्ट्राइक मिलता तो निश्चित तौर पर कुछ और सब बड़ा लक्ष्य बनाया जा सकता था। इस वक्त लक्ष्य है कुल मिलाकर 42 रनों का, 13 रन मात्र बने हैं और आक्रमण पर इस छोर से गेंदबाज आ रहे हैं। उनकी गेंद, और इस गेंद को देखते हुए हल्के हाथ से थोड़ा सा पहले फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे। गेंद की गति को, उसके लाइन को, उसके लेंथ को देखते हुए थोड़ा सा पीछे हटे, गेंद को पुश बार कर दिया। हुसैन आक्रमण पर, क्या बल्लेबाजी में जो जादू उन्होंने दिखाया गेंदबाजी में कर पाएंगे? इस बार हवा में उछाल दिया है, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर गई, दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए जबरदस्त सिक्सर। किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप स्ट्राइक एंड पर रहे और बहुत शानदार धुन बजाई कि फिर किसी के चेहरे का मुझे लगता है कि रंग उड़ गया, क्योंकि जबरदस्त छक्का लग गया। और विकेट इस छोर से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गए बैट्समैन को और इस बार डिक्लेयर एरिया में गई है, जहां पर अंपायर ने 2 रनों का संकेत किया घोषित एरिया में। इन 2 रनों के साथ रन अब बढ़कर 21 पर पहुंच चुका है। 21 रनों की जरूरत है, 21 मोर रन्स टू गेट, 21 और रनों की जरूरत है। अभी ओवर्स बचे हुए हैं, ये तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। हुसैन की जैसे ही मैंने तारीफ की, बॉल टू बॉल, जी हाँ, हर एक गेंद पर रनों की दरकार है, हर एक रन की दरकार है। और हुसैन की जैसे ही मैंने तारीफ की, दिलीप ने अपने बल्ले को चलाकर एक बहुत जबरदस्त छक्का जड़कर अपने बल्लेबाजी का हुनर दिखा दिया। दिलीप स्ट्राइक एंड पर फिर से उन्होंने गेंद को आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास किया, थोड़ा सा घूम गए, एक चक्कर उन्होंने लगा लिया, लेकिन संपर्क बल्ले और गेंद के बीच में नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वो पूरी तरह से जोर लगाकर अपनी पूरी ताकत के साथ गेंद को उछालना चाहते थे, लेकिन गेंद से संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच में। हुसैन की गेंद इस बार थोड़ा सा रुक गए, पहले आक्रामक तरीके से उछालना चाहते थे, फिर गेंद को देखा कि थोड़ा सा रुक कर आ रही है, अपने बल्ले के बैकलिफ्ट को भी रोक लिया, धीरे से टैप किया, 1 रन चुराया, जोखिम भरा, और रन्स अभी 6 से 1 के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 22 पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हुसैन आक्रमण पर, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। लगभग मिड विकेट कहा जा सकता है या फिर मिड ऑन शॉट में खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को उठा लिया, प्लेस नहीं कर पाए। ओवर समाप्त हुआ 3 ओवर के समाप्ति पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। शुरुआत में जब ब्लैक मांबा और फोर्स फॉरेंसिक की बात की गई, टॉस जीता गया, तब फॉरेंसिक ने बल्लेबाजी जब शुरुआत की और विकेट्स गिर रहे थे, अच्छे बैट्समैन चलते हो गए, खासतौर पर देव का विकेट जो बहुत महत्वपूर्ण था, 2 बैट्समैन जो बाएं हाथ के आउट होकर लौट गए, तब ऐसा लगा कि बहुत जहरीले गेंदबाज हैं मांबा की और नाम के अनुसार। लेकिन फिर कुछ बीच में रन्स बने और आखिर में बहुत शानदार गेंदबाजी के साथ अच्छा कमबैक किया गया। डॉक्टर गांडीव इस वक्त, और गांडीव की गेंद को हवा के रास्ते खेलने के प्रयास में कैच कर लिया गया है, लॉन्ग ऑफ में कैच हुआ, एक और झटका लगा है। थैंक यू डीजे, थैंक यू। मैं अनुरोध करता हूं, इस वक्त ब्लैक मांबा के जितने सारे खिलाड़ी बैठे हैं उनसे अनुरोध है, कृपया एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में है, प्लीज। बार बार बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा आप समझे, ये स्कोरर को बहुत जरूरी है इस वक्त, थोड़ा सा ये कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरर बैठे हैं, उनको बहुत जरूरी है। तो इस वक्त इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद,
इस गेंद को पलटकर खेलने का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, समेट लिया, रन अभी भी वहीं पर स्थिर है और रनों और गेंदों के बीच में इस वक्त बहुत शानदार आंख मिचौली का खेल चलता हुआ। गांडीव गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। गांडीव किसको कहा जाता है आप जानते हैं? अर्जुन धनुर्धर, अर्जुन में अर्जुन के साथ गांडीव का नाम जुड़ा हुआ है। इस छोर से गेंद इस बार पलटकर जी रहे, घूमकर गेंद को खूबसूरती के साथ उछाल लिया। इतना अच्छा स्ट्रोक, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 2 रन। जबरदस्त स्ट्रोक था। इन 2 रनों के साथ कुल रन संख्या बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, जबकि ये चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। गांडीव आक्रमण पर हैं, 1 विकेट उनके ओवर में प्राप्त हुआ, लेकिन फिर ये शॉट ऑफ लेन जिस गेंद को उन्होंने पनिश किया बल्लेबाज ने, इस गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। रॉकी इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। बहुत नाम में ही दम रखा है, क्या जबरदस्त नाम है। रॉकी स्ट्राइक एंड पर है, क्या अपने नाम के अनुसार वो बल्लेबाजी करेंगे। वो विकेट इस छोर से गेंद रॉकी के लिए, हवा में गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया, अपर कट के अंदाज में खूबसूरत स्ट्रोक है। 2 रन रॉकी के खाते में जोड़ लिए जाएंगे। बहुत योजना के साथ गेंद के लेंथ को, उस ऊंचाई को, उछाल को, बाउंस को भापते हुए खूबसूरती के साथ बैकफुट पर जाकर बल्ले का सिरा देकर गेंद को हवा में उछाल दिया उन्होंने और कट भर कर दिया। 2 रन खाते में और रन्स बढ़कर 26 पर पहुंच चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रॉकी और गांडीव के बीच में एक बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। ऐसे में क्या होगा? गांडीव इमारत छोर से, मेडिकल के इस इमारत छोर से तैयार हुए, शॉट ऑफ लेंथ थी और इस गेंद पर मौका था, दस्तूर था, लेकिन क्या करें, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच थी, इसको खेलने के प्रयास में मिस कर गए, बाउंस को कवर नहीं कर पाए, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो ओवर बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर, ओवर की संख्या 4 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 26, 3 विकेटों के नुकसान पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आई रिपीट 26 फॉर 3। और बचे हुए 2 ओवर्स में 12 गेंदों में 16 रनों की दरकार है। 12 गेंदों में 16 रनों की दरकार, तो क्या होगा? प्रति ओवर 8 का औसत इस वक्त चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 8 का चाहिए। ऐसे में दोनों बल्लेबाज क्या इस 8 के प्रति ओवर औसत को बना पाएंगे? बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। पहले शुरुआत में ब्लैक माम्बा बहुत खतरनाक नाम के अनुसार लग रहा था, लेकिन फोर्स फॉरेंसिक ने दिखा दिया कि वो अच्छा कर सकते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने अंत में की और फिर गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट्स उन्होंने अर्जित कर लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भी ब्लैक माम्बा के पकड़ ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनके हाथ में अभी 7 विकेट शेष बचे हुए। लेकिन कहना यह है कि 2 बल्लेबाज इस वक्त जो क्रीज पर मौजूद हैं, क्या वो इन रनों को बनाने के लिए अपनी तरफ से आक्रामक स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। 12 गेंदों में 16 रनों की दरकार। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त रॉकी तैयार हो रहे हैं, बोपन्ना तैयार है, माफ कीजिएगा, रॉकी नॉन स्ट्राइक एंड पर है, बोपन्ना स्ट्राइक एंड पर है। प्रीतम की गेंद और बोपन्ना को ड्राइव किया उन्होंने, गेंद को अच्छा स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। 15 रनों की जरूरत है, 15 रनों की दरकार। हवा तेज चल रही है, ऐसे में गेंदबाज को सहायता होगी, क्योंकि जिस ओर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद जिस तरफ डाल रहे हैं उसी तरफ की हवा भी चल रही है। तो ऐसे में रॉकी क्या कुछ कर पाते हैं और उनको सोचना होगा कि स्ट्रोक किस दिशा में वो खेल रहे हैं। वो तो विकेट छोर से गेंद इस बार हवा में गेंद को उछाल दिया, मिड विकेट के ऊपर से बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद गई 6 रनों के लिए, जबरदस्त सिक्सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 9 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, जबकि अभी और लगभग 10 गेंदें शेष बची हैं। 10 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है, तो मुकाबला कांटे का लग रहा है। रॉकी स्ट्राइक एंड पर है, रॉकी के लिए गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक किया इस वक्त गेंदबाज ने, बहुत कमाल की गेंदबाजी है।
प्रीतम ने इस बार गेंद के लेंथ को ज्यादा बढ़ाया और ऑफ स्टंप के आसपास की इस ये गेंद को खेलने के प्रयास में बल्लेबाज बीट हो गए। 9 गेंदों में 9 रनों की दरकार। प्रीतम की गेंद इस बार फिर से गेंद को बहुत ताकत के साथ पुरजोर कोशिश के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद हवा में पंछी की तरह लहराती हुई निकल गई 6 रनों के लिए। Thank you, DJ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. इस वक्त इस छोर से ये गेंद थोड़ा सा और हवा में खेलने के प्रयास में कैच कर लिया गया। रॉकी सीधे गली क्षेत्र में गेंद को धीरे से कट भर करना चाहते थे, कैच कर लिए गए। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे खेमा प्रीमियर लीग 2025। एल्विस इस वक्त स्ट्राइक पर आ रहे हैं और आखिरी 7 गेंदें शेष बची हैं और मुझे लगता है कि 3 रनों की दरकार है। एल्विस स्ट्राइक एंड की दिशा में बढ़ते हुए और गेंद को लेकर दोबारा प्रीतम तैयार हो रहे हैं। प्रीतम ने पिछली गेंद को जो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, पीछे हटते हुए बल्लेबाज ने इस गेंद को कट भर करने के प्रयास में हालांकि पहले फील्डर को नहीं देख पाए और गली क्षेत्र में जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई संख्या बढ़ रही है और हम यही चाहते हैं कि क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 में हेलो चेक हेलो क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 में दर्शकों की तादाद काफी संख्या में रहे। ऐसे में इस छोर पर बल्लेबाज तैयार वो तो विकेट इस छोर से गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, क्या बात है, बहुत रफ्तार के साथ 85 की रफ्तार की ये गेंद जिसको खेलने का प्रयास लेकिन आधा अधूरा मन था, डिफेंस पूरी तरह से नहीं कर पाए और इस प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। ओवर समाप्त हो चुका है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 5 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 39 रन बन चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, यानी कि आखिरी 6 गेंदें शेष बची हैं और रनों की दरकार है कुल मिलाकर 3 और रनों की दरकार। 3 मोर रन्स टू गेट इन 6 बॉल्स। बोपन्ना स्ट्राइक पर है। आक्रमण पर इस छोर पर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। देव आक्रमण पर और देव अपने कोटे का दूसरा पारी का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। देव की गेंद ऑन विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी। स्टेप आउट करते हुए बोपन्ना गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। देव फिर से अपने बॉलिंग बाग की ओर बढ़ रहे हैं। रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ। 5 गेंदें शेष बची हैं, 3 रनों की दरकार है। बड़ी योजना के साथ गेंदबाजी करते हुए देव की एक और गेंद, इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, गेंद को पुल कर दिया। गेंद गई डिक्लेयर एरिया में, 2 रन मिलेंगे। कभी किसी से न प्यार करना। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी 1 रन की जरूरत है और गेंदें बची हुई हैं 4। बोपन्ना स्ट्राइक पर हैं। अब साथीदार ने आकर उनके कान में कुछ कानाफूसी की है। मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसी कुछ दरकार नहीं है क्योंकि सिर्फ 1 रन बनाना है। मुझे लगता है कि एक और बात हो सकती है कि दोनों शायद सिंगल को चुराना चाहें। 4 more balls to go। एक और गेंद की मांग कर रहे हैं अंपायर। अंपायर खुश नहीं है एक गेंद से, तो एक और गेंद की मांग कर रहे हैं और शायद गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ जो उछाला गया वो अभी नहीं मिला है, तो अंपायर दूसरे गेंद की मांग कर रहे हैं, तो एक और गेंद लिया जाएगा। बोपन्ना इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं, वो अपने टीम को जीत दिलाने की ओर बढ़ रहे हैं। 1 रन की दरकार है, गेंदें बची हुई हैं 4। दिलचस्प मुकाबला, रोमांच बढ़ता हुआ।
क्योंकि ये क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 है, ऐसा होगा ही। इस छोर से इस ओवर की ये गेंद ऑन द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर साएं साएं करती हुई तेजी के साथ 75-80 के रफ्तार की यह गेंद को थोड़ा सा छेड़खानी करने के प्रयास में बल्लेबाज चूक गए। बल्ले को हवा डालकर ये गेंद निकल गई, विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। 3 गेंदें बची हुई हैं। देव की एक और गेंद और पीछे हटे गेंद को कट कर दिया। 1 रन तो निश्चित तौर पर 2 रन का संकेत किया अंपायर ने। इसी के साथ ब्लैक माम्बा ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मेनी कांग्रेचुलेशंस। What's up, my gang? Welcome to Hood. मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कृपया हरिप्रसाद जी से अनुरोध करेंगे कि वो
आयोजनकर्ताओं के पास जाएं और इस प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को वो स्वीकार करें। और इस वक्त नया ताज़ा मैच शुरू होने वाला है और क्रम के अनुसार विवरण में बदलाव है। और दूसरी पारी में जब स्वरूप ने पूछा था कि समय जैसे जैसे बदल गया तो क्या पिच का मिजाज बदलेगा, असर पड़ सकता है खेल में, मैं कहूंगा हाँ, लेकिन नियंत्रण गेंदबाजों पे होना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या होगा इस मैच में सुनाने के लिए आगे स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay Bhai. As the sun has faded into the horizon and the floodlights are flickering on, they look like stars that have been summoned to earth to witness this glorious game of cricket. I request the 12th man of both the competing teams to report to the com box. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ ಹಿಯರ್, ವಿಕ್ಕಿ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್, known for their ruthless aggression, the Vikings, will be interesting to see if they have that killer instincts within them. Have not started the tournament on a high. Shot and wide, goes for that expansive cut shot. The shot was on, the length perfect to free his arms, but doesn't get any bat on that. Had he got that away, was a definite boundary for the taking. Missed out, does the batsman. Santosh, couple off the first ball. Lets that one go down the leg side. Just drifting on the pads a little there. You can see what the bowler is trying to do. Asking the batsman to fetch it from the stumps and hit it over the onside where there is protection. Man at deep mid wicket, man at long on, the two men patrolling the onside fence. Again, short and wide, goes for that cut shot, ball not there. Wanted to pierce the gap on the offside there. He's going for that shot one too many times. We'll have to wait and see if that shot does fetch him some runs in this contest. But so far, the bowler has figured out it's better to push the batsman back on this track. Aditya. Down the ground, he smashes! What a glorious cover drive that is! Shot of class there by Santosh. On the up, gets his foot to the pitch of the ball and bang! It went through the covers. Beautiful shot. One of the most breathtaking views is to see a cover drive in this game of cricket, and a fantastic textbook example of how that shot is played on the up, high elbow, and he held the pose for the photographers. Didn't he? Shot and wide again. This time pulls his length back. That's what he needs to do. Push the batsman back. Ask him to open the face of the blade. Ask him to play that horizontal bat strokes, because he seems to be very, very happy driving down the ground is Santosh. Anything full, he's gone for runs, has the bowler. Aditya, the sun has faded, but he's shining brightly with the new ball here. Coming from over the wicket to the right-hander. No protection on the offside. And this time doesn't miss out. One bounce into the fence. Aditya, he was flirting with the fire there. He was bowling short, he was bowling wide. And finally the batsman had to get some sort of wood on that, and finally he did. At the end of the first, the score is on 11 for the loss of no wickets. Good end to the first over for Bypass.
The Vikings yet to hit their strap in this tournament. They've been good, but they have the potential to be great. They've got a good outfit, nice balanced team on paper, but they have to put that into performance as well. Plenty of potential as well. Young players in this team. Through the offside, beats the infield. Man at deep point is 10 yards inside the ropes, just to prevent those doubles. But gets the single over, and it's Santosh back on strike now. Abhilash doing the right thing, getting the more aggressive right-hander back on strike, goes for the late cut. He's been caught napping there. The fielding team quick to understand that the back foot game of Santosh has left something to be desired. Indians, history has told us that not the best players, but this is high. In the slot, it's got more height than distance. Two fielders converging. Put your fucking hands up! Takes a good catch there. Miscommunication between the two fielders, but in the end managed to pouch that one. First wicket goes down. Santosh, the aggressor, has been sent packing into the pavilion. Dhruva, classical batsman. He's got the right technique. Doesn't play across the line. Beautiful defense. Wonderful to see a test match defense. Resolute in his approach. Wanting to understand the bounce of this track. Remember, cricket is a beautiful game that where the pitch behaves differently under different conditions. This has to be taken. He's gone, Dhruva. Just as we were praising his impeccable, immaculate technique, Dhruva swipes across the line only to get a leading edge, and the simplest of catches is completed in the end. They lose one and they lose another in quick succession here. Dhruva, number 3, the stalwart of their batting, is sent packing into the pavilion. They've lost 2 in the over now. What an over this from Vaibhav. Shivu, the man who bowls the 2 overs for his side, has been sent to bat in the middle order. Very important that he stays as long as he can. This time beaten in flight. Beaten in flight, bamboozled by the trajectory there. End of the second. The score will remain on 12. What an over. Just a single and a couple of wickets. They've come roaring back into the contest. Have the fielding side here. And the score is still at just 12 after the completion of 2. Under lights, the bowlers will bloom, the ball will talk. Full delivery, driven down the ground with some power. What's a good score under lights? Remember, between 4 to 6 p.m. we saw the ball just flying. It was almost as if the pitch was a runway and the balls were just taking off. Another slower delivery, but this time radar just a little bit wide there, wee bit wide. But he'll be encouraged by what's happening on the pace. The ball is starting to grip now on the surface because of the wear and tear right throughout the day. This is a full toss. A rank full toss. Doesn't put that away. They're thinking of a second chance of a run out of the non-strikers and a waiver throw. Everybody going up here. I think this is going to be touch and go. He looks in trouble. It's been referred to the third umpire. It's very, very close. It was a terrible throw from the deep, but the batsmen were found wanting. The batsmen were found ball watching. And this could spell disaster here. We'll wait for the third umpire to make the call, but on field it looked very close. The umpire took his time and then went to the TV umpire.
The fielding team would be hoping that they're able to capitalize on this half chance. Some hesitancy between the batters there. Didn't get that early call, didn't give that early signal for two. It was a late decision, and that could have costed them the wicket here. They've gotten off to a flyer, but after that, it's been humps and obstacles on the way. Vaibhav balled a miserly second over, conceding just 1 run. And the third over has been quite brilliant as well. Bowling effort has been good after that early onslaught by Santosh. Santosh was looking good, but that pressure of dot balls, so important that you consistently apply that on the batters, not giving away freebies, and you will draw out those false shots. And that is what has happened. The longer the TV umpire takes, the more it benefits the batter, because there is an element of doubt in the decision, and benefit of doubt more often than not goes to the batting side. And just as we were discussing that, and the decision from the TV umpire is that it's gonna be not out. The ball was not in the hands of Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. the ball was not in the hands of the bowler when the wickets were dislodged. It will be a not out. 2 balls up in the over, 4 remaining. Expansive, goes for that expansive drive across the line. No contact whatsoever from the batsman there. Some advice given by the non-striker. Easy to bat at the non-striker's end though. Batting at the striker's end, you'll have to deal with pressure. And right now it's the pressure of the dot balls. Right arm over to the right hander. There's a shot, and it's been beaten here, but it's gotten in the gap. Has it gone for the fence here? No, it hasn't. Thinking of a second. Definite 2 there. What was the batsman doing? Will be disappointed with that running between the wickets, particularly in a low-scoring contest such as this. Every run so crucial. Every single stop so vital there. Lucky that the ball fell in no man's land in the end. Right arm over to the right-hander. Lets it go. Was a close call, but umpire says drifting a little too much. Navneet will be happy if we can close out this over without conceding a boundary here. Oh, magnificent shot down the ground. Finds the fielder. There are certain shots that look very good on camera, but don't give you the necessary runs. A lot of bottom hand in that shot. Beats the man at mid-on, but not the man at long on. Oh, this is off the outside edge. Will he go for the catch? No, he won't. Won't risk a catch, and he's gone. He's gone. Yet another miscommunication. Shivu, it almost seemed as if he was trying his best to get out. Tried to give a catch. The fielders did not oblige and did not return to the crease, giving another chance. 2 chances of a delivery. The fielding team is a professional unit. They will pounce on those chances. And number 19 goes. And guess who walks in? It's number 18. We've all had fond memories of jersey number 18 in blue color. That is Virat Kohli's number, who's batting in the middle order. Is that number... Is at number 5, and it will be the power play. Gaurav. Gaurav at the non-striker's end. Like I said, jersey number 18, Virat Kohli's number. Can he play that sort of an innings here at K.S. Hegde Cricket Stadium? It will be the batting power play. 2 men allowed outside the inner circle. Both men on the onside.
A cleaned him up, knocks him over with an absolute peach. The stumps rattled at the strikers, and what a disastrous start here for the batting side. They took the power play. Two iconic jersey numbers now, number 18 and number 10. Tendulkar and Kohli's jersey numbers right there. They'd be hoping they can replicate their heroics. He can! He absolutely can! This is slapped over mid-wicket, but taken on the first ball. थाली में कटोरा लेकर आलू भात पूरी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का Aditya, he's breathing fire at the moment. It's not just balls, it's cannonballs. He's picked 2 in the over already. Akshat is the new man in against Aditya. He's on a hat-trick. Short and wide, he plays it on the offside, gets the edge, flies to the vacant deep third man region, gets that couple of runs. Finally, that shackles is broken with some runs. They would want more boundaries here. You can see with the floodlights coming on, bowlers are really getting into rhythm. They're getting that moment in the air and also off the track. Crisp shot through the offside, puts his body behind, stops the single. That went quickly to the man at mid-off, and he stops the single. Good effort that, good effort. Hands on hips by the batsman. He's thinking how to get some runs because it seems like a fortress on the offside. This is a batting power play where the fielders are under pressure most of the time, but not in this game. It is the batters. You see the lightning flashing. Photography in the sky as another wicket goes down. This time for Africa, you're a soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. It's number 3. Third one in the over for Aditya. It doesn't look like a pitch at KS Hegde. It looks like a pitch from the Optus Stadium in Perth. The ball is just singing off the pitch. It's bouncing on the batsman. It's catching them off guard. He's bowling those perfume balls, and the batsman is sniffing at them as the ball passes his nose. Every other delivery. This is fast bowling at its best. It's getting everybody at the edge of their seats. Another express delivery. By the time that the batsman realized what was going on, the ball was safely in the hands of the wicket-keeper. This is terrific bowling. He's bowling like the wind has Aditya as he completes an economical and effective and amazing bowling spell. He's bowled out with his 2 overs, getting those 3 important wickets. He's been a real talisman with the ball. He's the leader of this bowling attack. And Vicky Vikings are looking good to restrict bypass Brigade to an under par total. The score is on 21 after the completion of 4. 2 to go. How much more can they get? Good ball in front of square. There is protection on the onside. Thinking about a second, will not get it. Good start this. Very good start. Vijay. He's learning his lessons from Aditya. Nothing in the slot, nothing in the full area. Everything is hard length at the moment. Shashank will be striking. Let's it go. Let's it go is a wide.
drifting down the leg side there. Won't be happy the captain with that line because there is no deep square leg. There is only protection at deep mid wicket. There is no backward deep square. I beg your pardon. Oh, Yorker on the leg stump. Can do nothing more than clip it on the onside. Gets that single under floodlights. You can already see that the batsmen are not as sure-footed as they were earlier in the day. You can see that they're double guessing themselves at the moment, second guessing their shot selection. So very important that you show that belief that you can go after the bowling. White says the umpire. Just losing the plot here a little bit. Vicky Vikings, after winning the toss, have done very well to restrict the opposition so far, but they shouldn't lose the plot by conceding the simple extras. Tries to go for the slog sweep, doesn't get down in time to use the pace of the bowler. Remember, there is no boundaries or sixers behind the square of the wicket, so you can't really use the pace of the bowler against him with these dimensions. Short and wide, tries to go for the hook, gets the shoulder, sent back by the non-striker. Gaurav needs to get his team to a respectable total. Not with shot like that, you won't. He's batting very deep in the crease there, but not able to get it away. Chance of a run out at the non-strikers, and it was always going to be suicidal. Shashank not happy. He's dismissed on the non-strikers end. Oh, that's big. That is massive. That is huge. That is out of here. Cause this is Africa. The score is on 32. What a way to close out the fifth. Desperately needing a boundary. It with disdain over mid-wicket. A terrific way to end the last over with the score now on 32 after 5. Will this give some momentum back into the innings that's been languishing? Oh, it can! It can! This is straight! This is in the air! The fielder fumbles! They're looking for a second here! Second guessing again! Chance of a run out! Everything happened on that delivery! अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावां मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी. Everything happening on that previous ball. It was in the air. The fielder dives. Miscommunication again. Hesitation in running. There's actually a report from the government that more accidents happen not because of aggression. It happens because of hesitation on the road and also on the pitch as well. Most accidents in the form of runouts happen because of hesitation between the wickets. Yet another wicket falls. 5 balls remaining in the innings. Chandu hits it to deep mid wicket, gets that single. Now it's to the tail enders. It's the tail enders. They need to do some magic. But remember, the tail can wag. You asked Jasprit Bumrah that because he's got the highest score in an over in Test cricket against Stewart Broad. It is the tail that wagged on that fateful day
in England. This is smashed. It's in the air. It's put down. It's going towards the fence, but not to be. Not to be, but the batsmen were ball watching. Definite two there. There was a brace on that occasion, but I thought for a moment he thought it had gone straight to the fielder, but then ricochets off his hands for just a single. This in the air. Oh, how long? How long? Not long enough. तांबडी चांबडी चमकते उन्हात लका 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 लका. Two balls remaining. Two deliveries remaining. Number 11 walks into the 22 yards. Can he hit a big one here? Not a lot of hopes. But the bowler gives him a run. Will that come back and bite them in the unmentionables? Because every run so very important, especially in a low scoring contest. You'll see that the run rate has dropped with the temperature. Oh, that's a good delivery. Good delivery. Too good for a number 11. He was through with the shot way too early. The ball just sneaking under the bat. Some advice there from number 10 to number 11. I don't know what the discussion could have been. Right arm over. Last ball in the innings. Tries to smash this, and there could have been a wicket there. Went straight to the man at short mid-wicket. They could have had an all-out, but not to be. But they'll be very, very happy with the bowling performance that they've put together. Vicky Vikings. They've restricted the opposition to 37 after asking the bypass brigade to bat first on what is seeming like a bowler-friendly track under the lights here. They'll be very happy. They'll be ecstatic, Vicky Vikings, with the effort that they've put in, almost getting the opposition bowled out in a 6-over fixture. The coach will be kahoot at the moment. With 38 to get in the 6 overs, it is the Vicky Vikings, the happier side at the halfway mark. We were discussing 12 runs per over in the last couple of hours, but now it's right back to under 7. It's going to be a difficult total to defend on this ground, even though conditions favor the bowlers. Red Bull naal galaxy khamba lage mere thoughts nu 10 saal ho gaya aj vi ona de zain chu mere entry old and soch mein karaunda below ungla de off nu o chonde ne palai munda dinda nahi shit koi mere na muqabale ch hunda nahi fit koi o aj vi ne labelan di rende jhoot chat de tami mere zikr bina na geet hit koi ha fan base mera jive cult koi kodiya banaunde bole galt koi It's the one and only D.R.E. Dr. Brain Love Buff. You know I'm mobbing with the D.O.double-G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Look, whoop the bill rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting corners in the lag. With Doc in the back sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. Hold up. Life sadi rich, don't have the racks, man. Okay, the money evil. Check your facts, man. Omar dene rende chana jede net worth. Ona annually me to like jande tax, man. Alpha the sigma, the munda below mainly. On a new level, like comment the divi failing. I don't know where, Jeko geet koi settle da. Me bade adi hype. 38 to defend. It's going to be a tall task here. Power play could decide the game so often than not in limited over fixtures, especially in a check. Especially in a low scoring thriller such as this, it's make or break here in the power play. If the batting team gets off to a fast start,
it's going to be game over for the fielding side, Ajay bhai. हेलो चेक, हेलो, थैंक यू स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केपीएल 2025 में क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 में स्वागत है तमाम दर्शकों का। अजय राज का परिणाम स्वीकार करें। इस पिच ये दूसरी पारी की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ कट कर दिया। डिक्लेयर एरिया में गेंद गई, अंपायर ने कहा कि 2 रन। 2 रनों के साथ ही रनों का बनना शुरू हो चुका है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला विकी वाइकिंग्स का। और कहा जाना चाहिए कि अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की और निर्धारित 6 ओवर्स में रनों पर अच्छा खासा अंकुश लगाने का उनका प्रयास था। हेलो चेक, तो बाईपास टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी की टॉस हारने के पश्चात और 37 रन उन्होंने बनाए, जिसके जवाब में इस वक्त दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। मुरली शंकर भट्ट इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है, नवनीत नॉन स्ट्राइक एंड पर है और गेंद को लेकर शिवू आक्रमण पर तैयार हो रहा है। मुरली शंकर भट्ट आप जानते हैं उनके बल्लेबाजी का दमखम है और बहुत शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं। पिछले मैच में बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। इस मैच में 38 रनों का पीछा करने के लिए वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, वो तैयार हो रहे हैं। पैरों को फैलाकर खड़े रहते हैं। उनकी गेंद फुल टॉस से ऑन साइड पर घुमाकर लपेटकर गेंद को उन्होंने खेल दिया। बहुत सुंदर स्ट्रोक है। गेंद डिक्लेयर एरिया के बाहर जा रही है, नहीं, अंपायर ने कोई संकेत तो नहीं किया। जी उन्होंने संकेत किया। 2 रन और खाते में जोड़ लिया जाएंगे। इन दोनों के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर। 8 रन्स बन चुके हैं। 38 रनों में अगर 8 रन की कटौती की गई तो मुझे लगता है कि अभी और 30 रनों की जरूरत है। आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है। सूरज शाम को हमसे अलविदा कहकर निकल चुका है और कल सवेरे वो मिलेगा, लेकिन इस वक्त आकाश के अंधेरों की उस गहराइयों में मैं समझता हूं कि ये वातावरण बिल्कुल इस झिलमिलाती हुई रोशनी में चकाचौंध हो रहा है। फ्लडलाइट की रोशनी है, बिल्कुल रोशनी बहुत झिलमिला रही है। शानदार दृश्य दिखाई पड़ रहा है। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद और पलटकर गेंद को खूबसूरती के साथ फिर डिक्लेयर एरिया के दिशा में गेंद को खेल दिया। क्या बात है, मुरली शंकर भट्ट ने कहा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला। अंपायर कह रहे हैं कि नो बॉल है, नो बॉल का संकेत उन्होंने किया। तो 2+1 यानी कि 3 रन खाते में और जोड़ लिए जाएंगे। इन 3 रनों के साथ रन बढ़कर 11 पर पहुंच चुका है, 11 विदाउट लूजिंग एनी विकेट, जबकि लक्ष्य है 38 रनों का। आधुनिक नियम के अनुसार इस वक्त फ्री हिट का अवसर बल्लेबाज को दिया जाएगा और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा अवसर मुरली शंकर भट्ट जैसे बल्लेबाज को होगा। शिव आक्रमण पर तैयार, न मालूम क्यों अपने लाइन को तलाश अभी तक कर रहे हैं, पा नहीं रहे हैं। ये गेंद फिर से उल्टे हाथ से गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन इस वक्त फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। रन चुराने का अवसर शायद था नहीं, पहले हां ना करते हुए फिर अपने आप को रोककर क्रीज की दिशा में अपने आप को सुरक्षित कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और फिर से इस छोर पर शिव आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड पर नजदीकी खिलाड़ियों में 3-4 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, अंपायर को मजबूरन हाथों को फैलाकर संकेत करना पड़ा कि ये वाइड है। एक अतिरिक्त रन और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 12 पर, 12 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 12 रन बगैर किसी नुकसान के। फुल टॉस से फिर से गेंद को उछाल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद गई डिक्लेयर एरिया में। अंपायर ने फिर से हाथ को बाहर निकालकर संकेत किया कि नो बॉल है। 3 रन खाते में और जोड़ लिए जाएंगे। इन 3 रनों के साथ रन संख्या बढ़कर 15 पर पहुंच चुका है और बल्लेबाजों को फिर से एक अवसर मिलेगा। खासतौर पर कहा जाए मुरली शंकर भट्ट को अवसर मिलेगा कि वो फ्री हिट लगाएं। 2 गेंदें शेष बची हुई हैं और फोर्स फोरेंसिक और राज ब्लास्टर्स दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो टॉस के लिए आए। इस छोर पर शिवू थोड़े से परिश्रम में दिखाई पड़ रहे हैं और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, शानदार कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है, लेकिन उस गेंद को बिल्कुल मुझे लगता है कि लगभग 6-7 इंच अंदर फील्डर ने रोक लिया और जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाते, दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि वो दौड़कर 2 रनों को पूरा कर लें। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर आप पहुंच चुका है
17 रनों पर कुल योग, जी हाँ 17 रन बन चुके हैं। अभी एक गेंद शेष बचा हुआ है। मुरली शंकर भट्ट तैयार हो रहे हैं। इस छोर से शिवू की गेंद, पलटकर खेलने का प्रयास, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, जाकर उस दीवार से टकरा गई, फिर 2 रन मिलेंगे। अब कहना होगा कि मुरली शंकर भट्ट ने इस ओवर में जिस तरह से गेंदबाज की पिटाई की है वो काबिले तारीफ है। 19 रन इस ओवर में अब तक बना लिए गए हैं, 19 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, और बहुत ही महंगा और खर्चीला ओवर साबित हुआ शिवू का। अब कप्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो रन को रोकने के लिए अब किस गेंदबाज को आक्रमण पर लगाएं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला विकी वाइकिंग्स का, जबकि बाईपास की टीम ने कुछ ज्यादा नहीं बनाया, जैसे तैसे उन्होंने 37 रनों को बटोरा, लेकिन उसके जवाब में इस वक्त 19 रन बना लिए गए। और पावर प्ले का संकेत अंपायर ने दोबारा किया। तो बल्लेबाज इस वक्त इस योजना के साथ के दायरे के अंदर ज्यादा खिलाड़ी रहेंगे तो निश्चित तौर पर लॉफ्टेड स्ट्रोक के जरिए आसानी के साथ रन को बनाया जा सकता है। इस योजना के साथ ये पावर प्ले लिया गया है। आक्रमण पर दूर वाले छोर से अनूप आ रहे हैं। अनूप दूर वाले छोर से, डॉक्टर अनूप गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त नवनीत तैयार है। नवनीत के लिए गेंद, और पटकी हुई गेंद थी, बाउंस ज्यादा था, दिशाहीन गेंद। अंपायर को हाथों को फैलाकर संकेत करना पड़ा कि वाइड है। एक और अतिरिक्त रन, इस एक रन के साथ रन बढ़कर 20 पर पहुंच चुका है। 20 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, यानी कि अभी और 18 रनों की जरूरत है। 18 मोर रन्स टू गेट। तो इस वक्त बल्लेबाजों का पलड़ा काफी भारी दिखता हुआ। नवनीत स्ट्राइक एंड पर ओवर द विकेट, ये गेंद फिर से शॉट ऑफ लेंथ थी, हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट गिरा है। क्या बात है, शानदार धुन बजा रहे हैं डीजे। पहला विकेट बहुमूल्य गिर चुका है नवनीत डॉक्टर के रूप में, और उनके आउट होने के पश्चात तो नवनीत आउट होकर पवेलियन लौट गए। नए बल्लेबाज का आगमन, शानदार मौसम है और दर्शक धीरे धीरे संख्या में बढ़ते हुए। हवा जो आज दोपहर को थोड़ा सा हमसे नाराज थी, अब थोड़ा कहना होगा कि बह रही है और वातावरण को शांत और बहुत खूबसूरत बना रही है। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंदबाज तैयार हुआ है। ओवर द विकेट उनकी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ थी, हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, फिर कैच का मौका होगा, फील्डर गेंद के नीचे आकर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। एक और विकेट गिर चुका है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नए बैट्समैन का आगमन, इस वक्त इस छोर से गेंद आउट कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पर फील्डर, एक और कैच, और इसी के साथ एक और विकेट। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार अनूप ने हैट्रिक विकेट जो कि प्राप्त कर लिया, 3 गेंदों में 3 विकेट उन्होंने प्राप्त करते हुए एक नया कीर्तिमान बनाया। क्या बात है, इस वक्त उनकी टीम यही उम्मीद कर रही है, कप्तान भी यही उम्मीद के साथ उन्होंने गेंदबाजी के लिए उतारा था। तो 3 शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए। और दूसरी ओर बल्लेबाजी के पक्ष की बात करें तो मुझे लगता है कि इस वक्त आक्रामक स्ट्रोक्स की दरकार ही नहीं थी, क्योंकि 18 रनों की जरूरत है, सिंगल्स में बात काम चलाया जा सकता है। वो तो विकेट इस छोर से गेंद, इस बार गेंद को, जी हाँ बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, बल्लेबाज को,
जड़ में डाली गई गेंद थी जिसको दबाकर खेलने के प्रयास में बीट हो गए और रन्स अभी भी वहीं पर से रहे। रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास नहीं। बहुत रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ और मुझे लगता है कि 2-3 विकेट्स अगर गिर जाएं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पक्ष में खेल ट्विस्ट हो सकता है। इस छोर से गेंद ओवर द विकेट, इस बार खेलने का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया है। क्या कमाल का कैच है, बाकमाल कैच। Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. Hay music, hay flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. थैंक यू। लतीश इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। विकेट कीपर ने क्या कमाल का कैच लपक लिया है। अगर ग्रेट कैचेस कॉन्टेस्ट होता तो निश्चित तौर पर इसको दिया जा सकता है। डाइव लगाकर अंतिम क्षणों में, इससे पहले कि गेंद जाकर जमीन को चूम लेती, उन्होंने हथेलियों को नीचे की तरफ करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को कैच कर लिया। 4 विकेट इस ओवर में प्राप्त कर लिया गेंदबाज ने। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और एक वाइड जो कि इस ओवर में मिल चुका है। पहली गेंद वाइड थी, उसके पश्चात एक वाइड, यानी कि इस ओवर में कुल मिलाकर 2 वाइड फेंके गए। इस छोर से अनुपाक्रमण पर लतीश स्ट्राइक एंड पर, वो 2 विकेट ये गेंद लतीश के लिए और लोअर फुल टॉस थी। गेंद को धीरे से दबाकर पुश पर करने का प्रयास था। दोनों बैट्समैन पहले हार ना कर रहे थे, फिर देखा कि फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। अपने आप को रोकते हुए अंकुश लगाकर संयम के साथ, धीरज के साथ वहीं पर खड़े रह गए, अपने आप को सुरक्षित कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है। 2 पर 2 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 21, 4 विकेटों के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इक्वेशन आपको बता दे, बचे हुए 4 ओवर्स में, यानी कि 24 गेंदें शेष बची हैं। 24 बॉल्स टू गो एंड 17 रन्स टू गेट। 17 रनों की दरकार है, 24 गेंदें शेष बची हैं। दोनों बल्लेबाज इस वक्त अगर रक्षात्मक तरीके से स्ट्राइक को रोटेट करके हुए खेलते हैं तो निश्चित तौर पर बात बनेगी। क्या विकी वाइकिंग्स इस मैच को जीत पाएगा? 38 रनों का लक्ष्य उनके सामने, इस वक्त मात्र 17 रनों की दरकार। आक्रमण पर इस छोर पर आ रहे, सिराल आक्रमण पर आ रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन मुरली शंकर भट्ट अभी तक एक जुझारू, एक जाबाज बल्लेबाज की तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुरली शंकर भट्ट एक छोर पर विकेट को बचाकर, ये गेंद उनके लिए बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को झुककर, विश्वास कम था स्ट्रोक में, आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए। घुटनों को पिछले झुकाकर जमीन पर रखते हुए गेंद को धीरे से मोड़ने का प्रयास था। सिराल फिर से आक्रमण पर तैयार हो रहा है। योजनाबद्ध तरीके से वो विकेट, उनकी गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में घुमाकर गेंद को खेल दिया। बहुत खूबसूरत शॉट है, फील्डर वहां पर आ चुके हैं। दूसरा रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 रन से दोनों बल्लेबाज खुश हो गए। 1 रन के साथ अब मुझे लगता है कि 16 और रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए वाइकिंग्स को। तो क्या ये बन पाएगा? विराल इस छोर से गेंद को लेकर फिर से तैयार हो रहा है। योजना बहुत अच्छी है, वो जानते हैं कि इस वक्त लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारा जा सकता है। और विकेट ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट कर गए बैट्समैन को। जोरदार अपील, जोरदार नहीं बल्कि हल्की सी अपील हुई जिसमें विश्वास कम था और अंपायर जानते हैं कि उनको प्रेशर में लाने के लिए गेंदबाज विकेट कीपर क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने इस अपील को खारिज कर दिया। फिर से गेंद को लेकर ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गेंद को उठाकर स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो करने का प्रयास किया लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। 1 रन पूरा कर लिया गया है और 1 रन के साथ स्ट्राइक का मौका फिर से मुरली शंकर भट्ट पर आएगा। ज्यादा स्ट्राइक अगर मुरली शंकर भट्ट लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि वो सेट हो चुके हैं और वाइकिंग्स का एक ऐसा बैट्समैन जो अपनी टीम को जीत की ओर ले जा सकता है। क्या इस वक्त इस गेंद पर रन बनेंगे? सवाल है ये है। इस छोर से वो विकेट,
इस बार हवा में गेंद को खेल दिया, कुछ देर हवा में थी, फील्डर थोड़ा सा डीप में पॉइंट में मौजूद थे, वो दौड़ कर गए और जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाए, बल्लेबाजों के पास समय था कि एक रन को वो पूरा कर ले। मुरली शंकर भट्ट इस वक्त बड़ी योजना के साथ खेल रहे हैं, सिंगल को वो बटोर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त विकेट गिरेगा तो निश्चित तौर पर दबाव बढ़ सकता है। ऑन साइड पार घुमाकर खेलने के प्रयास में मिड विकेट में गई, एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ ही ये ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 25 for 4। इक्वेशन आपको बता दें, बचे हुए 3 ओवर्स में 18 गेंदों में 13 रनों की दरकार है। 18 गेंदों में 13 रन। हर रन के पश्चात, हर ओवर के पश्चात अंग्रेजी हिंदी में 2 बार मैं स्कोर बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कहीं से दूर से कोई संकेत करता है कि स्कोर कितना हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। हर एक रन के पश्चात, हर ओवर के पश्चात 2 बार अंग्रेजी और हिंदी में मैं दोहरा कर आपको स्कोर बता रहा हूं। तो 13 रनों की दरकार है, 18 गेंदें शेष बची हुए। दिलचस्प मुकाबला इस वक्त रोमांच की ओर बढ़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं। एक छोर पर मुरली शंकर भट्ट हैं, दूसरी छोर पर स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बल्लेबाज लतीश बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोर्चे पर आक्रमण पर इस वक्त नए गेंदबाज को अनूप को लगाया। अनूप अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, पारी का चौथा ओवर। पहले ओवर में उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, 4 विकेट मुझे लगता है कि उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ओवर विकेट उनकी ये गेंद इस बार लोअर फुल टॉस थी, घुमाकर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने डाइव लगाया, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं गेंद को रोकने के लिए विकेट कीपर। वो जानते हैं कि हर एक रन बहुत कीमती है और इस वजह से हर एक रन को रोकना उनका इस वक्त फर्ज बनता है और इस वजह से उन्होंने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों में आपस में कुछ बातचीत हो चुकी है, मंत्रणा हो चुकी है, तो फिर से लतीश स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं। अनूप का विश्वास का पारा चढ़ चुका है। पिछले ओवर में 4 विकेट प्राप्त करने के पश्चात वो एक और विकेट की तलाश में, अच्छी गेंद थी, बीट कर गए बैट्समैन को। हल्के हाथ से डिफेंसिव अंदाज में गेंद को पुश करना चाहते थे लेकिन बीट हो गए। इसका क्रेडिट जाता है बिल्कुल अनूप पर, क्योंकि वो बड़ी योजना के साथ नपीतुली गेंदबाजी उनकी चल रही है। गेंद को बहुत लेंथ में ज्यादा रख रहे हैं वो और गेंद में स्विंग बहुत अच्छा हो रहा है, बैट्समैन को परेशान करने के लिए काफी है। अब मुरली शंकर भट्ट जी ने आकर अपने साथीदार लतीश का हौसला बढ़ाया, उनके कान में 2 शब्द डाले, उनके पीठ को थपथपाया, उनके हौसलों को बढ़ाकर फिर अपने नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में वो पहुंच गए। योजना बनाकर अनूप ने पिछले ओवर में क्या कमाल के 4 विकेट्स प्राप्त कर लिए। कप्तान ने उन पर जिम्मेदारी रखी है कि वो इस ओवर में कुछ अच्छा कर दिखाएं। इस बार उछालने का प्रयास लेकिन रीच नहीं कर पाए गेंद तक, गेंद बहुत दूर रही और स्टेप आउट करते तो शायद बात बनती और इस गेंद को खेलने के प्रयास में गेंद उनको छकाती हुई निकल गई, विकेट कीपर के हथेलियों में जाकर समा गई। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है, तो रनों पर धीरे धीरे अंकुश लगता हुआ, क्योंकि लतीश और मुरली शंकर भट्ट इस वक्त डिफेंसिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। और विकेट ये गेंद फिर से आगे निकलकर उछालने का प्रयास किया लेकिन मिस कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और अनूप फिर से रनों पर अंकुश लगाते हुए शानदार गेंदबाजी वो कर रहे हैं। तो बल्लेबाजों को दबाव में लाने का उनका प्रयास इस वक्त सफल दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को रास्ता बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो जीत के नजदीक पहुंच रहे हैं, गेंदों के मुकाबले में रन काफी कम है। और विकेट ये गेंद हवा में उछाल दिया, कैच होगा, फील्डर काफी दूर खड़े हैं, 1 रन तो मिल ही जाएगा। 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 26 पर पहुंच चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12 रनों की दरकार है, 13 गेंदें शेष बची हैं। तो धीरे धीरे अनूप ने वो फासला कम करते हुए गेंदों को डॉट में तब्दील करते हुए 13 गेंदों में अब 12 रनों की दरकार है। तो कमाल की गेंदबाजी उनकी चल रही है। मुरली शंकर भट्ट पैरों को फैलाकर तैयार हो रहे हैं, उनके लिए ये गेंद इस बार ड्राइव करने का प्रयास, बहुत अच्छी गेंद थी, एक बहुत बड़ा स्विंग था उनका, उछालने के प्रयास में मिस कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 26, 4 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदें शेष बची हैं, 12 रनों की दरकार है। 12 बॉल्स टू गो एंड 12 रन्स टू गेट। 12 गेंदों में 12 रनों की दरकार। बहुत रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ।
जिस तरह से शुरुआत में 38 रन बने और शुरुआत में दूसरी पारी में जब रन्स बन रहे थे विकी वाइकिंग्स की तरफ से, तो लगा नहीं कि इतना मुश्किल, इतना पेचीदा खेल होगा, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गई। और जैसा आप जानते हैं कि क्रिकेट में अनिश्चितताएं होती ही रहती हैं और अनिश्चितताओं ने अपना रंग दिखाया और परिस्थिति बदलकर इस वक्त बल्ले और गेंद के बीच में ये जो संघर्ष चल रहा है उसमें रोमांच को बढ़ा रहा है। कप्तान पर अब जिम्मेदारी है कि बाईपास के कैप्टन के पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है, किस गेंदबाज को वो इस वक्त आक्रमण पर लगाएंगे, क्योंकि ये ओवर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस ओवर में अगर बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बना लिए तो बात कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है गेंदबाजों के लिए। इस वजह से कप्तान को काफी सोच विचार के पश्चात इस जिम्मेदारी को किसी एक ऐसे गेंदबाज को सौंपना होगा जो रनों पर अंकुश लगा सकता है। तो कप्तान ने क्या बात है, आइए आपको बता दें, अनूप ने पिछले 2 ओवर्स में 4 विकेट्स 3 रनों को खर्च करते हुए 4 शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए। उनका कोटा समाप्त हुआ और आक्रमण पर इस वक्त संतोष आक्रमण पर आ रहे हैं। तो संतोष को जिम्मेदारी सौंपी है बाईपास टीम के कप्तान ने। और पहले ओवर में 19 रन्स बना लिए गए थे। मुरली शंकर भट्ट जी ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 19 रनों को बटोरा था, उसमें अतिरिक्त रन भी थे, लेकिन क्या कहें परिस्थितियां बदल गई। पहली गेंद डॉट में तब्दील होगी। संतोष गेंद को लेकर, लतीश उनके सामने तैयार, उन्होंने गेंद को आड़े बल्ले से गेंद को खेलने का प्रयास में हवा में थी और ये जहाज बहुत ही जबरदस्त कैच टपक लिया गया है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर ए अल्लाह के बंदे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव इस वक्त आ चुके हैं। फील्डरों का उत्साह, उनका जोश बिल्कुल चरम सीमा पर दिखाई पड़ रहा है। क्या शानदार कैच, डाइविंग कैच जिसे कहते हैं, कोने को नीचे रखते हुए कमाल का कैच लपक लिया गया। इस छोर से गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया, खूबसूरत सोक है। जब तक फील्डर आकर गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में जाकर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, छोर बदल लिया। जिम्मेदारी फिर से मुरली शंकर भट्ट पर आ चुकी है। शुरुआत में जब मोमेंटम प्राप्त हुआ था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है कि मुरली शंकर भट्ट को। उसके पश्चात वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए और फिर रनों में और गेंदों में फासला धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे में इस वक्त क्या होगा, इस छोर से इस ओवर की ये गेंद मुरली शंकर भट्ट को फुल टॉस गेंद थी, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने गेंद को उछाल दिया, स्विच हिट किया। 2 रन मिलेंगे, खाते में जोड़ लिए जाएंगे। इन 2 रनों के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है। Thank you. 29 for the loss of 4 wickets. For the loss of 5 wickets, correction, यानी 8 गेंदें शेष बची हैं, 9 रनों की दरकार है और मुरली शंकर भट्ट फिर से स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं। 8 गेंदों में 9 रनों की दरकार। इस वक्त बड़ा रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ, फिर से फुल टॉस गेंद थी, हवा में उछाल दिया, कैच हो सकता है और पॉइंट पे फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया है। हेलो, अंपायर ने नो बॉल का संकेत किया है। थोड़ा सा धीरे धीरे डीजे जी, थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी हो रही है और जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, अंपायर ने कहा कि नो बॉल है, तो आज कहना होगा कि कहीं ना कहीं तकदीर लिखा कर रहे हैं मुरली शंकर भट्ट और कैच का मौका तो जरूर था, लेकिन अंपायर ने हाथ को बाहर निकाल कर नो बॉल का संकेत किया। तो फ्री हिट का अवसर है इस वक्त। लॉफ्ट किया गेंद को, खूबसूरत स्ट्रोक है, फील्डर गेंद के ऊपर आकर उन्होंने गेंद को उठाकर जल्दी थ्रो कर दिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इक्वेशन आपको बता दे थोड़ा सा जल्दी जल्दी। 7 गेंदों में 7 रनों की दरकार।
मुरली शंकर भट्ट जब तक क्रीज पर रहेंगे निश्चित रूप से वो अपने टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। विकी वाइकिंग्स को 7 रनों की जरूरत है, 7 गेंदें शेष बची हुई है। रोमांच बढ़ता हुआ, दांतों तले उंगलियों को चबाया जा सकता है, माफ कीजिएगा नाखूनों को। इस चोट से विकेट, ये गेंद थी, हवा में गेंद को खेल दिया, फील्डर थोड़ा सा डीप में है और बड़ी सूझबूझ के साथ खेला गया स्ट्रोक था। स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत नहीं लगाया, जानबूझकर हल्के हाथ से गेंद को लॉफ्ट कर दिया। 1 रन बटोरकर जिम्मेदारी फिर से मुरली शंकर भट्ट को मिलेगी। ओवर समाप्त हुआ तो कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 34, 5 विकेटों के नुकसान पर 33 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। इक्वेशन आपको बता दें, 6 गेंदों में 6 रनों की 5 रनों की दरकार है, माफ कीजिएगा। 6 balls to go and 5 runs to get। 5 रनों की दरकार, 6 गेंदें शेष बची है। और अब क्या कहा जा सकता है, इस मैच में किसके पक्ष में नतीजा निकलेगा, विकी वाइकिंग्स या बाईपास? ऐसा लग रहा है कि फाइनल का मैच चल रहा हो। सारे दर्शक बिल्कुल शांत हैं, स्तब्ध हैं, वो देख रहे हैं कि इस मैच में कौन जीत सकता है, उम्मीद क्या की जा सकती है। आखिरी ओवर की शुरुआत के लिए ध्रुव आक्रमण पर आ रहे हैं, उनकी गेंद इस छोर से मुरली शंकर भट्ट ने गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया, चूक गए, मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और अब 5 गेंदों में 5 रनों की दरकार। रोमांच फिर से धीरे धीरे चरम सीमा की ओर बढ़ता हुआ, ऐसा लग रहा है कि फाइनल मैच चल रहा है। मुरली शंकर भट्ट तैयार हो रहे हैं बल्ले को थामकर। इस छोर से ध्रुव की अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास मिस कर गए। अच्छा मौका था, अपने आप को कोस रहे हैं बल्लेबाज मुरली शंकर भट्ट के, उन्होंने इतने अच्छे मौके को कैसे गवा दिया। हाफ ट्रैकर थी, शॉट ऑफ लेंथ थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, उस मौके का फायदा उठाया जा सकता था लेकिन थोड़ा सा मिस कर गए। इस गेंद को पलटकर स्विच हिट करने के प्रयास में अब 4 गेंदें शेष बची हैं, 5 रनों की दरकार है, यानी कि गेंदों के मुकाबले में 1 रन ज्यादा चाहिए। ध्रुव आक्रमण पर दूर वाले छोर से विकेट, उनकी ये गेंद इस बार उछालने का प्रयास मिस कर गए, गेंद उनके शरीर से आकर टकराई और एक गेंद फिर से डॉट में तब्दील हो चुकी है। न मालूम क्यों, कहां पर थोड़े से परेशान, अपनी एकाग्रता को बनाने में इस वक्त थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाज मुरली शंकर भट्ट को। वो इधर उधर टहल रहे हैं, मुझे लगता है कि बात बनेगी। वो विश्वसनीय बल्लेबाज है, थोड़ा सा अपने हौसले को, अपने जज्बे को टटोलना होगा, आत्मविश्वास को बिखरे हुए एकत्रित करना होगा, एकजुट करना होगा। इस छोर से ये गेंद ऑन द विकेट और पुल किया गेंद को, फील्डर गेंद को रोकने में लगे हुए, गेंद डिक्लेयर एरिया में गई, 2 रन खाते में और जोड़ लिए गए। इन 2 रनों के साथ इक्वेशन अभी आपको बता दें, 2 गेंदों में 3 रनों की दरकार, 2 गेंदों में 3 रनों की दरकार। 3 more runs to get in 2 balls। 2 गेंदें बची हैं, 3 रनों की दरकार है। इस गेंद पर बहुत कुछ निर्भर है, तो इसीलिए ध्रुव और मुरली शंकर भट्ट के बीच में ये बड़ी चुनौती का गेंद है। और द विकेट, ये गेंद इस बार उछाल दिया और मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे, 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, रन आउट का मौका आसान सा था और इसी के साथ मुरली शंकर भट्ट आउट होकर लौट रहे हैं। बहुत बड़ा विकेट गिर चुका है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी गेंद शेष बचा है, 2 रनों की दरकार है। वो बैट्समैन जिसको मुरली शंकर भट्ट कहा जाता है वो आउट होकर लौट गए और ध्रुव आखिरी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। और विकेट, उनकी गेंद उछालने का प्रयास, बल्ले से लगी और डिक्लेयर एरिया में जाकर 2 रन खाते में लिखा लिए गए हैं। किस्मत का साथ मिला, 2 रन बन गए और विकी वाइकिंग्स ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत लिया है।
थैंक यू डीजे। 1 मिनट लेना चाहूंगा। तो क्या जबरदस्त रोमांचकारी मैच आपने देखा है, कमाल का मैच है। विकी वाइकिंग्स हारते हारते वो मैच को जीत गए। क्या जबरदस्त मैच था। और जिस तरह से बाईपास के गेंदबाज ने आखिर तक जुझारू प्रदर्शन दिया है वो जबरदस्त रहा। ध्रुव ने आखिरी में कमाल की गेंदबाजी की। लेकिन अक्सर कहा जाता है, कहावत है कि आप अगर किस्मत का साथ न हो, पेड़ पर जाकर भी बैठो तो कुत्ता आकर काट लेता है, ये कहावत कहा जाता है। तो ऐसे में ध्रुव ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर जो 2 रन बनने चाहिए थे वहां पर गेंद बल्ले से लगकर विकेट कीपर को बीट करती हुई डिक्लेयर एरिया में गई। 2 रन खाते में जोड़ ले गए और उसी के साथ इस मैच को विकी वाइकिंग्स ने जीत लिया है। मुरली शंकर भट्ट का परिश्रम विफल नहीं गया, उनकी टीम जीत गई। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इस बीच एक तो आइए जितने सारे दर्शक हैं उनसे उनके जानकारी के लिए बता दें, होंडा का एक की हमारे पास पहुंच चुका है। किसी का की अगर मिस हो गया हो, चाबी, गाड़ी की चाबी, 2 व्हीलर की चाबी अगर किसी की खो गई हो तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। होंडा की हमारे पास मौजूद है, किसी ने लाकर दे दिया है। तो अगर की मिस हुआ हो तो कृपया आकर कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें और इसे ले लें। तो शानदार मैच खेला गया और इस वक्त नया ताज़ा मैच शुरू होने वाला है। और नए ताज़े मैच के लिए फिर से मैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद डीजे। और इस वक्त शानदार खेल समाप्त हुआ, दूसरा नया ताज़ा मैच शुरू होने वाला है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि दूसरे स्टेज पर डांस प्रोग्राम है। हमारे जितने सारे साथीदार हैं वहां पर शानदार नृत्य करने वाले हैं। तो दर्शकों से अनुरोध है कि मैच के साथ साथ वो दूसरे स्टेज पर थोड़ा सा ध्यान दें, वहां पर देखें, क्योंकि बहुत शानदार डांस वहां पर देखा किया जाएगा और उनको प्रोत्साहन दें, उनकी हौसला अफजाई करें। तो आइए दूसरा एक और मैच शानदार चलने वाला, शुरू होने वाला। माइक्रोफोन पर आगे के विवरण के लिए अंग्रेजी में दोबारा स्वरूप जी से अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभालें।
creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend it over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get so. Smack that, oh. क्या सूरत है क्या सूरत है baby no one so sexy in the whole galaxy you make my heart go beating harder क्या सूरत है क्या सूरत है क्या सूरत है yeah Oh shit, it's the one that we're not selling, y'all. They wanted the house, coming with the new funk. I like how you sexy क्या सूरत है क्या वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है,
हवा से हवा का झोंका है, क्रिमिनल तो हर एक कोई होता है।
Here in the day, four forensics won the toss and have decided to field first. The two right-handers, I think, who will take the field. I think overrated the left-handers are, because lot of hue and cry, lot of discussions about having a left-hander up at the top. But when you look at statistics, in the last 8 Cricket World Cups, the highest scorer of the tournament has been right-handers 7 times. Only once has a left-hander been the man of the series. That highest scorer, I beg your pardon, that happened in 2007, and that was Matthew Hayden. All the other 7 occasions, it's been the right-handers who have been the highest scorer in a Cricket World Cup. So an interesting statistics for the coaches. We are up and about here at KS Hegde Cricket Stadium. The lights are flickering and glimmering in this conditions where the bowlers will be at the top of their game. Here is a new bowler, short and wide, tries to slash it, gets underneath his swinging blade, will be a dot, short and wide. He's flirting with danger there, no protection on the offside. If you give the batsman room, he will dish out that cut strokes, but survives. Bad ball, gone a bigging. Another one, this time a little fuller. The bowler knows his strengths here. Something about a bowler named Dev and making the ball tuck under the lights. One of the greatest all-rounders that the game has produced, Kapil Dev. We've not been able to replicate such an all-rounder in all our history. Unfortunately, this is ball, this is in the air, should be taken now. Falls in no man's land, going for that hook over the vacant deep square leg region. Gets the splice of the bat. You can see it hit the maker's name, which means he's getting that additional bounce, and the batsman has no time to rock back on the back foot and to play that swivel hook stroke. But off the strike is Manjunath, who's been in terrific form. Beautiful stroke, straight to the man at point. The bowler wouldn't mind this. His ball 4 deliveries. He's given only 1 run in the power play, that too, where the batsman will go bonkers, but not today. Not in this game so far. Beautiful delivery that wrapped on the pads. No appeal because the bowler realizes no LBW here. But this is a stupendous start under lights. The ball is spitting like a snake in the grass at the moment. And the batsmen are not given any leeway. Sensational stuff. Goes for the slog sweep, gets enough bat. Man at deep square leg tidies up for a single. End of the first. 2 runs conceded. And if you are not done enjoying the cricket here, you can also savor the dinner that is available, that will be available in 10 minutes near the boys' hostel. Dinner will be served in the next 10 minutes. But till then, you can completely there. No footwork whatsoever. Pratham, swashbuckling right-hander, this man. Played a terrific innings in a losing cause in the previous game. Good shot, but doesn't get all of it, doesn't get any of it. Looking at the cue end at the moment. Is it the bat or is it the batsman? Unclear at the moment because the bowler is right on top. Score is stuck at 8. Last ball of the second coming up. They need to get that boundary. 10 wickets, 10 batsmen waiting in the hut. They need to get going. This is the time. They cannot eat up dot deliveries here. Last ball of the second coming up. Shot wide in the air, into the night sky, and over the fence as well. No, it isn't. Some acrobatic gymnast stuff there by the man at deep mid wicket. Had more time than he thought he had. Ends the over with a boundary. The score is at a run ball 12 after the completion of 2.
steady partnership, mature partnership. But that is not what they need right now. They need some aggression. They need some excitement in the batting. They're at a runner ball 12 at the moment. Gandev, the legendary bow of Arjuna. Can he shoot those arrows into the stumps? Can he be as accurate as that man? He's got a legendary name. Right arm over. Oh, that's a lollipop, but the batsman gets inside the line. That's what happens when you're in a shell. Even if you get gifts like that, you can't capitalize. Manjunath was focused on getting off strike that he couldn't put away an absolute lollipop of a delivery there. The ball was almost dipping as it reached him. Could have read a newspaper and then played the shot. But only gets a couple. That's been the story of this team. Raj Blasters haven't really found the rhythm right throughout the tournament. Oh, the cut shot. He's appealing for a wide there. The umpire obliges. Right now, Gandhiv's accuracy is probably not where the captain wants him. Straight to the ball. A leaping effort will be only a single. It's a good partnership so far, but they need great partnerships at the moment. They've got 10 batters in the hut. This is the time to go. Quite slow. The run rate quite slow. The game progressing at a snail's pace at the moment. Shot ball and a massive hit. A mammoth six that. This is a crowd warning to that, to the members, to the residents of the hostel there. Any ball can land right through the windows. Such a big hit that was. He goes again, this time straight to the man at short mid wicket. What a hit that was. Nice half tracker. Gets the full Mountie and he hits it a long way. When this man hits the ball, Pratham, they stay hit. A 4 and a 6 of this over and is not done. Top edge, beats everyone, gets a couple. As long as it's not a dot delivery, the batting team will be quite happy. Good partnership so far. The score is on 24. It's a good hit. In the vacant space there, they're thinking about a couple, but the batsman played it on the back foot, didn't get enough time to complete the first run quickly. The score is on 25 after 3. Current run rate 8.33 at the moment. Manjunath. He's at the non-strikers end. Sampath. I beg your pardon. Pratham gets another dot delivery. He kept strike in the previous over, hoping that he can get those big sixes even in the next. Pratham needs those big ones here. He's against a spinner. Overthrows. They want a second. They don't get it. He's frustrated, the man at long on. Throws the ball onto the ground. Spinners are a vital part of any bowling attack. If you look at the T20 rankings for bowlers currently, out of the top 5 bowlers, 4 of them are spinners. Such is the effectiveness of slow bowlers in the short format, because the batsmen have to generate all the pace from the bat. Not an easy task. All the spinners in the top 5 are either leg spinners or are mystery spinners. So it's important that you have some mystery in your bowling. This is in the air, should be taken. Is taken, or is it on the second attempt? Juggling effort there.
The aggressor, Pratham, has to go back. The score is on. The score is on 27. I tell you what, Ajay Bhai, that partnership between Manjunath and Pratham lasted longer than most Gen Z relationships. So it's pretty good from a batting effort, but they really need to up the ante here. They need to up the scoring rate. Will Durga Prasad be the man? Again, the spinner providing the breakthrough. So important to have that leggy in your squad. Plays it through the offside. Gets that single quite easily in the end. Hussain was terrific in the previous game when he batted. Last 2 balls remaining in the over. And he is bowling against Manjunath, who's had nice partnerships right throughout the tournament. Yes, to play his best, you feel. "28 after 4, another economical over there. Just a little blot in the 3rd over, but after that, and before that as well, the bowling team have really done well. Forensics have forced their opposition into a wall, so to speak. I remember there was this article about Clive Lloyd dropping Jeffrey Boycott on purpose in the 1979 World Cup final, because Jeffrey Boycott used to play very slowly in a limited over fixture. He dropped Jeffrey Boycott because as long as Boycott was there, the run rate wouldn't be as high. Similar strategy may be being employed for Manjunath at the moment. The longer Manjunath stays there, you feel that the scoring rate won't go out of hand. Out of the crease is Durga Prasad, clearly signaling the aggressive attempt. Tries to play it on the onside, beats everybody, should wait for the umpire's decision. Yes, to declare there. Tries to play the swivel pull, gets the under edge, and beats the man at short fine leg for a couple of runs. Dave, given the second over. Short and wide, slash. Has it gone straight to the man at cover point? No, it's beaten him. The ball just spins around the man at cover point. Not the best of efforts there. You need to be agile in that position, reserved for the best fielders in the side. If that is the standard of fielding, from the best fielder, then it's really begs the question who the fielding coach of the side is. But faster delivery here. Quick delivery from Dave. He's showing us he's not just got magic in his wrist. He's showing us that he's got those variations as well. Gets the quicker one when it's necessary. He's bowling to Durga Prasad. Under edge. Once again, another couple of runs. Can't prevent the 2 declared there. Dave has been very good. 6 runs conceded in the 4 balls. He's in the second over. They've only lost the 1 wicket. Raj Blasters, it's go big or go home at the moment. This is their final league game. They have to get those big runs on the board. They're not getting those boundaries. The sixes have disappeared altogether. Swing and a miss. He's swiping left. He's swiping right. It's almost as if Durga Prasad is on Tinder at the moment. But he's not getting any runs. He's not getting them away. The score will remain 34 after the completion of 5. Run rate almost touching 7. 6.80 at the moment. With the last over coming up. Can Manjunath get some magic in his bat? He's not been able to in this game. He's stuck there. He's struggling with his innings. No momentum whatsoever. There needs to be some adrenaline here. Sharath. Slow delivery. Wanders down the track. Only a body blow. Yesterday's game, LSG versus Mumbai Indians, in the last over, Tilak Verma was retired out. It was a tactical decision by the coach.
Could we have a retired out situation here as well, as this is pulled into the deep and it's gone through him? Can you believe it? He's attacked the ball, loses sight of it completely. It was the lights that was in his eye and lets the ball go through. This could be an important boundary. Manjunath pointing his bat almost to the comp box, saying, I'm not done. Manjunath almost telling the crowd here, I've still got some runs in my bat. I'm not done in this tournament yet. Right arm over. Tries to paddle that away, straight to the man at deep square leg. Finally manages to stop the ball. That man stationed there. Just 3 remaining. 3 balls remaining. Durga Prasad yet to find the fence. The scoreboard moving slower than a file in a government office at the moment. Run rate below par. Performance below par. 9 wickets in the hut. Let's that go. Let's that go here. White says the umpire. Right arm pedestrian pace this. He's got a longest run up for the pace that he's bowling. But that could be part of the deception. Bowling is an art of not just pace, but also deception. Deceptively long run up, and this is full. This is in the air. He's called for it, and the catch is completed. Finally a wicket falls, but has it fallen at the wrong time? There is no right time to lose a wicket, but there has to be impetus that is needed in the innings. Missing from the batting team here. They're playing a brand of cricket that is outdated at the moment. You need to be aggressive. You need to play those shots early in the innings, in the power play. Make it your own. None of those things were done. Finally, some big hits in the gap, and it's gone for 4. That's what they needed. Nagaraj comes to the pitch and gets that boundary that they were looking for. Where was this man in the last 6 overs? Rocks onto the back foot and pummels the ball into deep mid wicket. Finds the gap as well. No time for the fielder. Had barely moved a couple of yards before the ball rocketed past him. Nagaraj gets a good start. Last ball of the innings. Can he get a biggie here? Can he get a sixer and close the innings out on a high? It's been mediocre, the batting performance. So many hopes on this ball. Oh, he can. Up and over, extra cover. No, it's long off. Should be a single. Chance of a run out at the non-strikers end. And Manjunath, finally, I think, could be dismissed. It is a referral to the third umpire. And that will decide what the total will be for Force Forensics to chase. But Manjunath's long toil has finally come to an end, either in the form of a wicket or at the end of an innings. They've scored a below par total here. The final score we'll know after the decision. But Raj Blasters, they have been winless in this tournament, and their coach will be more frustrated than a corporate employee seeing his manager take credit for his work, because such has been the tight bowling by Force Forensics. Won the toss, opted to field first, and the bowlers have backed up the decision from the captain by putting on an absolute clinic. Still waiting the umpire's decision. I wish I had the power to give decisions, but I don't. There are more qualified folks here behind the monitors to make that call. And an end to the innings is in the form of a dismissal. Manjunath, in pursuit of runs, has given up his wicket off the final ball. The only way he looked to be dismissed
And the target here, 46 to get in the 6 overs, a below par total, but it's a fighting total. They've given their bowlers something to work with. Have the Raj Blasters. It's a game of pride. It's a game of dignity for Raj Blasters here. Can they spoil the party of forensics and delay their entry into the finals? It's not just your place that you're playing for. You can ruin someone else's place in the finals with 46 to get off 6 overs. It's going to be an interesting second innings coming up. I tell you what, in this contest, Raj Blasters are probably the most dangerous side because they've got nothing to lose. There is a saying that never cross a man who's got nothing to lose, and Raj Blasters are such a team. They can ruin someone else's place here, and that is what they need to keep in mind. They're playing not for a place now, they're playing for dignity, they're playing for pride, they're playing for the fans who have gathered here in and around the stadium. It's going to be their last innings that they will take in this tournament. We'll see if they take that energy and enthusiasm onto the field, Ajay Bhai. But with 46 runs to get for Force Forensics, they are certainly in the driver's seat to take this game home. If you wanna run away with
लेकिन जब आप माइंड सेट कर लेते हो कि रक्षात्मक तरीके से खेलेंगे तो निश्चित तौर पर वो बात नहीं बनती है। देव ने इस शॉट ऑफ लेन गेंद को रक्षात्मक तरीके से दबा दिया, पुश भर कर दिया। हालांकि उनके पास अवसर था कि वो कहीं ना कहीं गली क्षेत्र में गेंद को प्लेस कर सकते थे। उस छोर से एक और गेंद देव के लिए, राउंड विकेट। इस बार हवा में उछाल दिया गेंद को, कैच होगा। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया, पहला विकेट गिरा है। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शानदार कैच के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। एक अच्छा बैट्समैन देव जो इस तरह से आउट होकर निकल गया, हालांकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, बहुत आशाएं लगा रखी थी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और जहां पर स्ट्रोक खेलना था वहां पर उन्होंने गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेला और इस गेंद को हवा में ज्यादा ऊंचा खेलने का उनका प्रयास था। वो गेंद को अगर थोड़ा सा फ्लैट पुल करते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला जा सकता था। बहरहाल जो होना था वो वही हो चुका है, होने को कौन टाल सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आउट हो गए। उनके चाहने वालों में थोड़ी सी निराशा। नए बैट्समैन का आगमन, सौरान इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सौरान ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया है, बहुत खूबसूरत ऑफ ड्राइव है, गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गई। एक रन को सौरान ने पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ ही रनों का बनना जो कि शुरू हो चुका है और हुसैन इस वक्त स्ट्राइक पर है। सौरान और हुसैन की पारी मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण पैर है। ये जोड़ी अगर रंग लाती है तो फोर्स फॉरेंसिक को निश्चित तौर पर वो जीत की ओर ले जा सकती है और इस वजह से राज ब्लास्टर्स के कप्तान, उनके गेंदबाज चाहते हैं कि इस पैर को तोड़ा जाए, कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू वो चाहते हैं। इस बीच गेंद और अच्छी गेंद थी, लेकिन क्या कहें, अंतिम क्षणों में लेट कट के अंदाज में बल्ले का महिम सा सिरा देकर फिसलने दिया गेंद को हुसैन ने और गेंद डिक्लेयर एरिया में 2 रन खाते में जोड़ लिए गए। इन 2 रनों के 7 रन बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर। महत्वपूर्ण विकेट हुसैन की उस पारी को भला कौन भूल सकता है। हुसैन सोफी जिन्होंने पिछले मैच में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और विकेट इस छोर से ये गेंद और गेंद को उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पंच किया। गेंद एक्स्ट्रा कवर डीप में जा रही है, फील्डर ने गेंद को उठा लिया, लेकिन जब तक वे गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते 2 रन लेने का अवसर बल्लेबाज के पास। तो 2 रन खाते में और रन बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 5 पर। हरीश आक्रमण पर रहे, उनको सोचना होगा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें कहीं ना कहीं बैट्समैन को अवसर दिलाती है कि वो गेंद को उछालें। ऐसे में हरीश आक्रमण पर तैयार हो रहा है। और विकेट ये गेंद और लॉफ्ट कर दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन नहीं। क्या कमाल, क्या क्षेत्ररक्षण है। आउटफील्ड में कौन कह सकता है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं है जिसने गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर हवा में तैरते हुए अंदर की तरफ ढकेल दिया है संभावित चौके को। हालांकि सभी दर्शकों को यहां तक डीजे भी बिल्कुल तैयार थे, धुन को उन्होंने लगाया ही था कि अचानक इस क्षेत्ररक्षण में जो जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला वो लाजवाब था। तो पर उछलकर हवा में तैरते हुए उस टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर लुढ़कने वाली गेंद को अंदर की तरफ जिस अंदाज में ढकेला है वो बाकमाल था। क्या शानदार क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन। इस वक्त रन्स बन चुके हैं कुल मिलाकर 7, जबकि 7 रन्स बन चुके हैं। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त सौरान आ चुके हैं और दुर्गा प्रसाद आक्रमण पर आ रहे हैं। सौरान के नाम को अगर आप विभाजित करें तो उसको आप 100 और रन आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर शतक उसमें आ जाता है। तो सौरान को अपने नाम के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी अगर वो अपने टीम को जीत दिलाना चाहते हैं। फोर्स फॉरेंसिक इस वक्त इन 2 बल्लेबाजों पर बहुत आशाएं लगा रखी है क्योंकि दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है। एक छोर पर सौरान है, दूसरी छोर पर हुसैन। दोनों विश्वसनीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन दूसरी
दुर्गा प्रसाद इस वक्त विकेटों की तलाश को अंजाम देने के लिए दूर वाले छोर से तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग का फील्ड प्लेसमेंट बहुत शानदार तरीके से लगाया गया है, लेकिन क्या इसके अनुकूल गेंदबाजी की जाती है? कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी आप देख रहे हैं मैदान पर, श्वान इधर उधर दिखाई पड़ रहे हैं। आमतौर पर जब भी मैं क्रिकेट श्रृंखला में जाता हूं, एक न एक श्वान तो मैदान पर रहता ही है। इस छोर से ये गेंद माफ कीजिएगा, राउंड विकेट इस बार हवा में उछाल दिया है, कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। एक और शानदार विकेट गिर चुका है, 100 रन आउट हो गए। थैंक यू। इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। सौरान ने गेंद को फिर उस अंदाज में जो गलती कहीं ना कहीं देव ने की थी, उसी गलती को दोहराया। देव ने ज्यादा ऊंचा स्ट्रोक खेला था, लेकिन सौरान ने उसी जगह पर स्ट्रोक खेला जहां पर फील्डर मौजूद थे। तो इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। अब दबाव धीरे धीरे फोर्स फॉरेंसिक के ऊपर बढ़ता हुआ, वो 46 रनों का पीछा कर रहे हैं। नए बैट्समैन डिविन इस वक्त आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर, हुसैन नॉन स्ट्राइक एंड पर इंतजार कर रहे हैं और गेंद को लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज दुर्गा प्रसाद। उनकी गेंद अच्छी गेंद हो सकती है, जी हाँ, क्या बात है, क्या कमाल की गेंद थी। टप्पा खाने के बाद बैट्समैन को चुनौती देती हुई ये गेंद, जिसमें स्विंग था, रफ्तार थी, बाउंस था, और उस गेंद को बस देखते हुए चकित रह गए कि किस तरह से गेंद लगभग 75-80 के इस रफ्तार के साथ निकल गई। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, बस गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में यह खेल हो चुका है। दुर्गा प्रसाद की गेंद में अब ज्यादा पैनापन दिखाई पड़ रहा है। फील्ड प्लेसमेंट अगर आपको बता दे, फील्डिंग की रूपरेखा बता दे, ऑफसाइड पर दायरे को घेर कर लगभग 4 खिलाड़ी तैनात है। ओवर विकेट इस छोर से दुर्गा प्रसाद की गेंद, एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस गेंद को थोड़ा सा अपने बैकफुट के टो पर उछल कर कट करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि बल्ला चल जाता, गेंद पहले निकल गई, गाड़ी पहले निकल गई और इस वजह से संपर्क नहीं हो पाया। विकेट कीपर ने गेंद को फिर से संभाल लिया। ओवर विकेट इस ओवर की एक और गेंद, और बहुत अच्छी गेंद थी, चारों खाने चित हो गए। यू मिस मी, आई हिट यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार डिविन आउट होकर लौट गए। प्रियांश इस वक्त आ रहे हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हुसैन एक छोर पर खड़े हैं। योजना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा समझना होगा। डगआउट में जितने सारे बल्लेबाज खिलाड़ी मौजूद हैं, उनको सोचना होगा कि कौन सा बैट्समैन इस वक्त फॉर्म में है, उसको किस तरह से सहयोग किया जा सकता है। हुसैन नॉन स्ट्राइक पॉइंट पर देख रहे हैं अपने साथीदार को आउट होते हुए, और स्ट्राइक एंड पर विकेट गिरता जा रहा है। इस वक्त प्रियांश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, क्या वो कहीं ना कहीं साथ दे पाएंगे? वो विकेट इस छोर से गेंद, और गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया। सुंदर स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ गए। 1 रन लेकर काफी देर के बाद इस बैट्समैन हुसैन को जिम्मेदारी मिली है। हालांकि जब बैट्समैन अच्छा खेल रहा होता है, फॉर्म में होता है, एक फ्लो में होता है, एक मोमेंटम मिल जाता है, तो उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे में इस छोर से इस ओवर की गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी, और इस गेंद को कहना होगा कि बहुत ज्यादा दिशाहीन थी। अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल का संकेत अंपायर ने किया है। क्या बात है, वाइड और नो बॉल, वाइड का संकेत अंपायर ने किया, क्षमा प्रार्थी। तो वाइड के इस रन के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है वाइड +2, यानी कि 3 रन कुल मिलाकर खाते में जोड़ लिए गए। 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
हुसैन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। गेंद इतनी ज्यादा रफ्तार के साथ गई जहां पर जी हाँ डिक्लेयर एरिया है, वहां पर इस वक्त गेंद को ढूंढना पड़ रहा है और अंपायर ने अपने जेब से एक और गेंद निकालकर सौंप दिया गेंदबाज को। दुर्गा प्रसाद आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। गेंद मिल चुकी है हुसैन स्ट्राइक एंड पर। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक बार जब आप मोमेंटम में होते हो तो उस वक्त कहीं ना कहीं आपको यह सोचना होगा कि ब्रेक नहीं लगना है ताकि वो मोमेंटम आपके हाथ से खो न जाए। इस छोर से गेंद इस बार उछाल दिया, बहुत जबरदस्त हो गए फील्डर के सर के ऊपर से, दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया, न जाने मेरे। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। आखिरकार अपने बल्ले की धार को कर लिए हुसैन ने। जबरदस्त छक्के के साथ आगाज है कि अभी वो अपने हाथ खोल रहे हैं। शानदार छक्का। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सोचा जाता, फोर्स फॉरेंसिक के सारे खिलाड़ी इस वक्त शुरुआत में ही ये इस सोच पर ध्यान देते कि हुसैन जो बैट्समैन फॉर्म में है उसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। इस छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं और ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, हवा में उछाल दिया, कैच हो सकता है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर ने हथेलियों को झोली बनाया, कैच आउट हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और 77 नंबर के जर्सी में कमेंट्री बॉक्स में प्रियांश थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोर से मंजुनाथ आक्रमण पर तैयार। उनकी गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी और इस वक्त मयूर ने गेंद को ऑनसाइड की दिशा में आड़े बल्ले से खेलते हुए 1 रन चुरा लिया। इसे चतुराई कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं। जब पार्टनर अच्छा खेल रहा हो तो उसको एक सहायक भूमिका की जरूरत है। हुसैन अच्छा खेल रहे हैं, मैं इसी बात पर ध्यान ला रहा था सभी का। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और इस गेंद को अंपायर ने हालांकि फेयर डिलीवरी करार दिया है, कोई संकेत नहीं किया है। रन अभी भी वहीं पर सिर और हुसैन कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हो गए, उन्होंने इस गेंद को जाने दिया था। ओवर विकेट एक और गेंद और आगे निकलकर गेंद को उन्होंने लॉफ्ट किया, लॉफ्टेड ड्राइव था और जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए 1 रन चुरा लिया हुसैन ने। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 19 पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स करेक्शन। थोड़ा सा बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के हाथ से पुश पर कर दिया और इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर अब 20 पर पहुंच चुका है। तो जो मयूर कर रहे थे कुछ देर पहले, जितने सारे बैट्समैन आए, अगर वो ऐसा करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्राइक हुसैन को मिलता और वो कहीं ना कहीं जीत का रास्ता बना सकते थे। बिल्कुल विश्वसनीय बल्लेबाज है। इस छोर से ये गेंद ओवर विकेट, इस बार पुल किया ऑनसाइड की दिशा में, थोड़ा स्टेप आउट करना चाहते थे, लाइन और लेंथ को देखा कि थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ शरीर की दिशा में आई, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए पुल कर दिया, 1 रन चुरा लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर इज ऑन 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 रनों के दरकार, 18 गेंदें शेष बची हुई हैं। दुर्गा प्रसाद इस वक्त आक्रमण पर आ रहे हैं। अंपायर हाथों को गोल गोल संकेत करते हुए संकेत कर रहे हैं कि पावर प्ले लिया जा रहा है। तो ऐसे में 25 रनों की दरकार है, 18 गेंदें शेष बची हुई हैं। हरीश आक्रमण पर आ रहे हैं। तो हुसैन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, मयूर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे और 25 रन बनाए जा सकते हैं बशर्ते कि बल्लेबाज को अच्छा अवसर मिले,
क्योंकि इस वक्त रनों के मुकाबले में ज्यादा फर्क नहीं है, फासला नहीं है रनों और गेंदों के बीच में। ऐसे में क्या होगा? हरीश आक्रमण पर लंबी बॉलिंग मार्क से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, हुसैन उनके सामने मौजूद हैं, तो कांटे की टक्कर होगी उस उम्मीद के साथ चलते हैं। फोर्स फॉरेंसिक 46 रनों का पीछा कर रहा है, इस वक्त उनको 25 रनों की जरूरत है। थोड़ा सा जल्दी करें, काफी समय निकला जा रहा है। एक श्वान जो कि बाउंड्री लाइन की दिशा में बैठा है, माफ कीजिएगा, गेंदबाज के बॉलिंग मार्क के पास बैठा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हटाना पड़ा गेंदबाज को। फिर से हरीश तैयार हो रहा है, उनके इस ओवर की पहली गेंद और स्ट्राइक एंड पर हुसैन। इस बार उछालने के प्रयास में गेंद हवा में गई और इसी के साथ आउट हो गया हुसैन। एक और बड़ा विकेट गिर चुका है। Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फोर्स फॉरेंसिक का जो खेल इस वक्त दबाव में चल रहा है, डीजे की धुन से लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से धीरे धीरे ढीला दिखाई पड़ता है, उस अंदाज में डीजे की धुन थोड़ी सी कम हो रही है। थोड़ा सा शानदार नंबर्स को वो तैयार रखें। हालांकि इस वक्त रंजीत स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए और हरीश आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। रंजीत और मयूर के बीच में भागीदारी अगर बनती है तो बात बनेगी, ये पैर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि राज ब्लास्टर्स के हरीश एक और विकेट की तलाश में। हुसैन का विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कहते हैं जिसको, क्योंकि जब आपको स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिलता है, गेंद आसानी से नहीं आती है बल्ले पर, तो थोड़ा सा हो जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन में गेंद को उछालने का प्रयास किया और हुसैन ने गेंद हवा में गई और फील्डर ने गेंद को आसानी के साथ कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक बहुमूल्य विकेट और उस विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। हरीश आक्रमण पर तैयार, रंजीत उनके सामने मौजूद हैं। ये गेंद हवा में उछाल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर मिड विकेट में डीप में मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को समेट लिया और जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, रंजीत ने अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंचा दिया। अपना खाता वो खोल चुके हैं। अभी और 24 रनों की जरूरत। सोचना होगा कि जहां पर दबाव ज्यादा है उसको बढ़ाने की जरूरत है और बहुत जबरदस्त स्ट्रोक खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में कैच कर लिए गए, एक और विकेट। Two more runs to get in 14 balls। 14 गेंदों में 22 रनों की दरकार और इस विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। और ये गेंद जिसको खेलने का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। फोर्स फॉरेंसिक के खिलाड़ी जितने कमेंट्री बॉक्स के सामने हैं, मैं फिर से उनसे अनुरोध करता हूं या तो वो थोड़ा सा साइड में हो जाए, और मैं जानता हूं कि खेल का उत्साह अपने अंदर जब आ जाता है हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करें। कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हो जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। ये गेंद फिर से उसी अंदाज में गेंद थी, क्या बात है, तेज रफ्तार की ये गेंद स्विंग होकर विकेट कीपर को उनके हथेली में जाकर समा गई, बैट्समैन को बीट करती हुई ओवर समाप्त हुआ। तो ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 4 ओवर के समाप्ति पर 24 रन बना लिए गए हैं, जबकि विकेटों की संख्या है 6 पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इक्वेशन आपको बता दे, 2 more overs to go, यानी कि 12 गेंदें शेष बची हुई है और 22 रनों की दरकार है। कहां पर गलती हुई फोर्स फॉरेंसिक सोच रही है, क्योंकि शुरुआत में बल्लेबाजी का जो स्ट्रेंथ उनके पास बहुत जबरदस्त था, इसके बावजूद इस मैच में इतना दबाव और इतने थोड़ा सा पिछड़ती हुई, मैं समझता हूं कि उस गलती को पहले सुधारा जा सकता था। एक योजना बनाई जा सकती थी, एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत थी शुरुआत में कि किस तरह से खेल खेलेंगे, क्योंकि 46 का रन जो है टारगेट है। 36 गेंदों में कोई बहुत ज्यादा विशाल नहीं कहा जा सकता है।
क्रिकेट का अनिश्चितताएं अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन योजना स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी हो जाती है। इस छोर पर 5वें ओवर की शुरुआत के लिए आक्रमण पर गेंदबाज नागराज आ रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर रंजीत इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है। मुझे लगता है कि रंजीत एक आशा की किरण इस वक्त हैं। अगर उनका बल्ला चल गया, कुछ अच्छे रन्स बने तो बात बनेगी। राउंड विकेट ये गेंद रंजीत के लिए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गेंद को देखा, फ्रंट फुट पर बहुत रक्षात्मक तरीके से बल्ले का मुंह खोलते हुए सीधे बल्ले से उन्होंने गेंद को पुश भर कर दिया और इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब एक ऐसी गेंद मिले जिसको वो पनिश करें। फिर से ये गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बीट हो गए, गेंद उनको भ्रम में डालती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई और नागराज फिर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। राउंड विकेट नागराज की एक और गेंद, इस बार ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, बल्ले का शायद निचला सिरा लगकर गेंद गई। फील्डर मिड विकेट में दायरे के अंदर जो खड़े हैं उन्होंने गेंद को उठा लिया। रन्स अभी भी नहीं मिलेंगे, यानी कि बहुत मुश्किल से इस वक्त रन बनाने का अवसर बल्लेबाजों को मिल रहा है। एक और गेंद, इस बार ड्राइव करने का प्रयास, बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, बहुत उत्साहित होकर उन्होंने कॉट बिहाइंड के लिए अपील की, लेकिन अंपायर पर इसका असर नहीं हुआ और रंजीत इस वक्त तलाश कर रहे हैं, लेकिन गेंद को जज करने में वो बिल्कुल नाकामयाब हो रहे हैं। ऑन विकेट नागराज की एक और गेंद रंजीत के लिए, इस बार लोअर फुल टॉस थी, ड्राइव किया और हाना करते हुए रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन क्या करें, गेंद थ्रो जो किया गया था दिशाहीन और बल्लेबाजों को अवसर मिला कि वो कुछ और रनों को बटोर लें। 3 रनों को उन्होंने बटोर लिया है और यही है क्रिकेट की अनिश्चितताएं, जहां पर सिंगल मुश्किल से बनने वाला था, हालांकि रनआउट का मौका हो सकता था, वहां पर ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाजों को 3 रन लेने का अवसर मिला। अब आपको इक्वेशन बता दें कि कितने गेंदों में कितने रनों की दरकार है। 7 गेंदें शेष बची हैं और 19 रनों की जरूरत है। 19 मोर रन्स टू गेट इन 7 बॉल्स। 19 रनों की दरकार 7 गेंदों में, अभी भी मौका बन सकता है। 2 छक्के अगर लगे तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। 2020 का दौर चल रहा है, वो दौर नहीं जो पिछला था। अब कुछ भी हो सकता है। पिछले मैच में आपने देखा ही होगा कि सर्वाधिक स्कोर का भी पीछा किया गया। ये छोर से गेंद हवा में उछाल दिया है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में सर के ऊपर से फील्डर के गई, दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, क्या बात है। इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। जतिन का ये जबरदस्त छक्का, मैं समझता हूं कि मेरे शब्द अगर प्रेरणा बनते हैं तो अच्छा ही है। मैं दोनों का हौसला बढ़ाता हूं, गेंदबाज और बल्लेबाजों का। इस छक्के की क्या बात है, लेंथ में जैसे ही ये गेंद ज्यादा आई, जतिन ने गेंद को खूबसूरती के साथ वॉली पर लेकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाल दिया। फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पुरजोर कोशिश की अपने टो पर उछल कर गेंद को अंदर की तरफ ढकेलने की, लेकिन वो जी हाँ नाकामयाब हो गए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रनों के लिए। अब इक्वेशन आपको बता दे, आखिरी 6 गेंद बचा हुआ है और 6 गेंदों में 13 रनों की दरकार है। अभी भी मौका बन सकता है। 13 रनों की दरकार, 6 गेंदें बची हैं। 2 गेंदों में अगर एक भी छक्का लगता है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? राज ब्लास्टर्स का ये गेंदबाज जो इस वक्त आक्रमण के लिए आया है, बेबिन राजा इस वक्त आक्रमण पर है। जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है इस महत्वपूर्ण निर्णायक ओवर के लिए। बेबिन राजा आक्रमण पर है, वो कितना असर दिखा पाएंगे। 13 रनों की दरकार है, 6 गेंदें शेष बची हैं। स्ट्राइक एंड पर रंजीत हैं जो बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। मौका है, दस्तूर है, लेकिन क्या परिस्थितियां साथ देंगे। इस छोर से गेंद ऑन साइड की दिशा में उछालने का प्रयास, मिस कर गए और रंजीत ने अंपायर की तरफ देखते हुए अपील कहीं करना चाहते थे कि इस गेंद को वो वाइड करार दे, लेकिन अंपायर
10 से मस नहीं हुए और फिर से बेबिन राज गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। 5 गेंदें शेष बची हैं। ऑन द विकेट इस छोर से गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है। क्या कमाल का स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन वहां पर फील्डर जिन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इसी के साथ एक और विकेट। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो इस शानदार कैच के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। जो स्ट्रोक लगा रंजीत का, वहां पर फील्डर है, इसका अंदाजा भी नहीं था कहां से अचानक फील्डर आ गए। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से कैच कर लिया। क्या बात है, जबरदस्त कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। अब इक्वेशन 4 गेंदें शेष बची हैं, 13 रनों की दरकार है। अभी भी मौका है, लेकिन क्या परिस्थितियां साथ देंगे। 10 नंबर के जर्सी में इस वक्त गांडी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं। उनको फिर से याद दिलाता हूं कि थोड़ा सा बैठ जाएं और बार बार उत्साहित होकर खड़े होने पर पीछे कमेंट्री बॉक्स में जितने सारे लोग हैं, स्कोरर, कमेंटेटर, उनको मुझे लगता है कि जी हाँ परेशानियां हो जाती हैं। आइए दुरुस्त कर लेते हैं। इस छोर से एक और गेंद। 4 गेंदें बची है, इस गेंद को उछाल दिया, कैच होगा, फील्डर गेंद के नीचे आ गए। इसी के साथ एक और विकेट। Going. All night, keep it going, rolling and controlling. All night, keep it going, rolling and controlling. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राज ब्लास्टर्स के 2 बल्लेबाज, प्रथम और मंजुनाथ, जिन्होंने शुरुआत में आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और कहीं ना कहीं इस योगदान की वजह से 46 रन वो टारगेट रख चुके हैं। और फोर्स फोरेंसिक की तरफ से दबाव, उनके फोर्स फोरेंसिक के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव दिखाई पड़ रहा है। 3 गेंदें शेष बची हैं, 13 रनों की दरकार है। 13 रन टू गेट इन 3 बॉल्स। 2 छक्के लगने ही पड़ेंगे, एक छक्का भी लगता है तो बात बनेगी। इस वक्त बैट्समैन शरद स्ट्राइक एंड पर हैं और कुछ अटपटे ढंग से वो खड़े हुए हैं। अब वो विकेटों को या विकेटों की ओर बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर गेंदबाज की ओर, ये देखना होगा। राउंड विकेट, ये गेंद घुमाकर खेलने का प्रयास मिस करके विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। एक गेंद डॉट में तब्दील हुआ है और बड़ा आश्चर्य हुआ जब शरद उस अंदाज में खड़े हुए, क्योंकि 3 गेंदों में 13 रनों की दरकार थी और ऐसे में आक्रामक स्ट्रोक लगाने के बजाय वो बिल्कुल अलग अंदाज में खड़े हो गए। कहीं ना कहीं दर्शकों को लगा कि कुछ अलग हो रहा है। बहरहाल 2 गेंदें शेष बची हैं, 2 more balls to go। 13 रनों की दरकार। क्या इस गेंद पर कुछ हो सकता है? बेबिन राज आक्रमण पर तैयार। ओवर विकेट उनकी गेंद, इस बार ड्राइव करने के प्रयास में बीट हो गए। गेंद बिल्कुल उनको चकमा देकर विकेट कीपर के पास गई और विकेट कीपर ने गेंद को समेट लिया। आखिरी गेंद शेष बचा है। इस आखिरी गेंद पर कुछ भी चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है और ऐसे में बेबिन राज ने इस आखिरी ओवर को बहुत शानदार तरीके से किया है। इस आखिरी गेंद को लेकर वो तैयार हो रहे हैं। ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास, गेंद बल्ले से लगकर गई या नहीं। डिक्लेयर एरिया में अंपायर ने वाइड का संकेत किया है। 3 रन मिल सकते हैं, जी हाँ, 3 रन खाते में। और तो अब 3 रनों को अगर 13 से कटौती की गई तो 10 रन बचते हैं, मुझे लगता है। जी हाँ, 10 रन की जरूरत है और इस वजह से बेबिन राज को थोड़ा सा संभलना होगा। इस गेंद को अगर वो ठीक से नहीं कर पाए, अतिरिक्त रन दे गए तो निश्चित तौर पर फिर गफलत हो सकती है। ऐसे में इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर बेबिन राज की गेंद, ओवर विकेट, इस बार ड्राइव करने का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, गिल्लियां उड़ा दी और इसी के साथ इस मैच को राज ब्लास्टर्स ने शानदार तरीके से जीत दिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस। डीजे
chunga. Hey, ho, yeah. See me coming, yeah. Better run for cover, yeah. When I find you, yeah. I'm gonna be your lover, yeah. See me coming, yeah. Better run for cover, yeah. When I find you, yeah. I'm gonna be your lover. तुझको ज़माने के आगे मैं छेड़ूंगा या छोड़ूंगा आंखें चुराएगी भी तो मिलाऊंगा तुझको ज़माने के आगे मैं छेड़ूंगा या छोड़ूंगा आंखें चुराएगी भी तो मिलाऊंगा हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपने अंदाज़ यारों से जुदा हे हा बचना है हसीनों लो मैं आ गया बचना है हसीनों लो मैं आ गया थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए एक और शानदार मैच शुरू होने जा रहा है और इससे पहले कि नया ताज़ा मैच शुरू हो माइक्रोफोन पर फिर से विवरण में बदलाव करते हुए मेरे साथी कमेंटेटर स्वरूप जी को आमंत्रित करूंगा और जिन्होंने भोजन नहीं किया हो कृपया बॉयज हॉस्टल की तरफ जाएं, गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन तैयार है, वहां पर जाकर भोजन ग्रहण करें और फिर आकर इस शानदार क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Mueve ese bum bum tam tam, mueve ese bum bum tam tam tam, mueve ese bum bum tam tam, mueve ese bum bum tam tam tam, mueve ese bum bum.
Swati's got the new ball in hand. It's a 5-over contest per innings, this. Shreya Shetty plays it down. Chance of a run out at the non-strikers and she throws the bat in desperation. Can't make her ground. Oh, they wanted a dive there to save her wicket, but not to be. Doesn't dive, gives her a wicket. Samprata wanted to get back on strike desperately. Runs her partner out in the process. Swati gets a wicket, not to her name, but wicket nonetheless. Samprata needs to play a long innings. 5-over contest. No need to hurry. Lot of deliveries. Oh, that's a quick delivery. Gets the under edge. Beats everyone there. Good tidying up by the fielder at fine leg. Doesn't get a single though. Samprata not interested in singles, wants to get the big ones away, but quite a lot of pace behind the ball. Swati really turning it up here. This is shot, tries to pull it away. Hits the pads on the back foot. Another dot delivery. Good start this by Swati. Maintaining that line, something that the guys can also learn from. The length impeccable in this over. Nothing on the fuller side, everything at a length. As I say that, another length ball, tries to pull it to the fielder at short mid-wicket. You can see the encouragement. You can see the fielders really trying to put that additional bit of pressure to the batsman. First full delivery, gets an under it. Samprata is not moving at the crease at the moment, not churning that strike over. Needs to get at the other end if you're not connecting. The new batter in, just a spectator at the moment and knocks her over with an absolute beauty. The first over, 2 wickets down. What a start that was from Swati. With the new ball, she's delivered what the captain was seeking. New bowler. Bhumika Alwa again sticking to that length. The back of a length batsman trying to get on the front foot, not able to connect. This is in the air, tries to make that catch happen. Was an half chance there, but finally there is a score on the board after the completion of 1.2. Full delivery, goes on the onside, can't beat the inner circle. Ring of fielders on the onside, plenty of space on the off. Any width, the batter can really make use. Interesting stance there, interesting backlift as well. Tries to go for the big one, misses it completely. It's been a good bowling performance this. We've said time and again, with the floodlights on, very difficult for the batsman to get those big ones away. Look at the encouragement, everybody's happy. The women in green seem to be up and about in high spirits.
Right arm over to the batter. Tries to go over the onside. Beats everybody. Just losing a bit of radar there. On the onside, 3 runs conceded off that delivery. Wide +2. Last 2 balls remaining in the over. Hits it on the full. This is good stuff. Very good stuff here. I sent someone who knows the names. Gets the single away. Gets the single away. End of the second. End of the second, is it? Oh, tries to pull that. 2 declared by the umpire. Should be a 2. It is a 2. Jersey number 05 gets that single away. All full deliveries have been put away. It's the length that's been troubling the batters. Navyashri. We are in the 3rd over here. Oh, full this time. Very full indeed. Lucky the batter to not get her stumps rattled. Oh, down the leg side. Down the leg side. And it's beaten the fielder, or has a desperate save in the last moment there. I think she saved a single. No, she hasn't. No, she hasn't. All that trouble in vain as 3 runs added to the total. The score is on. The score is on 13. Three overs, the score is on 13. Oh, left arm. We have a left arm bowler there. Always troubling for right arm batters. There are 4 fielders who are begging for the ball at the non-striker's end. Finally, the throw is made and a single is taken. The score moves on to 14. Kishori. Left arm round is in the air. First aerial shot, but straight to the fielder at wideish long on. Some intent being shown finally in the batting side. But look at that bat swing. I tell you what, if she connects, that ball is going all the way. That's a good hit. Straight to the fielder at short extra cover. No single taken though. Maybe time to access that offside. No one patrolling the offside fence from extra cover to mid to the 3rd man region. But the batter still trying to access the onside. Plan not working at the moment as the bowler is cramping the batter for room. Short delivery. Oh, that's good footwork. Lets the ball go. Wide, says the umpire. But good tidying up there by the fielder at deep point leg. Let a couple of those go. But finally does what the captain requires her to do. Left arm round. Hits the pads and they're appealing, and good delivery that. Round the wicket, very difficult for the batsman to cut down the angle. Last ball of the 4th. Full delivery, it's in the air. I think she's gotten all of it. It's beaten everybody inside the inner circle. A direct hit would have meant doom, but not to be. Not to be. The batter is safely in. End of the 4th. The score is on 17. Finally, some momentum into the innings. Good bowling performance. Maybe the guys can learn something from the bowlers in this innings. Have been very, very economical. Jasmine gets a wicket. You can hear the shouting and the screeching here in the car box as well.
start to the final over. For a moment there, I thought the umpire was high-fiving. In fact, he was asking for the ball. But good start to the final over. Good wicket as well. The score still on 17. Deceptively slow, the bowler. And she gets a wicket of the very first ball. Another full delivery. Drives down the ground. She's found the gap. No, she hasn't. Chance of a run out at the non-striker's end. But an underarm throw prevents that in the end. The score moves on to 18. 2 balls up. 4 remaining in the innings. To the set batter with that big swing. She hasn't made the best of contacts. But is this the time for her to get those lusty blows? Time will tell. Right arm over to the right-hander. Oh, bang, in the gap, straight to the fielder. Oh, no, it's beaten everyone. Gets that boundary, yes. Come at the moment, come at the woman. It was full on the pads, closes the face of the bat, gets that boundary, and again she's finding the middle of the bat every single delivery now. But unfortunately for the batting side, for the Supernovas, she finds herself at the non-striker's end. It's a super score already by the Supernovas after being asked to bat first. In this bowler-friendly condition, shot wide in the air, straight to the woman at mid-on. The fielder at mid-on, safe as a garment's bond, went straight to her, but she's taken a very, very good catch. Laranya, she's got Lara in her name, so a born batter maybe. Down the leg side, but well fielded. Well fielded there by the fielder at deep fine leg, Laranya. Can she get that big one? She tries, hits it hard to the ground, doesn't want a single. They're thinking about it. End of the 5 overs. And the women in green are very happy. They're already celebrating prematurely, I must say.
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप। तो युवतियों का ये शानदार खेल इस वक्त चल रहा है। आप देख रहे हैं खेमा प्रीमियर लीग 2025 और इस मैच में बहुत शानदार खेल देखने को मिला। शेट्टी स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एसके सुपरनोवास जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 24 रनों को बटोरा है। 25 रनों की दरकार इस वक्त शेट्टी स्ट्राइकर्स के सामने रखा गया है। दो शानदार बल्लेबाज विमेंस बैट विमेंस कहा जा सकता है और वो इस वक्त मैदान पर उतर रही हैं। युवतियों का ये शानदार खेल और कौन जीतेगा इस मैच में, ये बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ। 18 नंबर के जर्सी में और 27 नंबर की जर्सी में दो खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ रही हैं। स्वाति नायक और किशोरी दोनों इस वक्त मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस मैच में 25 रनों की दरकार और शेट्टी स्ट्राइकर्स क्या इस मैच को जीत पाएगा या फिर एसके सुपरनोवास। स्वाति स्ट्राइक एंड पर हैं और किशोरी इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर है। तो दूर वाले छोर से स्वाति को गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यशविता आक्रमण पर है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। अंपायर से अनुरोध करेंगे थोड़ा सा वो पुश करें क्योंकि अभी और बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं। क्या बात है, कितना शानदार दृश्य है। बहुत सारी युवतियां इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर बैठकर शानदार तरीके से इस मैच का आनंद उठा रही हैं। तो 25 रनों का लक्ष्य, गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। आखिर खेल रुका किस लिए है ये पता नहीं है। लाइव टेलीकास्ट इस वक्त चल रहा है। कैमरामैन बहुत शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। शानदार मौसम है। इस दूसरी पारी की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने इस पहली गेंद को वाइड करार दिया। वाइड के इस रन के साथ ही रनों का बनना शुरू हो चुका है। एक रन बगैर किसी नुकसान के आघात के, यानी कि अभी और 24 रनों की दरकार है। निर्धारित 5 ओवर्स का मैच है। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, लेंथ में ज्यादा थी और इस गेंद को देखकर सम्मान देते हुए गेंद को हल्के हाथ से पुश भर कर दिया और माफ कीजिएगा। और जब तक फील्डर गेंद को उठाते हैं 1 रन लेने का अवसर होगा। इस वक्त 1 रन के साथ ही कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर। 2 रन बगैर किसी नुकसान के आघात के। किशोरी बाएं हाथ की बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है और वो क्या कुछ कर पाते हैं। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त चलता हुआ, ऐसे में शानदार खेल दिखाई पड़ रहा है। ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी। गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया है। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये शानदार 4 रन। दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो खुल के गाओ। थैंक यू डीजे। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। किशोरी स्ट्राइक एंड पर बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रही है। वो बिल्कुल आक्रामक तरीके से उनकी बल्लेबाजी। फिर से ये गेंद थी, फिर उसी अंदाज में गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में उन्होंने खेल दिया, पुल कर दिया। 1 रन लेने का अवसर वहां पर। 1 रन के साथ दोनों बैट्समैन ने छोर को बदल लिया और रन्स बढ़ाकर पहुंचा दिया 7 पर। 7 रन्स बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य है 25 रनों का। तो रोमांच क्या होगा इस मैच में, ये देखने वाली बात होगी। इस छोर पर जो बॉलर गेंदबाजी कर रही हैं वो लगभग विकेटों के पास खड़ी रहती है और राउंड विकेट उनकी ये गेंदबाजी चल रही है। दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है। इस छोर से गेंद इस बार पुल कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पर फील्डर गेंद के ऊपर आ गए। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। इस 1 रन के 7 रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 पर। 8 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 8 रन बगैर किसी नुकसान के। तो दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन। इस छोर से गेंद हवा में खेल दिया, कैच हो सकता है लेकिन फिर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। एक और शानदार चौका।
थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शानदार चौके के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 और इस मैच में इस पारी में दूसरी पारी में अब तक पहले ओवर के समाप्ति पर 12 रन्स बना लिए गए। इक्वेशन आपको बता दे, बचे हुए 4 ओवर्स में 24 बॉल्स टू गो एंड 13 रन्स टू गेट। 13 रनों की दरकार है। जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाजों को अगर वो विकेट प्राप्त करना चाहती हैं और मैच में वापस आना चाहती हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे में इस छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज आ रही हैं और ड्राइव कर दिया गेंद को। 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया गया है। संप्रत आक्रमण पर है। इस छोर से वो बिल्कुल विकेटों के पास खड़ी रहती है और राउंड विकेट उनकी गेंदबाजी चलती हुई। ऐसे में क्या होगा? इस ओवर की ये गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, प्लेस नहीं कर पाए, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रन बगैर किसी नुकसान के आघात के। तो इस वक्त शेट्टी स्ट्राइकर्स जीत की ओर अग्रसर है। उनमें उनके ऊपर कोई ज्यादा दबाव नहीं दिखाई पड़ रहा हुआ। लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंद थी। 1 अतिरिक्त रन और खाते में, रन्स बढ़कर 15 पर पहुंच चुका है। 15 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 15 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी और 10 रनों की दरकार। हवा में उछाल दिया, वहां पर खिलाड़ी काफी डीप में खड़े हैं। इससे पहले कि वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दोनों बैट्समैन ने, युवतियों ने शानदार तरीके से दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया और कुल योग को बढ़ाकर उन्होंने पहुंचा दिया 16 पर। 16 विदाउट लॉस। स्ट्राइक रोटेट हो रहा है, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आसानी से रन्स बन रहे हैं और नतीजा ये निकल रहा है कि एस के सुपरनोवास के ऊपर ज्यादा दबाव दिखाई पड़ता हुआ। इस बार ये गेंद, इस गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेटकीपर से गेंद नहीं संभली गई और बैकअप कर रहे फील्डर ने गेंद को उठा लिया। रन्स अभी भी वहीं पर से रहे। राउंड विकेट। 1 और गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड पर बल्ले का निचला सिरा देकर गेंद को आड़े बल्ले से, हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेल दिया। 1 रन चुरा लिया है। हर 1 रन बहुत कीमती है। तो 1 रन के साथ रन अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर। धीरे धीरे जीत की और इस वक्त शेट्टी स्ट्राइकर्स अग्रसर हो चुके हैं। 1 और गेंद, इस बार दबाकर हल्के हाथ से गेंद को पुश पर कर दिया। बड़ी अच्छी योजना के साथ, बड़ी अच्छी तरकीब के साथ गेंद को पुश करते हुए 1 रन को नाक के नीचे से निकाला है और इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 2 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर इज ऑन 18 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 18 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी 3 ओवर शेष बचे हुए हैं। 18 balls to go, 7 runs to get। 7 रनों की दरकार। इस छोर से गेंद ड्राइव किया गेंद को और अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को उठा लिया। स्वाति स्ट्राइक एंड पर है। अक्षता गेंद को लेकर तैयार हो रही है। पहली गेंद डॉट में तब्दील हुई और फिर से अक्षता आक्रमण पर। उनकी यह गेंद ओवर द विकेट। स्वाति के लिए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, थोड़ा स्ट्रेच किया, फिर जाने दी। अंपायर ने इस गेंद को देखते हुए उन्होंने कहा कि वाइड है। 1 और अतिरिक्त रन, यानी कि अभी 6 रनों की दरकार है। तो धीरे धीरे इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाजों और फील्डरों के ऊपर। ऐसे में ये गेंद स्वाति के लिए फिर मिस कर गई गेंद को। इस बार फेयर डिलीवरी थी और विकेट कीपर गेंद को जी हां कलेक्ट नहीं कर पाए जब तक फील्डर, हालांकि रन नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। रन अभी भी वहीं पर से। 6 रनों की दरकार। रक्षता आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। विकेटों की तलाश को वो अंजाम देना चाहती हैं। एक आध विकेट अगर मिल जाए तो शायद कहीं ना कहीं रास्ता बनाया जा सकता है। ओवर विकेट। ये गेंद बीट कर गई। गेंद को स्ट्रेच करते हुए गेंद को स्वाति ने खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और अक्षता के पास गेंद दोबारा आ चुकी है। तो इस दिलचस्प मुकाबले को चारों ओर से दर्शक बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आखिर इस मैच में जीतेगा कौन? शेट्टी स्ट्राइकर्स ने बढ़त हासिल की है, वो इस वक्त जीत की ओर बढ़ रही हैं क्योंकि मजबूत पकड़, कोई विकेट उनका अभी नहीं गिरा है। ये गेंद, 1 और गेंद। अक्षता कमाल की गेंदबाजी कर रही है। 3 गेंदों को उन्होंने डॉट में तब्दील किया है। 4 गेंदें जिसमें रन नहीं बने और मुझे लगता है कि इस वक्त दबाव वो बनाने का प्रयास कर रही है और ऐसे में क्या स्वाति इस दबाव से हट पाएंगे? इस छोर से इस ओवर की 1 और गेंद योजनाबद्ध तरीके से अक्षता ओवर द विकेट।
इस गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में फिर से बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। आखिरी गेंद इस ओवर में शेष बचा हुआ है और अक्षता ने इस ओवर में कमाल ही कर दिखाया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी वो कर रही है और स्वाति लगभग 4-5 गेंदों में बिल्कुल गेंदों को डॉट में तब्दील करती हुई रन नहीं बना पा रही है। ऑन साइड पर आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंद को ड्राइव कर दिया, आड़े बल्ले से खेल दिया, 1 रन चुरा चुकी हैं। वहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को रोक लिया, हालांकि वो थोड़ा सा गिर गई लेकिन संभल कर उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 20 रन बगैर किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। 12 गेंदें शेष बची हैं, 5 रनों की दरकार है और इस वक्त एक चुनौती से गुजरना पड़ रहा है एसके सुपरनोवास को, क्योंकि 12 गेंदों में 5 रनों को रोकना निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल वाली बात होगी। ऐसे में किस गेंदबाज को इस वक्त आक्रमण पर लाया जाता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त ओवर शुरू होने वाला है। दीप्ति इस वक्त आक्रमण पर है। दीप्ति की यह गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर वाइड हो सकती है, जाने दिया बैट्समैन ने और अंपायर ने कहा कि वाइड है। 1 रन बना लिए गए हैं, हालांकि प्राप्त हो चुका है पुरस्कार के रूप में। 4 रनों की जरूरत है और ऐसे में दीप्ति फिर से आक्रमण पर। फ्लाइटेड गेंद, एक बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई, फिर लेग स्टंप के बाहर और बड़ी योजना के साथ अपने आप को क्रीज की दिशा में, स्टंप्स की दिशा में खींचकर इस गेंद को जाने दिया बैट्समैन ने और अंपायर ने कहा कि वाइड 2 रन वैसे भी प्राप्त हो चुका है। 3 रनों की दरकार और इस बार बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ लिया जा सकता है। 2 रनों की दरकार, 11 गेंदें शेष बची हैं। क्या दीप्ति अब कुछ अद्भुत, कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल कर सकती हैं? क्योंकि 11 गेंदों में 2 रनों को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस छोर पर शेट्टी स्ट्राइकर्स के जितने सारे खिलाड़ी आगे बैठी हुई हैं वो अब उठने की तैयारी में लगी हुई हैं। 1 रन पूरा कर लिया, तालियां हाथों को ऊपर करते हुए बजा रही हैं। वो जानती हैं कि अब सिर्फ 1 रन की जरूरत है, फिर वो मैदान की ओर दौड़कर चली जाएंगी जिस जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत शानदार खेल चलता हुआ, 1 रन की जरूरत है। इस छोर से दीप्ति की गेंद को ड्राइव किया, 1 रन को पूरा कर लिया। तो इस शानदार मैच को शेट्टी स्ट्राइकर्स ने बहुत शानदार तरीके से जीत लिया। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बस 1 मिनट डीजे से 1 मिनट लूंगा और इस मैच में शानदार जीत अर्जित करने के लिए शेट्टी स्ट्राइकर्स को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। जबकि एसके सुपरनोवास ने इस मैच में वो परास्त हो गए, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार का समय है और आप जानते हैं एक युवती ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और कमाल के 8 रन उन्होंने बनाए हैं और शानदार गेंदबाजी करते हुए कुछ विकेटों को भी प्राप्त किया, तो उनको यह प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा, एक ऐसी युवती जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, शेट्टी स्ट्राइकर की तरफ से स्वाति जी को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो तालियों से उनका अभिवादन करें। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वाति जी को जाता है और उस मंच पर जहां पर प्राइजेस जो कि दिए जाते हैं, जहां पर पुरस्कार दिए जाते हैं, वहां पर आयोजनकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि ये पुरस्कार को वो स्वाति जी को प्रदान करें। और इस वक्त नया ताजा मैच शुरू होने वाला है और ऐसे में
कैमरास में आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि युवतियों की उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि उन्होंने किस तरह से इस मैच को खेला, वो जीती। और इस वक्त शानदार खेल जो कि अपने योगदान के साथ वो भी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने भी अपना छोटा सा योगदान इस मैच में, इस श्रृंखला में दे दिया है। तो आइए नए ताजे मैच की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले के मैच शुरू, माइक्रोफोन पर आगे के विवरण के लिए दोबारा स्वरूप। Ajay bhai, hell hath no fury like a woman on a mission. The openers, Swati and Kishori, were on a mission to get their team across the line, and across the line they did. Much deserved victory, a dominating performance by deserved victors. The women in green made a statement today with their innings. Congratulations to Shetty Strikers. They won the toss, won hearts, and won the game as well. And we go ahead with the men's tournament as well now. Vicky Vikings and JK Eagles. I request the captains of both these teams to report to the comm box. Vicky Vikings and JK Eagles. I request the captains of both the teams to report to the comm box. Vicky Vikings ಹಾಗೂ JK Eagles ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನತ್ತ ಬರಬೇಕು. I request the captain of JK Eagles. I request the captain of JK Eagles to report to the comm box.
I request the extra player of Vikings to report to the com box. Extra player of the Vikings team to report to the com box. Shetty Strikers did take home the glory for the women's side, and it looks like the men's side as well have taken a leaf out of their book, because like Shetty Strikers, Vicky Vikings have won the toss and have decided to field first. It's been a strategy that has worked for most teams in this competition, and it's held them in good stead. This tried and tested method of winning the toss and choosing to field first in a limited over fixture is a modern day concept, because you never know what a good score is. You never know how the ball will behave, especially under the lights. We are at the ready here. It is going to be a power play. And what a start! What a belligerent start here! Magnificent start to the innings. Oh, there was a break in some entertainment, but we are up and ready. Karthik. He goes again, down the ground. Has he found the gap? I don't think he has. Almost beats the fielder there. Oh, it's not just shots, it's gunshots. 7 runs of the first 2. They're off in a hurry. White playing grey here. Aditya to Pratik. Good hit. This is looking good. But is it good enough? I don't think it is. Running back over the shoulder. One of the more difficult catches to take in the game of cricket. He's completed that with ease. A big breakthrough in the opening over. Aditya gets that breakthrough after being hammered down the ground. He's made that adjustment. He's learned quickly, has Aditya. Pulls his length back ever so slightly and gets that breakthrough. One of the openers back in the pavilion here. Early breakthrough, early wicket will put pressure on the batting side. The score's on 7. Slight delay there. They're waiting for the pitch to clear the playing area. Has to learn very quickly here. Does Aditya. But he has. He's shown to be a quick learner. Gets carted for a 6 and his comeback. Well, ever since that monstrous 6 over long off. Full and straight. No foot movement whatsoever. It's almost as if the batsman's feet is stuck in concrete at the moment. Got himself in all sort of tangles there. But a dot. Aditya, after that first sixer, has been economical. Can he get another wicket with the new ball? There is some moisture on the pitch because of the dew.
that will assist some spongy bonds for the bowler. But this time it's a full delivery. It's a full toss, in fact. A low full toss that is carted away on the onside for a single. The score is on 8. He needs to close out this over well. Does Aditya. Karthik Mudipu on strike. Strong, burly right-hander, powerful right-hander. Oh, that's pummeled! What a monster that is! A humongous 6-over mid-wicket to close out an expensive over. Not sure what he was for dinner, because that was hammered. Urgent. Would have been a 6 on any ground here in Dakshina Kannada. On the stumps, and he was punished away on the onside. 14 runs of the first over. They've lost a wicket, but not the momentum. Plenty of discussions there on the field, but they'll need performances on the ground. Discussions won't do. This is not a Zoom meeting. This is not corporate where just discussions happen and nothing gets done. That is the beauty of sport. Vaibhav, known for his in-swingers, not the tallest of bowlers. Short delivery, but down the leg side as well. Wrong line, wrong length at that point. 15 runs scored of the first over. Still 5 more to go. They're already looking down the barrel here at the fielding side. They need a comeback. This is short. This is hit away. Hits the cue end of the batsman. Gets the single away. Very lucky there is Vaibhav to get away with that loosener. But that won't fly. That won't fly against Karthik, who's 13 of 3. At the moment, it's in the air. It's in the air. This is an important wicket, and it's taken in the deep. Huge moment in the game. This is the breakthrough that they were looking for. Karthik is going back into the pavilion. Vaibhav, that right arm round the wicket angle. That right arm round the wicket angle. The ball will always grow across the right-hander. He had to cut down the angle and play across the line. And that was the plan all along. But now it's time for some fireworks. It is Captain Marvel, Omkar, the man with the golden bat, the pocket-sized dynamite who's lit this tournament up, is on strike. He single-handedly won games for his team, but can he do it on this big occasion? We are in the business end. This is shot. Tries to go for his favorite shot, the swivel pull. Doesn't get any of it. Gets off strike. The score at 17. .3 overs done. He's halfway through the over. So far, so good from Vaibhav. Against Govind. Short and wide. Manages to club it to the man at deep mid-wicket. Gets Omkar back on strike. It's going to be a difficult task for the bowlers to restrain, to retain a low scoring rate when Omkar is on strike. This is the big fish. He is the man who can take this bowling attack down. It's going to be an interesting and entertaining passage of play this. What is the strategy against Omkar? We've already seen he loves to play the pull shot. Will it be his demise? There is a trap set on the onside. Man at deep square leg is as deep as he possibly could be. 3 men on the onside. Right arm round. Oh, that's the idea. Make Omkar play through the offside. Ball not to his strengths. Ball to his weaknesses. Not that Omkar is a bad player on the offside, but we've not seen his range of shots like we have on the on. Bunts it down, gets that single, gets off strike. Clever batting this.
You need to have that instinct to know when to get off strike. After the completion of 2, the score is on 19. Run rate soaring at the moment with 9.50. 2 wickets down. It's number 3 and number 4. Govind and Omkar. Omkar wanted to keep the strike. Bunts it down, gets that single. But now he has a mission on his hands. Like I said, a one-man army, this guy. He doesn't just take down oppositions. He bludgeons them. He decimates bowling attacks. He retires bowlers. Does Omkar in this big stage. They need a victory. Everybody is begging and praying for a victory in this league phase. There he goes, down the ground, and he's taken easy. I think he has. I think he's taken an absolute stunner at long on. Omkar can't believe his luck. He's been dismissed by a beauty in the field. That is magic here at KS Hegde Stadium. He's plucked it out of thin air. He was running in, never an easy catch. That was hit with some power. And you can see Omkar, disappointment on his face, but it doesn't matter. It's all the fielders' wickets here. They have circled around that man who's probably turned the course of this game and possibly the tournament. Chaitanya, the new man in. Can he fill the big shoes of Omkar? It's a big void to fill, but someone needs to put their hand up. It cannot be one man. You cannot win tournaments on the back of one player. You need some heroes here in the middle order. Can Chaitanya be that guy? Like I said, this is a game where reputations are made on the legs, clipped away, it's in the air, taken! Another good running catch. They're taking all the half chances, they're taking all the stunners.
hands of the fielder at short square leg. End of the third. The score is on 21 after 3. Run rate exactly at 7.
so important to access those 2D areas when you're not getting those big boundaries. But Govind looking set. Can he get that big boundary? He's trying to connect that big A. Doesn't get any of it. Some appeal there from the fielders. Not sure what that was. Maybe appealing that it didn't hit the batsman's bat. But runs given by the umpire. The crossover. The score is on 37. The score's on 37. We are in the fifth. Roshan yet to make a mark. Yet to make a mark in this innings. Might be his last chance as well in the tournament. Down the ground. I think it's clear. The men inside the inner circle on the offside. A glorious cover drive. Beats everybody in the inner circle. Take four. Collect four. A gorgeous looking shot on the up. Takes the aerial route and gets the reward. Does Roshan. He was in the backseat all this while. But suddenly, in the defining moments of this innings, he's come into his own. The score goes past 40 with 41 runs scored of the 5 overs. Run rate 8.20 at the moment. The middle order, the engine room of any team is working quite well. Is working quite well for the batting side at the moment. JK Eagles soaring at the moment, like the Eagles that they are. Some appeal there. White says the umpire, and 3 runs conceded. Oh, it looks like Diwali has come early because 3 runs have been gifted away to the opposition. The name of the bowler, please. Oh, that was a long hop. That was asking to be punished there, but it's beaten everybody. Dr. Murali Shankar with the ball. It was a half-track pie, but the batsman doesn't make good enough contact. Two runs taken off. The score's on 46. Murali, the man with the ball. This time a dipping Yorker. Batsman only can get a cue, and they're thinking about a second. Danger and is the striker's end. Chance of a run out. The wicket keeper fumbles. Definite chance there. All the wicket keeper needed to do was collect the ball and dislodge the bails, but is not managed to do that. Simple of tasks. You need to do the basics right in a pressure game such as this. Murali will be disappointed. Additional run conceded. A moon ball beaten in the air. Some appeal there and an overthrow. And an overthrow. Needless, careless, reckless from the fielding side. And a wide as well. Insult to injury. 1+1. The score moves on to 50. Half century for the batting side. Eagles have done a brilliant job in taking that score to 50 at the moment. 4 balls still remaining. Run rate almost touching 10. This could be one of the higher totals under lights in this tournament. Very difficult to chase under lights with the scoreboard pressure, of course. Down the track, dances down to the man at long on. Keeps it down to a single. Roshan gets the strike back to Govind, who's hit some lusty blows. Cleaned him up. That's the delivery. Knocks him over. The batsman is castled. Govind expecting a shot. When I walk in the spot, this is what I see. Govind, he was going like the wind at one point, but got stuck
in his innings has to make his way back to the pavilion. It's Murali who balled that pitch. Full delivery. The ball just spinning back into the wicketkeeper's hands. Plenty of running, plenty of falling. And the finger has gone up. The dreaded finger has gone up, pointing towards the heavens. Another wicket falls. But more importantly, it's a dot delivery in the final over. The score remains on 51. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Will this ball be the defining delivery and the difference between the two sides? Oh, dances down the track, doesn't bother coming back, and after all that hue and cry, it results in a wicket of the final ball.
लक्ष्य 52 रनों का। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला विकी वाइकिंग्स का, और जेके ईगल्स ने कमाल की बल्लेबाजी की और शानदार बल्लेबाजी की बदौलत वो 51 रनों को बटोर पाए। इस छोर से दूसरी गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को उछाल दिया, कैच होगा, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच के साथ ही पहला झटका लगा। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले विकेट का पतन और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। और विकेट एक और गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया और इससे पहले कि फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर, हालांकि पहला रन जो कि बना है, माफ कीजिएगा, विकी वाइकिंग्स के कैप्टन से अनुरोध है कि अपना 12th मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेजें। विकी वाइकिंग्स के 12th मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स में आइएगा प्लीज। इस ओवर की ये गेंद और द विकेट, और ऑन साइड की दिशा में गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया, फील्डर गेंद को रोकने में लगे हुए, लेकिन गेंद जा चुकी है उस डिक्लेयर एरिया में और अंपायर ने संकेत किया कि 2 रन जोड़ लिए जाएंगे खाते में घोषित एरिया में। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 3 पर पहुंच चुका है। अंपायर से अनुरोध है थोड़ा सा खेल को रोकें प्लीज, थोड़ा सा खेल को स्टॉप करें। 12th मैन एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में कंपलसरी चाहिए, बार बार बताया गया है। आपको पता है बगल में स्कोरर बैठा हुआ है, उसको बहुत दिक्कत होती है और इस वजह से बार बार आपको बताना पड़ रहा है कि अपना 12th मैन ओके, ऑलराइट, थैंक यू, आ चुका है। तो सहयोग करें कृपया। इस छोर पर आक्रमण पर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, दूर वाले छोर से उनकी गेंद ओवर द विकेट और मुरली शंकर भटकी के लिए उन्होंने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ पुल कर दिया डिक्लेयर एरिया में। 2 रन खाते में और जोड़ लिए जाएंगे। तो गोविंद की ये गेंद, और मुझे लगता है कि डीजे अब थोड़ा सा थक गए हैं, जबरदस्त स्ट्रोक लग रहा है, उनको याद दिलाते हैं कि उनको अब शानदार धुन को बजाना है चौके छक्के और विकेट पर। मुरली शंकर का ये स्ट्रोक बहुत खूबसूरती से भरा हुआ, जबकि गेंद को जज करते हैं, बहुत जल्दी साइड करते हैं, उसके अनुरूप स्ट्रोक में परिवर्तन करते हैं। इस बार हवा में उछाल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 और उस कमाल के स्ट्रोक के साथ ही पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 11 बगैर किसी नुकसान के और एक विकेट गिर चुका है, माफ कीजिएगा। तो दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए विपुल इस छोर पर आक्रमण पर आ रहे हैं और नवनीत इस वक्त स्ट्राइक एंड पर
और ये पैर मुझे लगता है कि बहुत असरकारक हो सकता है। जाते जाते जिस तरह स्वरूप ने कहा कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसका पीछा करना कितना होगा नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये पैर अगर चल गया, हालांकि सक्षम बल्लेबाज हैं, सक्षम बल्लेबाजी का क्रम है विकी वाइकिंग्स के पास में, लेकिन क्या उन बल्लेबाजों को अवसर मिलेगा? गेंदबाज इस प्रयास में, विकेटों के प्रयास में इस वक्त शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं रन बह गए और 11 रन जो कि पहले ओवर में बना लिए गए। दूसरे ओवर की पहली गेंद हल्के हाथ से गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश कर दिया बल्लेबाज ने, रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। रन अभी भी 11 पर स्थिर है। शानदार मौसम है, दर्शकों की तादाद बढ़ चुकी है। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ पंच किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में फील्डर के हाथ से छूट गई, लेकिन दूसरे फील्डर ने गेंद को कवर कर लिया। 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब 12 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुरली कृष्णा भट्ट जब तक क्रीज पर रहेंगे निश्चित तौर पर वो भरपूर प्रयास करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे अपने टीम को जीत दिलाने के लिए। उनका ये प्रयास इस वक्त ऑन दी अप गेंद को उछालना चाहते थे, लेकिन बीट हो गए, गेंद बहुत दूर रह गई। बहुत बड़े स्विंग के साथ उन्होंने गेंद को उछालने का प्रयास किया था, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करते हुए फिर से गेंदबाज को सौंप दिया है। राउंड विकेट, शॉट ऑफ लेंथ थी, फिर से उछाल दिया, इस बार कैच होगा और फील्डर ने वहां पर गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया है। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट।
for the loss of 4 wickets. 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं. राउंड विकेट ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे गेंद को, और गेंद फील्डर की दिशा में 1 रन लेने का अवसर बल्लेबाज के पास. तो 25 रन बना लिए गए. एक और गेंद इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर गए और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा जल्दी से नीचे आई और रनआउट का मौका बनेगा. बहुत आसान मौका हो सकता है, और लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया. बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए बल्लेबाज सुरक्षित तरीके से, और जोखिम भरा रन उन्होंने पूरा कर लिया. इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 पर. 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. तो आइए अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कि वो टॉस के लिए कृपया आए. बाईपास ब्रिगेड्स और ब्लैक मांबास दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आए. वो इस छोर से गेंद है, गेंद को खेलने का प्रयास, और 1 रन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है. तो टॉस फेंका जा रहा है इस वक्त अगले मैच के लिए. बाईपास ब्रिगेड्स और ब्लैक मांबास के बीच में यह मुकाबला. टॉस हो चुका है. तो ब्रिगेड्स बाईपास के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला है. तो आने वाला मैच एक और जबरदस्त मैच हो सकता है, और ऐसे में इस मैच की ये गेंद इस वक्त, और गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में लॉफ्टेड ड्राइव था, खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक. फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं. 1 रन पूरा कर लिया गया. इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ. कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर इज ऑन 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. डीजे तो एक खिलाड़ी को मुझे लगता है कि अब अंदर दायरे के अंदर रखा जाएगा, और ऐसे में बैटिंग पावर प्ले का संकेत उन्होंने किया. माफ कीजिएगा, टाइम आउट नहीं है. टाइम आउट नहीं है, बिल्कुल समय की कोई पाबंदी यहां पर नहीं बनाई गई है. तो बल्लेबाजी ने इस वक्त अंपायर ने संकेत किया कि पावर प्ले लिया जा रहा है. ऐसे में तो फील्डर्स जो कि पोजीशन लेकर तैयार हो रहे हैं, और नियम के अनुसार पोजीशन बनाकर दायरे के अंदर ज्यादा खिलाड़ी जो कि इस वक्त एक चक्रव्यूह बनाकर तैयार हो रहे हैं. क्या होगा? चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है. आक्रमण पर इस छोर से श्रवण आ रहे हैं, और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त उनके सामने बल्लेबाजी के लिए नवनीत तैयार हो रहे हैं. श्रवण की गेंद नवनीत को. समय इस वक्त रात के 10:45. आकाश अंधेरों में डूबा हुआ और फ्लडलाइट की रोशनी झिलमिला रही है. इस छोर से यह गेंद ओवर द विकेट. इस बार बैकफुट पर जाकर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को किया था. बल्ले को चूम कर गेंद विकेट कीपर के हथेलियों में जाकर समा गई. एक और विकेट का पतन. What's up, my gang? Welcome to Hood. Pune chirp karna table on the road. Mego gangs and their amnesia reveal chirba you. Every young watch the hood will have you all on the board. What's up, my gang? Welcome to Hood. Pune chirp karna table on the road. Mego gangs and their amnesia reveal chirba you. Every young watch the hood will have you all on the board. उनके वालों के कॉल करे मेरे मेरे डूड. तेरे की बात पहले रैप में मैं क्रू. मैं हो जिसके प्लेलिस्ट में पहले से हूँ. तो जड़ा मेरी चूड़े रखी गिनती में तू. वो कलाई से जैसे वैसा से
तो इस चोट से एक और गेंद को लेकर गेंदबाज फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को उछाल दिया, कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस बार बीमर हो सकती है, ऐसा कोई संकेत अंपायर ने नहीं किया। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में और ये शानदार 4 रन। दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान, इसे है समझाना। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चोट से एक और गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया, लेकिन स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना पाए और फील्डर जो दायरे के अंदर, लेकिन नहीं बनी बात, रनआउट का मौका बनेगा और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। डीजे थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां पर फ्री हिट का अवसर हो सकता था वहां पर रनआउट के रूप में एक तो करुणा का स्ट्राइक एंड पर बता दें आपको गेंदें कितनी बची हुई हैं। इक्वेशन 10 रनों की दरकार, एक और रन बटोर लिया गया, 9 रनों की दरकार है जबकि गेंदें बची हुई 10। 10 बॉल्स टू गो, 9 रन्स टू गेट और हर गेंद पर रन बनाने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों का चल रहा है और इस बार हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया, रनआउट का मौका, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो है और अंपायर क्या इस अपील को स्वीकार करेंगे? उन्होंने तीसरे अंपायर की दिशा में संकेत किया कि वो तीसरे अंपायर इस वक्त देखकर बताएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू। और अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 गेंदें शेष बची हैं, 9 रनों की दरकार है। विकेट की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 8 पर, मैं अगर गलत ना हूं 8 विकेट गिर चुके हैं। इस बीच ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। इस ओवर के ये गेंद हवा में गेंद को खेल दिया, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ जी हाँ कुल योग बढ़ चुका है। जबकि अब आपको इक्वेशन बता दें, सात गेंदें शेष बची हैं, 8 रनों की दरकार है। राउंड विकेट इस छोर से ये गेंद, और हल्के हाथ से गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया, 1 रन चुरा लिया दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने। हर गेंद पर रनों को बनाने का प्रयास, रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और कौन जीतकर आगे बढ़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। ओवर समाप्त हो चुका है, तो कुल मिलाकर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 45 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, यानी कि आखिरी 6 गेंदों में रनों की दरकार है। 7 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 7 रन्स टू गेट इन 6 बॉल्स। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमकार इस वक्त आक्रमण पर आ रहे हैं, 6 गेंदों में 7 रनों की दरकार। ये गेंद ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, 1 रन चुरा चुके, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। तेजी के साथ दौड़कर उन्होंने पूरा कर लिया 1 रन को, जबकि अब 6 रनों की दरकार है। 5 गेंदें शेष बची हैं। 5 balls to go and 6 runs to get। रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ, एक छोर पर अनुष है, दूसरे छोर पर करुणाकर इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है। अनुष नॉन स्ट्राइक एंड पर है, करुणाकर स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए, और इस छोर से इस ओवर की ये गेंद बैट्समैन तैयार हुए, इस बार उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद हवा के रास्ते जा रही है, फील्डर वहां पर आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया है। बा कमाल कैच है, अनोखा अद्भुत कैच कहा जा सकता है, शानदार कैच हो सकता है, लेकिन क्या अंपायर इसको देखना चाहेंगे? बाउंड्री लाइन पर वो खड़े थे और अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। डीजे कुछ नहीं मारता बेटी
एक विकेट यानी कि आखिरी विकेट इस वक्त क्रीज पर है। ओमकार ने कहां पर इस गेंद को कर दिया और आखिरकार अब 4 गेंदों में 3 रनों की दरकार, परिस्थितियां बदल गई। और 2 विकेट ये गेंद, इस बार गेंद को दबाकर खेल दिया, 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर रहे हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हो चुका है, लेकिन 2 रनों को पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। शानदार रनिंग है और मुझे लगता है कि अब विकी वाइकिंग्स के जितने सारे चाहने वाले हैं उनमें उत्साह जाग गया है। वो जानते हैं कि 1 रन से वो मैच को जीत सकते हैं। 3 गेंदें शेष बची हुई हैं, 1 रन की दरकार है। और ओमकार जिन्होंने इस श्रृंखला में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और बहुत अच्छे गेंदबाज भी माने जाते हैं, उनके ओवर में ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि परिस्थितियां बदल गई। इस छोर से ये गेंद, इस बार गेंद को धीरे से खेल दिया, 1 रन तेज कदमों के साथ दौड़कर पूरा करने का प्रयास। और इसको देखते हुए अंपायर ने तीसरे अंपायर की दिशा में संकेत किया और तीसरा अंपायर इस वक्त देखकर बताएगा कि आखिर क्या बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए या नहीं। बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। लेग बाइज नहीं है तो इस रन को रद्द कर दिया गया है, अंपायर ने, तीसरे अंपायर ने बता दिया है। और ऐसे में डॉट बॉल में डॉट गेंद तब्दील हो चुकी है। थोड़ा सा खेल को रोकिएगा प्लीज, थोड़ा सा खेल को रोकिए। अभी फ्लड लाइट्स को जलना जरूरी है दूर छोर पर, उस खंबे पर, मंच पर जो कि फ्लड लाइट्स लगाए गए हैं। तो अंपायर ने खेल शुरू करने का संकेत किया। 2 गेंदें शेष बची, 1 रन की दरकार है। इस बार गेंद को खेलने का प्रयास बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। अब आखिरी गेंद पर आकर खेल रुका हुआ है। रोमांच है नहीं, क्या कहा जा सकता है। जबरदस्त संघर्ष इस वक्त, 1 रन की दरकार है इस वक्त। विकी वाइकिंग्स को चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और ओमकार गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। 1 गेंद में 1 रन की दरकार। वो विकेट ये गेंद थी और शायद लेग स्टंप के बाहर हो सकती है। अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड, और इसी के साथ ही इस मैच को विकी वाइकिंग्स से शानदार तरीके से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई।
किया जा रहा है, तो पोडियम में वो आ रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि वहां पर इस पुरस्कार को उनको प्रदान करें। थोड़ा सा ध्यान दें। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार नवनीत को दिया जाता है उनके शानदार प्रदर्शन के लिए, तो उनको ये पुरस्कार आयोजनकर्ताओं की तरफ से दें। बहुत बहुत धन्यवाद। I request the 12th man of both the competing sides, bypass brigades and the black mambas, 12th men of black mambas and bypass brigades to kindly report to the comm box. Earlier today, bypass brigades have won the toss and have decided obviously to field first. What a game. What a humdinger we had in the previous contest. You didn't need a stethoscope to measure the heartbeat in and around the stadium. It was a close encounter. We are hoping that the final game is also a close call. I request all the players who are at the left of the comm box to kindly take their seats. Anup to Rahul. Starts off with the wide there, trying to get outside the batsman's arc. As I was saying, we are in the final chapter of this league phase. You can see the calculators are out. The fielders, the players are at the edge of the seats and the pressure is sky high. There are teams that are going for glory and the others will play party poopers to someone else because they can knock out a potential challenger here. Black Mambas undefeated in this tournament so far. They've been the invincibles. Will they see the sight of defeat in this contest? Right arm over the wicket. Anup has been sensational with the new ball. This is full. This is straight. Everybody going up. The umpire is unmoved on that occasion. Drivable ball that doesn't get his foot to the pitch of the ball to stroke it through the offside. No protection on the in that region. Ring of fielders on the leg. Anup. Quite brilliant this man has been. Full delivery on the legs. He puts it away in spectacular fashion. No, you cannot ball there to an Indian batsman. On the legs, it's a freebie. And the batsman takes full toll, gets that boundary, does Rahul. Anup has been extraordinary with the new ball. Economical, effective, incisive. Thought it was a half volley, but not to be. Pitches in front of the batsman, doesn't get under it. Hit straight to the man at short extra cover. You see the statistics in this tournament. Teams that have chased have won more games than the teams that have batted first. Probably that statistic forcing the captain to make that decision just chips it over the infield. The intention always to get that brace.
Gets a couple of runs, stylishly played. Rahul looking good for a big one here. Desperate for a victory. Our bypass brigade. Oh, beautiful. A gorgeous looking cover drive pierces the field. Beauty personified. The weight going on the front foot. The epitome of class. The epitome of timing. Beautiful. Absolutely ravishing that shot. Gets the boundary he was looking for, and such a gorgeous looking stroke as well. This time plays it on the offside, finds the gap, gets a couple of runs in the end. It's an expensive over. 14 runs coming off it, end of the first, and they've started very, very well here, the Black Mambas. Not for nothing are they topping the table. Not for nothing have they been undefeated. The brand of cricket that they're playing, the aggression that the openers are showing. There will be a short break after this first over. A prize distribution for the women's winners and runners will be held. So players kindly cooperate. I request both the women team to assemble in front of the dais. I request Dr. Rashmi and Dr. Joylin to come to the dais to do the honors. I request Dr. Karunakar Shetty to escort the guests to the dais. I request the runners-up captain, Dr. Siri, to come along with the teammates to receive the medals from Dr. Rashmi and Dr. Joylin. Siri, please. All follow her. MSB. I request Dr. Rashmi and Dr. Joylin to hand over the trophy to the runners-up captain and to their teammates, owner and to the captain and the teammates. ದೀಪ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಜನ ಈ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಹಾಗೆ Next, the winners. I request the winners team owner, Dr. Sukanya Shetty, to come along with her captain to take away the medals. Please follow Sukanya madam. Captain Kishori and her teammates to come.
I request Dr. Rashmi and Dr. Joylin to hand over the winner's trophy to the owner, Dr. Sukanya Shetty and Dr. Kishori. Please. A cash prize of 1,000 will be given to the man of the match. Any guesses? This is sponsored by Dr. Lakshmi Manjira. And guess, what was the guess? Okay, we'll give it to Swati. I request Dr. Joylin to hand over the cash prize and the trophy to Swati. Congratulations to both the winners and runners and to the man of the match. I thank Dr. Rashmi and Dr. Joylin for doing the honors. And thanks Dr. Karunakar Shetty to doing this event. Thank you so much. Thank you Rajesh Anna for doing this honors. We are back live here. I request the on-field officials to get going, get the ball rolling, literally. 14 runs scored off the first over. 5 more to go. Aggressive start, a quick start here from Rahul, who scored all of those 14 runs. Dilip has been a spectator at the non-strikers end. So important to be an aggressive opener. Takes me back to the 1996 World Cup, where Sanath Jayasuriya and Romesh Kaluvitarna set the tournament alight with their blistering stroke play in the power play. Really were the talisman in getting Sri Lanka to win that title in 1996. In fact, Sanath Jayasuriya was the man of the series, the player of the tournament in that World Cup. Even though there were 14 other players who had scored more than him. Sachin Tendulkar was the highest scorer in that tournament, scored twice the amount of runs as Jayasuriya, but Jayasuriya's impact was really something that sealed the deal for Sri Lanka in winning that tournament. But back live, hammered, downtown, down the ground, but taken! Not enough, needed a bit more, a game of inches. A game of inches, a game of destiny. This game of cricket needed the wind gods to be by his side to take that ball over the top, but not to be. How many times have we seen in this game that a long break disturbs the concentration of the batsman, disturbs the rhythm that the batsman is in, and ultimately they throw their wicket away as Dilip hit deep, but just couldn't clear the man at long off. New man in. Full ball, tries to stylishly run it down wide, and a couple of runs as well. Oh, that's terrible bowling. Terrible bowling, not the delivery that the captain has set the field for. Concedes 3 runs in the form of extras. The score is on 17. Right arm over. Down the ground, straight to the man at short extra. You can see that the bowler really leaped across the outfield there just to get his arms out and collect the ball, but not to be, but no harm, no foul. Another dot delivery here. Very important for the new man to get going from the batting team's perspective. Black Mamba
They've been very good right throughout the tournament. Shot, wide slashes. Wicket at deep point. Gets that boundary. Asking for punishment on that occasion. Enough time for the batsman to rock back on the back foot and pummel it over the point region. Hari Prasad gets that boundary, got that scissors out in the previous ball, plays that cut shot very, very well. We've seen that throughout this tournament. Bit of room on offer and takes full toll. Shivu, economical in this tournament. Oh, beaten comprehensively as well. Kisses the outside edge, goes towards the deep third man region for a couple of runs. The score is on 24. We're still in the second, mind you. It's already a good total. Black Mambas have beaten their opposition black and blue in this tournament. Full delivery. Full delivery. A rare dot. A rare dot here. He's getting through his overs rather quickly, is Shivu. Wild swing across the line. Beaten all ends up on that occasion. End of the second, the score's on 24. The current run rate healthy at 12. They'll need to set an above par total here, because we've seen time and again that the chasing team often has an advantage because they can use their resources optimally. 24 of the first two. Siral, third over to Rahul on strike. Yes, this is a batting power play. They've taken that. This could be the decider, not just for the teams playing. It's also very important for the teams that are not playing in this contest. They'll have a keen eye on this match because this could potentially change their fortunes as well. Only 2 spots left up for grabs here to enter the grand finale. Black Mambas, team to beat in this tourney so far, unbeaten. Oh, that's in the air. It will be a wide, yes. Plenty of extras. Plenty of extras. Not the most disciplined bowling effort here. Spraying the ball here and there at the moment. They need a more disciplined approach if they have to make a mockery of this, but he's played that on the outside. A sensational pickup shot. What a hit that is. Uses those supple wrists. Rahul must be very popular with the ladies, this man, because his pickup game is on point. On the legs, uses the pace of the bowler and gets that boundary in the power play. He's looking good, isn't he, Rahul? On the legs. Very quick on the legs. Right arm over. This is a full delivery. Goes for the pull. And they steal a single. They steal a single. They're leaking runs at the moment. Oh, wide +1 it seems. There is some discussion out there in the middle. Some discussion out there with the umpires as well. Remember, we have free and fair umpires here.
The umpire's decision is final. No arguments, doubts, or opinions will go beyond the decision of the umpire at any point of time in this tournament. Our decision is changed. It is going to be a no ball, which is worse for the fielding side. Somehow, when you thought things can't get worse, it has. Wide was changed to a no ball. Was that declared? Did that hit the wall? I request the umpire to clarify. Was that no ball +1 or 2? Is that a 2D? Yes, it is a 2D. Yes, it's 3 runs added once again. Score is on 34. Siral, very expensive. Beautifully played. Expert square cut. Gets the gap on the offside. Good effort. No, it isn't. It looked good for a moment, but the ball never left the fielder's arms as disaster strikes another boundary. Oh, it's free flowing at the moment. It's all you can eat buffet bowling, you can say. Freebies left, right, and center. Brilliant shot. Brilliant shot. You don't have to go aerial if you can get those caps. And this is the precision of a surgeon at the moment. Shot wide, slashes. Behind point this time. He's playing with the field at the moment. All that effort for a couple of runs. All that effort for a couple of runs. The score is on. The score is on 40. Siral really needs to tighten the screws here. Maybe too little, too late at the moment. Played on the onside, stylishly whipped away. Those wrists of Indian players, right from Gundappa Vishwanath from Karnataka, then came Azharuddin, then came VVS Lakshman. South Indians and their wrist work are unmatched in the game of cricket. And we've seen that on display in this tournament as well. Oh, that's big! Massive Goliath hit over mid-wicket! Can you believe it? That was a biggie! On a leg! Off the blade, but still a couple of runs taken. The score. He's on 49. They're a touching distance from 50. They're going at 5G speed at the moment. They're getting those boundaries, stealing those singles. Impressive. Impressive batting display this from the top order. 3 overs, 49 the score. Current run rate 16.33. They've lost only the 1 wicket. Oh, this is a batting heavy lineup. Black Mambas, they're showing us why they're the most feared team in this tournament. Hard hitting batsmen right at the top. All right-handers. Like I was saying, maybe too much importance is given to a left-hander being included in the batting order, because it's all righties. Black Mambas batsmen have done well with an all right-handed batting order. Rahul, technique superb so far in this innings. Full delivery, driven handsomely, beats the man in the inner circle. Will keep it to a single. Jersey number 18. That's half century, Black Mambas. You're on a roll. You can hear the roar around the ground. We are in the 4th over and they've already crossed the 50-run mark. That's one mental block that the fielding team needs to pass here. Down the leg side. Insult to injury.
Hari Prasad has got a lot of time on his hands, this man. Plays the paddle, gets the gap. Has he found the fence? No, he hasn't. Thinking of a second will remain a thought. Hari Prasad, even though he's got Hari in his name, waits for the ball to come to him. And then plays his shots. Such is the timing, such is the elegance, such is the grace of that man who's been in scintillating touch right from the beginning of the tournament. Right arm over to Rahul. Oh, slashes. Hits the splice of the bat. Gets that single away. What a partnership this is. This partnership has lasted longer than most Gen Z relationships. They've taken the singles, they've got the boundaries. They seem to be enjoying themselves at the moment. Right arm over to the right-hander. Goes for the wild swing. Uncharacteristic shot from Hari Prasad. Will result in a rare dot ball. A dot ball that's come after quite a while. Hari Prasad will be looking to get that elusive sixer in the over. It's been a pretty economical over given where we are in this game. Full delivery. Goes for the slog. Swings and misses it completely. Anup Hegde has been a revelation. Has been a revelation with the new ball, with the old. Has restricted the opposition to paltry totals. This time changes his length. Deceives the batsman. And an end to a spectacular over where he's really put a cap on the scoring there. The score is on 53 after 4 overs. Can you believe it? There are still 12 deliveries left in the innings. This innings seems to have started a long time ago because the fielders were busy fetching the ball from the fence. The ball was traveling all over the ground. So it seems longer than it actually was. New over. New baller, Satosh, whipped on the offside. There is protection. Gets that single away. Satosh. He's bowling against set batters here. A single run is a victory, a moral victory for the fielding team. This is huge. A marvelous shot. It's gone all the way. He's taken the baller downtown. He's taken the ball out of the playing area. Satosh, I know his name means happy, but he'll not be very happy with the half volley, a juicy half volley that he bowled in the previous ball, and that is showing now. The pressure is showing on the bowler. Down the leg side, a wide declared by the umpire. Right arm over, Hari Prasad again goes downtown. Gets that single away, comes to the non-striker's end. Oh, this is a batting exhibition here. What a partnership this is. Rahul on 30, Hari Prasad on 23. They're reaping havoc. They're piling on the misery. With that exquisite cover drive. Gets that single away. They managed to get boundaries of every other over. Pedal to the metal at the moment. Their approach aggressive. Their intent obvious. Oh, this is huge! Into the night sky, over the fence, one of the biggest of the night. Never stop the fucking race. An astonishing shot from an incredible talent. Rahul, once again, he goes again. Has he cleared it? I think he has. Oh, three fielders converging for a shot that came out of a gun. It's not a bat at the moment. It's a runway that is sending the ball across the fence. Every ball making a thunderous sound as it hits timber at the 22 yards. The score
is touching 70. It is 70. It is a huge total already under the lights. Can you imagine the power? Can you imagine the skill required to get to a total like this? Oh, once again, he goes again. This could be the biggest of the night. It is. Never stop the fucking rave. Not a cloud in the sky, but it's raining sixes here at KS Segre Cricket Stadium. He's making the bat do the talking. Oh, this time he's disappointed. He picked the slower ball, but got through the swing a little bit too early. He's decimating, destroying this bowling attack. I tell you what, a couple of bowlers might retire of this after this innings. Such has been the domination of these two brothers in destruction. Pulled away on the onside. It doesn't matter. It doesn't matter who is striking. There is surgeon at one end and a butcher at the other. The ball is just traveling to all parts. It's on a one-way ticket across the fence. Rahul striking. He's on 37. 3 balls remaining in the innings. There he goes! One too many times. Down the ground. That is the shot of an emperor. Straight bat, didn't try to hit it too hard. Uses the long handle and away she goes. Opens the face this time. Gets 8 runs of the last 2 balls. Another delivery remaining in the innings. The score is on 85. Score is on 85. Can they hit 90? That is the only question. That is the only uncertainty here. What is certain is that these two batsmen have taken the ballers to the cleaners. And he finishes it off in style as well. Straight to the man though. And this is a legendary innings here in this tournament. The best partnership that you are likely to see. I tell you what, there should be marriage counselors giving talks on how to maintain a partnership between these two. Sensational, scintillating, stupendous batting performance as the score will finish on 85 after 6 overs. 86, I beg your pardon. I'm losing it. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. The bigger they are, the harder they fall. These bigger than boys are diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like the world. I'm sick of living oil spills. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, You can always tell that it's getting late when the DJ is in a hurry. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night.
Everybody put your hands in the air. Get up, what's up, suckers? It's been 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend and evening, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good. What I thought Is the writing on the wall. Black Mambas posting an imposing, a daunting 86 runs. It's in the realm of the improbable, but is it impossible, Ajay Bhai? Have they been buried under a mountain of runs? Is this game over in the first innings? We've seen big totals being chased, but this is not just big. This is a massive challenge to the batting side. Will they come out on top, or will this game be decided? Has already been decided in the first innings, Ajay Bhai. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप। बहुत संघर्षपूर्ण मैच होगी, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और मुझे याद है स्वरूप, पिछले 2 मैचेस में इसी तरह से आपने मुझसे कहा था कि क्या ये बड़ा टोटल चेस किया जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अनिश्चितताओं का खेल है। पिछले 2 मैचेस में आपको देखने को मिला कि किस तरह से जबरदस्त रनों का पीछा किया गया है। और इस बीच दोनों बैट्समैन मैदान पर पहुंच चुके हैं। बाईपास ब्रिगेड्स जो कि इस वक्त 87 रनों का पीछा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाईपास ब्रिगेड्स 87 रनों का पीछा करने के लिए तैयार। दोनों बैट्समैन पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बल्लेबाज शिबू तैयार है। नॉन स्ट्राइक एंड पर संतोष है और गेंदबाजी का जिम्मा इस छोर पर हरिप्रसाद पर। हरिप्रसाद ने आज बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है और स्वरूप आखिरकार इतना जोश में आ गए। आइए इस गेंद पर आते हैं। इस बार गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ हवा में उछाल दिया। फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाए। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिप्रसाद ने अपने पारी में 34 रनों को बटोरा। इस छोर से उनकी गेंद ओवर द विकेट और शिवों के लिए गेंद थी। इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में उछालने का प्रयास किया। बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई डिक्लेयर एरिया में। हालांकि विकेट कीपर के पास मौका था कि वो इस गेंद को कैच करें, लेकिन उनके बाईं ओर गेंद गई और उन्होंने प्रयास किया। गेंद जाकर लुढ़क कर उस दीवार से टकराई जहां पर घोषित एरिया है। 2 रनों के साथ कुल योग बढ़कर 8 पर पहुंच चुका है। और हरिप्रसाद गेंद को लेकर दोबारा तैयार। उनकी गेंद शो के लिए इस बार बहुत खूबसूरत सो गया। शानदार कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। कोई मौका नहीं, ये 4 रन। Let's do it. Let's drink it. Let's do it. I want to hear you sing. Let's drink it. Let's do it. Let's drink it. Let's do it. Let's drink it. Let's do it. Let's do it. थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। शिवू अपने बल्ले की धार को कर चुके हैं। वो जानते हैं कि शुरुआत में ही अगर डोमिनेट नहीं किया गया तो इस रनों की चट्टान को चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से शुरुआत में वो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। हरिप्रसाद ने जो बल्लेबाजी में किया, हालांकि उसके विपरीत वो गेंदबाजी में थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। दूर वाले छोर से उनकी गेंद शिवू के लिए। इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट किया गेंद को, बल्ले को, जी हाँ, बल्ले को चलाने का प्रयास, लेकिन मिस कर गए। अंपायर ने कहा कि दिशा से बाहर गई है गेंद। 1 रन अतिरिक्त के खाते में जोड़ लिए जाएंगे। कुल मिलाकर रन इस वक्त
13 पर पहुंच चुका है, 13 विदाउट लूजिंग एनी विकेट, जबकि आक्रमण पर दोबारा तैयार। और विकेट ये गेंद शिवो के लिए ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा वो गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद टप्पा खाकर रुक कर आई, बाउंस को कवर करने का उनका प्रयास किया था और अंतिम क्षणों में उन्होंने गेंद को आड़े बल्ले से घुमाकर खेल दिया मिड ऑन क्षेत्र में, दायरे के अंदर। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। हरिप्रसाद आक्रमण पर दूर वाले छोर से वो विकेट, उनकी एक और गेंद इस बार उछालने का प्रयास ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग होकर निकल गई। अंपायर ने फिर से कहा कि वाइड है। तो इस वक्त हरिप्रसाद रनों में रन ज्यादा दे रहे हैं, खर्चीले साबित है वो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गेंदें उनके नियंत्रण में नहीं आ रही हैं, दिशाहीन गेंदें जा रही हैं, जिसकी वजह से रन अच्छे खासे बन रहे हैं। कुल मिलाकर 14 रन अब तक वो खर्च कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या होगा? शिवो स्ट्राइक एंड पर वो तो विकेट, ये गेंद शिवो के लिए ड्राइव कर दिया, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा शिवो को। वो उन्होंने अपने आप को वापस पलट कर क्रीज की दिशा में पहुंचा दिया और रन्स बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि मिड ऑफ में डीप में फील्डर बिल्कुल हालांकि दायरे के अंदर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को संभाल लिया, समेट लिया और जो रन्स बनने के आसार थे उस पर पानी फेर दिया। और द विकेट हरिप्रसाद की एक और गेंद और शॉट ऑफ लेंथ थी और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में पुल कर दिया है। शानदार 4 रन। Oh yeah. Sex, sex, sex on the beach. Oh yeah. Sex, sex, sex on the beach. Come on now. Sex, sex, sex on the beach. Sex, 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 sex on the beach. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल का स्ट्रोक और शिवो का ये स्ट्रोक जिसके प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। शॉट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप के सीध पर टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, उस उछाल का बहुत खूबसूरती के साथ शिवा ने फायदा उठा लिया और ऑन साइड की दिशा में स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में उन्होंने गेंद को पुल कर दिया जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। तो इस चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति पर 18 रन बना लिए गए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन संतोष आ रहे हैं और गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर दूर वाले छोर से वेंकटेश लगा लिए गए हैं। तो वेंकटेश क्या असर दिखा पाएंगे? संतोष स्ट्राइक एंड पर पहले ओवर में 18 रन बन चुके हैं। और तो विकेट, ये गेंद वेंकटेश के इस बार उछालने का प्रयास बीट होगा, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। जब तक दूसरा खिलाड़ी गेंद को कवर कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया और अब जिम्मेदारी दोबारा बल्लेबाज शिवू पर आ चुका है। शिवा ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, पहले ओवर में 18 रन उनके शानदार बल्लेबाजी की बदौलत प्राप्त हो चुका है। तो अगर आपको 87 रनों को बनाना है तो निश्चित तौर पर ऐसे आक्रामक स्ट्रोक्स की दरकार है। शिवू स्ट्राइक एंड पर फील्डिंग में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पावर प्ले दोबारा लिया गया है जैसा अंपायर ने संकेत किया। इस छोर से ओद विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खूबसूरती के साथ पुल कर दिया। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और ये शानदार 4 रन। तो अंपायर ने नो बॉल का संकेत भी किया और ये बीमार थी। इस गेंद को खेलने का प्रयास अच्छा था, बहुत खूबसूरती के साथ शिवू ने गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में पुल कर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 और फ्री हिट का अवसर अलग से मिलेगा। तो शिवू के लिए बहुत अच्छा मौका है कि शुरुआत में ही वो दबाव बनाएं, गेंदबाजों के विश्वास को तोड़ दें ताकि आगे उनको परेशानी बने। इस योजना के साथ वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आक्रमण पर वेंकटेश तैयार, वो तो विकेट उनकी गेंद, फ्रेट का मौका था, गेंद जाकर मुझे लगता है कि शायद स्टंप से टकराई थी, गिल्लियां उड़ गई, लेकिन नो बॉल का हालांकि फ्री हिट का मौका था। जो थोड़ा सा उत्साह बढ़ गया था वो थोड़ा सा थम गया, क्योंकि फ्री हिट के अवसर में आप जानते हैं कि बैट्समैन को आउट का मौका नहीं होता है
और ऐसे में बैट्समैन बल्लेबाज बच गए और शिव दोबारा तैयार हो रहा है। वेंकटेश एक और गेंद को लेकर ओवर द विकेट, उनकी गेंद इस बार लॉफ्ट कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उस स्ट्रोक को रोकने के लिए वहां पर फील्डर तैनात है। सीधा थ्रो स्टंप पर, लेकिन बल्लेबाज बच गए। बहुत तेजी के साथ उन्होंने दौड़कर ड्रैग करते हुए अपने बल्ले को क्रीज की दिशा में पहुंचा दिया, सुरक्षित कर लिया। 1 रन को खाते में जोड़ लिया गया। इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर 21 पर पहुंच चुका है। 25 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 25 रन बगैर किसी नुकसान के। वेंकटेश आक्रमण पर दोबारा तैयार हो रहे हैं और संतोष उनके सामने मौजूद हैं। संतोष तैयार नहीं थे, इस वजह से वो थोड़ा सा बाहर की तरफ गए, फिर से आकर तैयार हो रहे हैं। तो फील्डिंग की रूपरेखा, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर। ये गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर गेंद को रोकने के लिए बहुत दूर का फासला तय करते हुए आ गए। उन्होंने गेंद को समेट लिया, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को उन्होंने पूरा कर लिया है। रन को बढ़ाकर पहुंचा दिया 26 पर। 26 विदाउट लूजिंग एनी विकेट, 26 रन बगैर किसी नुकसान के। शिवू स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। वेंकटेश की गेंद फुल टॉस थी, मौका अच्छा था, लेकिन क्या कमाल हुआ, बल्लेबाज बीट हो गए। श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है वेंकटेश पर, क्योंकि अचानक एक ऐसी गेंद जो बैट्समैन को उम्मीद नहीं थी, इस गेंद का वो फायदा नहीं उठा पाए। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पैतरा होता है कि आप ऑल इन सडन बीच में एक आध गेंद फुल टॉस करें। एक और गेंद हवा में खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और उनके हाथ से गेंद छूट गई। बल्लेबाज को तकदीर का साथ मिला, वो बच गए। कुछ देर पहले स्वरूप बता रहे थे कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यहीं पर हुआ। ये शिव जो जाबाज बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है, किस्मत को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं और बच गए। इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। तो 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 27, 27 विदाउट लॉस, और अभी बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। अगर इस मैच को जीतना है तो मैं कहता हूं कि बाईपास ब्रिगेड्स को अभी और परिश्रम करना होगा, लेकिन ये 2 बल्लेबाज अगर ज्यादा देर क्रीज पर रहें तो निश्चित तौर पर वो गेंदबाजों के विश्वास को तोड़ सकते हैं। आक्रमण पर दूर वाले छोर से इस वक्त नए गेंदबाज आ रहे हैं, सोहित आ रहे हैं आक्रमण, शोहेब आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, शोहेब स्ट्राइक गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। शिव स्ट्राइक एंड पर, शिव स्ट्राइक एंड पर, और शिव बहुत जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद को ऑन साइड की दिशा में पुल करना चाहते थे, लेकिन न मालूम क्यों थोड़ा सा वो पूरी तरह से विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं खेल पाए। अचानक बीच में जो गेंदें रुक कर आ रही हैं, उसकी वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन एक आध रन उनको लेने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने साथीदार संतोष को आकर उन्होंने समझा दिया। कुछ गेंदें जो थोड़ा सा रुक कर आ रही है उसको खेलने में थोड़ा सा असफल हो रहा है। शानदार मौसम है, आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद संतोष के लिए, और संतोष ने गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। और इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। पिछले स्ट्रोक का विश्लेषण बताते हैं, पहले इस गेंद पर आते हैं। फिर शॉट ऑफ लेंथ हो सकती थी ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको खेलने के प्रयास में बीट हो गए। गेंद टप्पा खाने के बाद स्विंग होकर लेग स्टंप के बाहर की तरफ निकल रही थी और संतोष ने पलक झपकते ही गेंद को पहचानते हुए गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। उस छक्के के पश्चात एक गेंद डॉट में तब्दील हुई। फुल टॉस गेंद, फिर से गेंद को उछाल दिया, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि सिर्फ 2 रन शायद बल्लेबाज के खाते में जोड़ लिए जाएंगे। इन 2 रनों के साथ कुल मिलाकर रन्स बढ़कर 36 पर पहुंच चुका है। 36 विदाउट लॉस, 36 रन बगैर किसी नुकसान के। इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। शोएब इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं जानता हूं डीजे इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में।
बिल्कुल 100% देते हैं और दर्शकों का मन जीतने का उनका भरपूर प्रयास चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धीरज, चौके छक्के विकेट का इंतजार, तभी जाकर शानदार धुन बजेगी तो दर्शकों का भी मनोरंजन हो सकता है। आइए इस गेंद पर आते हैं। शोएब आक्रमण पर तैयार हुए, वो विकेट उनके गेंद इस बार बैकफुट पर गए, हवा में गेंद को उछाल दिया, कवर में फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट गिरा है। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर आपको प्राप्त हुआ, शानदार धुन आपने बजाई, दर्शकों का मनोरंजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उस गेंद को पंच करना चाहते थे कवर की दिशा में, फील्डर वहां पर लगा दिया गया था। शानदार कैच और इस कैच के साथ ही पहला विकेट संतोष के रूप में गिर चुका है। इस वक्त नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, ध्रुवा स्ट्राइक एंड पर है। इस छोर से शोएब की एक और गेंद, ओवर विकेट ध्रुवा के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा पीछे हटे, रूम बनाकर पीछे हटते हुए शरीर से दूर गेंद को कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद बहुत जल्दी निकल गई। बल्ला थोड़ा देर से चला और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 3 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर के समाप्ति पर 36 रन बना लिए गए। आइए आपको इक्वेशन बता दें, बचे हुए 18 गेंदों में 51 रनों की दरकार है। 51 मोर रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। 18 गेंदों में 51 रनों की दरकार। रोमांच क्या होगा, क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर चौका छक्का लगा तो शायद बात बनेगी। और इस वक्त सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं कि गेंदबाजी का जिम्मा किसे सौंपा जाए। हालांकि इस वक्त उनका पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन हर कदम को फूंक फूंक कर रखा जाता है और ऐसे में दूध का जला आप जानते हैं, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और ऐसे में गेंदबाज कप्तान सोचकर किसी ऐसे गेंदबाज को आक्रमण पर लगाना चाहते हैं जो इस वक्त ऐसी परिस्थितियों में दबाव को ज्यादा बनाए। और कप्तान ने इस वक्त दूर वाले छोर से वेंकटेश को दोबारा ले आए हैं। वेंकटेश अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। 36 गेंदें रन्स बन चुके हैं और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त शिवू तैयार हो रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज ध्रुवा है, तो दोनों के बीच में कितना कुछ बन पाएगा। इस छोर से वेंकटेश गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। खेल थोड़ा सा धीमा चल रहा है, मैं अंपायर से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा पुश करें क्योंकि ज्यादा समय निकला जा रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण मैच खेला जाना बाकी है। इस छोर से इस ओवर की वेंकटेश की इस ओवर की ये गेंद, दर्शक बिल्कुल शांत हैं, स्तब्ध हैं, बहुत आनंदित होकर वो मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, कदमों तले आई थी गेंद, लोअर फुल टॉस थी, डिप होकर बिल्कुल ब्लॉक होल्ड की दिशा में आती हुई गेंद को कदमों के सहारे से ऑन साइड की दिशा में फ्लिक के अंदाज में बल्लेबाज ने खेल दिया। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अभी और रनों की जरूरत है। 37 रन कुल मिलाकर बना लिए गए। 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ध्रुव स्ट्राइक एंड पर वेंकटेश की गेंद दूर वाले छोर से ओवर द विकेट। इस बार स्टेप आउट किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उछालने का उनका प्रयास था, लेकिन वहां पर फील्डर है कि या कोई सुपरमैन खड़ा हुआ है। क्या कमाल का क्षेत्ररक्षण आपने देखा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से जा रही थी, हवा में उड़कर अगर कोई खिलाड़ी गेंद को अंदर ढकेल दे तो उस खिलाड़ी को निश्चित तौर पर सुपरमैन ही कहना चाहिए। संभावित चौके को रोक लिया है। इस छोर से इस ओवर की ये गेंद फुल टॉस लोअर थे, फिर से गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, रनआउट का मौका शायद बन जाए। दोनों बैट्समैन एक छोर पर हैं, अच्छा मौका हो सकता था। स्ट्राइक एंड की दिशा में अगर थ्रो हो जाता तो 1 विकेट आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता था। बहरहाल क्रिकेट को जो मंजूर था वो हो गया। रन्स बता दिया आपको, कुल मिलाकर इस वक्त 39 रन बना लिए गए। 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 39 रन से 1 विकेट के नुकसान पर वेंकटेश गेंद को लेकर तैयार।
ध्रुवा ने बहुत जबरदस्त स्ट्रोक खेला था लेकिन छक्का उनको प्राप्त नहीं हुआ। इस छोर से वो विकेट ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और इस बार टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछल कर गेंद निकल गई। थोड़ा सा कदकाठी में लंबे नहीं है ध्रुवा, उन्होंने रीच करते हुए गेंद को पहुंचने का प्रयास करते हुए बल्ले का सिरा देने का प्रयास किया, बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को समेट लिया, फिर से गेंद वेंकटेश के पास आ चुकी है। वो तो विकेट इस छोर से वेंकटेश की ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड ऑन क्षेत्र में फील्डर मौजूद है और क्या जबरदस्त क्षेत्र रक्षण का फैलाव है। वेंकटेश ने अपने गेंदबाजी का जो लाइन और लेंथ है उसके अनुकूल क्षेत्र रक्षण का फैलाव किया है। कहां पर स्ट्रोक्स लग सकते हैं इसको सोचते हुए हर क्षेत्र रक्षक को उस क्षेत्र में रखा गया। इस पेच ये गेंद हवा में उछाल दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। अंपायर ने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, जबरदस्त छक्का। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 45 रन बन चुके हैं। शानदार छक्के के प्रोजेक्ट है क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 और अनोखा अद्भुत स्ट्रोक था। मिड विकेट के बाहर गेंद को थोड़ा सा तिरछा खेलते हुए सही टाइमिंग के साथ पुल कर दिया बल्लेबाज ने। तो 45 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें शेष बची हैं और बचे हुए 12 गेंदों में कुल मिलाकर अभी और 42 रनों की दरकार है, यानी कि प्रति ओवर 21 का औसत चाहिए। हर एक ओवर में 21 रनों को बनाना होगा। 42 मोर रन्स टू गेट इन 12 बॉल्स। 12 गेंदों में 42 रनों की दरकार। फिर से खेल थोड़ा सा रुका हुआ है और आक्रमण के लिए इस छोर पर दिलीप आ रहे हैं आक्रमण के लिए। फिर से उन्होंने अपने कदमों को बॉलिंग मार्क को वो नाप कर तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा अनुरोध है, बहुत ज्यादा समय निकला जा रहा है। ओवर द विकेट इस छोर से गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और इस गेंद को खेलने का प्रयास अंपायर ने संकेत किया कि 1 ऑफ द ओवर और इस वजह से इस गेंद को हालांकि बच गए। गेंद को ज्यादा जोर देने के प्रयास में गेंद बाउंस गई, हाफ ट्रैकर थी, बल्लेबाज के पास मौका जरूर था लेकिन शिव ने उस गेंद को हालांकि वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। इस छोर से वो तो विकेट, एक और गेंद और हवा में उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है, कॉटन बॉल का मौका और उसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए। एक और जबरदस्त विकेट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका है। गौरव इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और विकेट गौरव के लिए गेंद उछालने का प्रयास लेकिन मिस कर गए, बीट हो गए। गेंद उनको चकमा देकर भ्रम में डालती हुए, भ्रमित करते हुए विकेट कीपर की दिशा में निकल गई और रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। धीरे धीरे अब दबाव ज्यादा बढ़ता हुआ इस छोर से गेंद फुल टॉस से ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया, लेकिन उस पुल को रोकने के लिए मिड विकेट डीप में एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है। 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है। छियालीस रन बच चुके हैं। 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब कहना होगा कि ब्लैक माम्बास जो कि बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं, उन्होंने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया और गेंदबाजी में जबरदस्त प्रयास उनका चल रहा है। मजबूत पकड़ बनाकर वो जीत की ओर अग्रसर हैं क्योंकि बचे हुए गेंदों में बहुत सारे रनों को बनाना होगा इस वक्त बाईपास ब्रिगेड्स को और ऐसा मुझे लगता है कि काफी मुश्किल वाला टास्क उनके सामने।
और इस बार ड्राइव कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में, वहां पर फील्डर ने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ दौड़कर एक फुटबॉलर की तरह अंदर की तरफ रोक लिया और बल्लेबाज के पास समय था कि वो 2 रनों को बटोर ले। इन 2 रनों के साथ कुल योग बढ़ चुका है, रन्स बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 48 पर, 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 87 रनों का लक्ष्य है, यानी कि अभी अगर 50 भी बनते हैं तो फिर से 27, यानी कि कुल मिलाकर अभी और 29 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। और इस ओवर के पश्चात आखिरी ओवर शेष बचा हुआ। इस मैच में प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं स्वरूप का सही साबित हो रहा है, क्योंकि इस श्रृंखला का बहुत ज्यादा सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है और 87 का पीछा करना, मुझे लगता है कि लगभग जब आप इस स्कोर को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दबाव आ जाता है कि क्या इस रन का पीछा किया जाता है। यही हुआ और इस प्रेडिक्शन में स्वरूप बिल्कुल सही साबित हो गए। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर ओवर विकेट ये तैयार हो गए, बल्लेबाज ने गेंद को ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया, फील्डर वहां पर गेंद को रोकने में लगे हुए, लेकिन गेंद शायद मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को रोक लिया। 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर इस वक्त 49 पर, 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के पश्चात आखिरी ओवर शेष बचा हुआ है। आखिरी गेंद को लेकर इस छोर से गेंदबाज तैयार हो रहा है। ओवर द विकेट, इस ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस थी, गेंद को बहुत ऊंचा उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन जी नहीं, फील्डर गेंद के नीचे शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन। और इस विकेट के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। माफ कीजिएगा, 4 गेंदें शेष बची हैं, आखिरी ओवर चल रहा है, क्षमा प्रार्थी। 4 गेंदें शेष बची हैं आखिरी ओवर की, और इसमें क्या होगा। इस छोर से इस ओवर की गेंद इस बार फुल टॉस बनाकर ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में, और फील्डर ने गेंद को अंदर की तरफ अपने कदमों से रोक लिया। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर, रन नहीं लिया गया, माफ कीजिएगा। तो इस वक्त आखिरी 3 गेंदें बची हुई हैं औपचारिकता को पूरा करने के लिए। बाईपास ब्रिगेड्स इस वक्त अपना खेल रहा है, और निर्णय जो कि निकाला जा चुका है, ब्लैक माम्बास अपने नाम के अनुसार वो बहुत खतरनाक साबित हो गए। इस बीच गेंद को हवा में उछाल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ रहा है, जी नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से मिड विकेट में 6 रनों के लिए। $55 for the loss of 3 wickets। 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें शेष बची हैं। फुल टॉस गेंद, फिर से गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया। 1 और रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। तो औपचारिकता को पूरा करने के लिए आखिरी गेंद को खेलने के लिए बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। इस आखिरी गेंद के पश्चात आपके सामने फिर से वो जबरदस्त महासंग्राम क्रिकेट का देखने को मिलेगा। ये गेंद बीट हो गए और अंपायर ने कहा कि वाइड है, दिशाहीन गेंद थी। ऐसे में फिर से एक गेंद को फेंकना होगा। वाइड के इस रन के साथ कुल योग बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 57 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं। 57 यानी कि अभी और रनों की दरकार। इस बार पुल करने का प्रयास, अंपायर ने फिर से वाइड का संकेत किया है, और मुझे लगता है कि गेंदबाज इस वक्त थोड़ा सा सभी के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, और 2 गेंदें वाइड में फेंकी गई हैं, और ऐसे में एलविश गेंद को लेकर तैयार। शॉट ऑफ लेंथ थी, गेंद को पुल कर दिया, गेंद कौसों दूर हवा में 6 रनों के लिए। और इसी के साथ इस मैच को ब्लैक माम्बाज ने शानदार तरीके से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मेनी कंग्रेचुलेशंस। टीजे
तो आइए इस वक्त समय है प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को देने का। दोनों कैप्टन से अनुरोध है कृपया टॉस के लिए आए। तो ब्लैक माम्बास की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले राहुल, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 38 रन उन्होंने बनाए सर, और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 रन उन्होंने बनाए। उनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। तो वो कृपया वहां पर पोडियम की दिशा में जाएं और आयोजनकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को उनको प्रदान करें। आइए इस वक्त फाइनल्स की ओर बढ़ते हैं। दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया वो टॉस के लिए आए और इस फाइनल मैच में कौन जीतेगा, कौन बनेगा इस खेमा प्रीमियर लीग 2025 का चैंपियन। तो टॉस के लिए दोनों कैप्टन तैयार हो रहे हैं और ऐसे में ऑफिशियल्स के रूप में मैदान पर अंपायर जा रहे हैं और फाइनल में क्या होगा, दोनों टीमों के बीच में कौन सा ज्यादा सशक्त टीम है, देखने वाली बात होगी। इससे पहले प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार कृपया पुरस्कार वो राहुल को प्रदान करें। अनुरोध है पोडियम की दिशा में राहुल जाएं और वहां पर इस पुरस्कार को दिया जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए थोड़ा जल्दी जाइएगा प्लीज।
ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಶ್ between two teams that have had contrasting group stages. Black Mambas, undefeated in their 3 games, have knocked the door down to the final, but Vikings had to claw their way into the final. A bit of history here. 2003 World Cup at the Johannesburg. India wins the toss, chooses to field, loses the final. 2017 at the Oval, Virat Kohli wins the toss, chooses to field, loses the final of the Champions Trophy. 2023 Rohit Sharma loses the toss, bats first and loses the trophy. So history not in favor of the team fielding first. But will history repeat? Right arm over in the final. Gets the reverse. What a start here for a final. Oh, it's going to be a close call this. I think they'll check this. It was full. Going towards the off stump. The batsman goes for the reverse. Improvises. Waiting for the umpire's decision here. It's gone all the way. What a start. A destructive start here. Sensational shot that from Dr. Murali. He's got the cure under pressure, doesn't he? Right arm over. 6 runs scored off the first ball. Goes for the reverse again. I think he's cleaned him up. I think he has got his man. What a comeback here. A Venkatesh Prasad Soil, Amir Soil moment here. 6 of the previous ball, wicket of the next. All happening here in the grand finale. Oh, it's tension. It's thrilling cricket here. Box office stuff. I don't know how many people are tuning in to the streaming service, but I tell you what, it's probably gone up with those 2 deliveries. 6 of the first ball, cartwheeling wickets of the next. Everything happening here in the finale. Right arm over to the new man. This is shot, this is pulled. Doesn't get all of it. Fielder getting under it. Another wicket. Back-to-back wickets. What a comeback. A roaring redemption there from the bowler. For the drums. Navneet, a man renowned for his footwork, but the only footwork we'll see is him walking back to the pavilion after having not contributed to the scorecard. 2 wickets in 3 balls and a sixer of the first. Everything happening, like I said. Wins the toss. Black Mambas, and they've chosen to field, and after the first ball their supporters were doubting the captain's decision, but not anymore. Number 1, number 3, they are warming the benches at the moment. Plays it down, gets the outside edge, tries to sneak a single there. None of another ball. 3 back-to-back dots here. Hari Prasad, he's had a stupendous tournament so far. Will it be a cherry on top this final, or will it result in a heartbreak? Right arm over, no change in angles, but change in batsman. Shot and wide, over the man at cover point, gets that boundary. The ball racing across the turf, all along the carpet, opens his wide shoulders and gets that boundary away. 10 runs scored on the first 5. Aditya, we are in a Sunday and he's named Aditya. Can he bring out his best game here in the grand final? Full delivery, resolute in defense, ends the first over.
A firework start here, a cracker of a start to a final. 10 runs scored, 2 wickets lost, punching and counter punching from both the corners. No one's really gotten away in this game. That boundary really making it even Stevens at the moment. The power play is done. When will they take the tactical batting power play? So many questions, so little answers here in the calm box. Edge of the seat stuff this. Edge of the seat stuff. Like Team India, who also wear blue jerseys, who went undefeated in the 2023 World Cup final, faltered at the last obstacle and lost their final game. Black Mambas would be hoping, would be praying, would be pleading with the Lords in the heavens that that is not the case with them. But they've started brightly. They've sent 2 informed men packing into the hut. 10 runs scored of the first over. Venkatesh Prasad. Place it down to the bowler. You can see that the fielders are chirping under the nose of the batsman there, trying to put him under pressure, trying to create that pressure. Vijay K. Shetty looked good through this tournament. He's in his purple patch, but in the final, strange things happen. Oh, that's a looser. That was a rank half-track pie. His eyes lit up like deer in headlights, but just couldn't put that away. Needed to clear the infield. There was a boundary for the taking there. Not to be, not to be. A game of ifs and buts, this game. Down the ground. Has he found the fielder? I think he has. As he bounced it, he's taken a stunner in the final, diving forward. For a moment, it spilled out, but now grasped it as if his life depended on it. Third one down for the batting side. Anush will face the thunderbolt from Venkatesh Prasad. He is moving the ball in the air. It's jagging off the track. Everything happening here off the pitch. Oh, that's an anxious shot. That is a nothing shot in the end. Just hangs his bat out to dry. He's lucky that the ball didn't find the edge. But the over continues to be excellent here. Tries to cut it. This time a little too short, little too wide. First time he's gone off radar. First mistake from Venkatesh Prasad, who's looked the part like his namesake. Donning the blue jersey, he's been quite the revelation in this tournament is Venkatesh Prasad. Flicks it on the onside stylishly as well. The fielder just jumping over the delivery there. Gets a couple of runs. Reminds me of the early 2000 fielding that Indians used to do. They used to jump over the ball instead of trying to stop it with their bodies. But a couple of runs taken. The score is on 13, 1.4 overs balled. 13 for 3. Venkatesh trying to get his field absolutely right. You can see a man at catching position at cover point, prowling like a tiger. Swings and misses. Good over this. Venkatesh is miserly. Miserly in that over. 1 ball remaining. He's conceded just 3. End of the second, is it? Yes. End of the second. Just 3 coming off the second here.
This is not just a game of skill, not just a game of technique. It's a game of nerves. How you handle pressure in this big game. Everything on the line. Winner takes those beautiful trophies on my right. The loser also gets a runner-up medal. But who remembers the second man on the moon? No one. It is the winners that are remembered in the history books. And that is what they're fighting for. Not just the trophy, but also the bragging rights here at K.S. Hegde Cricket Stadium. 13 runs of the 2 overs. Run rate has dropped to 6.50. Excellently played through the legs of the fielder there. It's been a long, hard toil for them. Right through the day, the sun was baking them. The sun was beating down on them right throughout the day. And you can see some tired legs out there in the outfield right now. Oh, that's hit away. It's in the gap, or is it? It's gone all the way. Can you believe it? Positive vibes. Turn it up loud. So girl, come wine for me, let's burn up the boat. Make it jump and sweat. Tell you hot like fire, me love when you turn up the club. Make it jump and sweat. Just Oh, what timing. What exquisite timing. For a moment there, I thought it was going right down the throat of the man stationed there. But no, had enough legs, had enough power to take it over the fielder to get that 6. They are throwing another punch here at Shoaib. The off-cutter lofted in the air. The intention always to beat the infield to get that single. The score is on 21 at the moment. They've lost 3, but the middle order really coming into their own. Aditya and Anush, they want a quick partnership here. Tries to cut that ball, but the ball beating the top edge of the batsman. Additional bounce, probably because of the dew that has set in on the pitch, makes the bounce a little spongy. Little too quick on that shot. The batsman didn't wait for the ball to come to him. Shoaib. Again, he brings out the scissors to play the cut, but doesn't make contact. He's looking down on the pitch. He's looking at the heavens. He's waiting for some sort of release at the moment. He's not getting the contact he wants. And his teammates looking on, hoping that he makes some good connection in the remaining delivery. Shoaib, it's been an economical over, even though it went for a 6. This is up. This is reaching the heavens. 3 fielders under it and taken by Shoaib himself. Aditya's quick cameo has ended. Shoaib clearly doesn't trust his fielders. Called for that catch himself and takes it on his own. New man in. Latish, the new man in, lower middle order. Has he got the technique? Has he got the temperament? Has he got the skills to get his team over at least 45 runs to make this interesting? Black Mambas are in the form of their life. 45 is par in this final. Dilip with his slower off cutters. He's a mystery spinner, is Dilip. Not for nothing that the top 5 bowlers in T20 cricket, the rankings I mean, are dominated by the spinners. 4 out of the 5 are actually spinners, wrist as well as mystery. But Dilip seems to be the mystery spinner that the batsman is not able to read at the moment. 2 dots already in the over. Driven down the ground. Will be a single. Oh, it's on, isn't it? The pressure game is really on. The lower middle order faltering here. Dilip trying to get his troops in the right positions. The score is on 22.
Oh, down the ground. How big is that? Big enough, I think. Yes, out of nowhere against the run of play. He smashed that ball right when they needed that six. It's cliche to say here at KS Hegde Cricket Stadium, but that is exactly what the doctor ordered. Shimmies down the track with the dancing shoes on, picks the ball, low full toss and hammers it away. Again, he goes again, but this time flatter, this time straighter to the man at long on, keeps it to a single. The score at 29 for 4, 3.5 overs. Run rate just a touch about 7. At the moment, Dilip, one bad delivery has ruined the over. Beautiful, beautiful. Gets back to his right line and length, beats the outside edge. 4 overs, the score is on 29. A famous American movie director was asked, what is a good movie? He said, a good movie is one which has 3 good scenes and no bad ones. Same applies to a bowling innings. A good bowling innings are 3 good overs and no bad ones. Right now, that's been the story. They've gotten 3 good overs, but will the last 2 overs go for runs? Lot of questions here. Venkatesh has been given the second over because he bowled his first magically. Usually it is Hari Prasad who is given the second over, but not on the final. Will this gamble pay off? It doesn't. It doesn't. This has gone all the way. No, it hasn't. Taken by the man at long on. He was running to his right. Running to his right like a sprinter. Running towards the ball as if the ball owed him money. Was the fielder at long on. Takes a sprinting catch, takes an athletic catch to send Latish back. Latish knows how to use the long handle, so they'll be happy to send him back to the pavilion. The score will remain at 29. Half the side now will be spectators. They've lost half their side. 2 overs still to go. New man in. Karunakar. Has he got the big hitting game? Length ball, hard length there. I think it was the slower ball as well. Has a big swing at it across the line. An ugly hoik, an agricultural shot. Doesn't get him any runs. Venkatesh, he is bowling his heart out. He is bowling the spell of his life. Another dot, another dot. He's piling on the misery. Every dot is like a dagger to the hearts of the supporters of the batting side. Vikings, they fought tooth and nail to get into this position. But right now, there are more dots in the scorecard than in the night sky. Right arm over the wicket to the right-hander. He's cleared him up. The ball goes behind the wicket keeper. Sensational line, unplayable length. That is an absolute jaffa to send yet another man back to the pavilion. Everyone up in the club is down with this rocket. Justin, the new man in, against Venkatesh, who's breathing fire. It's not just balls, it's cannon balls at the moment from this man's arm. He's got a spring in his stride. Down the ground, he's flicked that away. Has it gone all the way? No, it hasn't. A sliding fielder at deep mid-wicket will restrict that for a couple of runs. Chance of a run out at the non-strikers, and the umpire, I'm sure,
has made up his mind that the batsman has crossed. Couple of crucial runs added. It was in the air a long time. The hang time that would have made Michael Jordan jealous. But not a boundary. Not a boundary. They needed that big hits. They needed to clear that man, but not to be. The score is on 31. Final ball of the penultimate over. Justin off the mark of the first ball. Is there a wicket here? He's already got 3. This is through extra cover, straight to the man. Should keep it to a single. Will keep it to a single. Good bullet-like throw there from the deep. The score is on 32 after 5 overs. Just about to run a ball. Not enough. Not enough. In the big final, they need to get to 45 at least against Black Mambas, who are a power-packed, dynamic batting team. Against them, you need 5 over par, but this time, in this final, the pressure has got to the Vikings. Every time they want to go after the bowling, they've lost a wicket. Elvish, renowned for his bowling than his batting. The score is on 32. Final 6 balls of the first innings. Oh, that is hammered down the ground. Should be a single. He is a single in the end. Gets off strike. Elvish, he's been quite economical this tournament. But this is the game that matters. All or nothing here. Through the offside. Stylishly played, but it doesn't matter how you look. It's the runs that you need to get. The finger has gone up. The finger has gone up. Try to steal a second. A classical mix-up there. Like a mix-up in a relationship. One wanted commitment, the other just ran away. Right arm over to the 2-1. Doesn't get all of it, but it falls in no man's land. Should be a single there. They're dealing in changes at the moment. They're dealing with ones and twos when boundaries are the need of the hour. The score is on 35. They've lost 7. 3 balls remaining. 3 wickets in hand. Can they get to that psychological 40 runs? Can they get that par score? But not to be. Again, this is brilliant bowling. This excellent display of defensive bowling. That's what you need to do. Ball to your field. Not try and do anything extravagant in this final. Do the basics right and the game will reward you. 36 on the board. 7 wickets lost. It's Anush who's on strike. Big swing and a big miss. That is a costly miss there. 5.5. They're barely above a runner ball at the moment. What does this last ball hold? Will it be a sixer? They need a sixer. Thisara Pereira in the final ball, 2011 World Cup, hit a 6 and sent the Lankans into the dressing room on a high. But not to be here. A bullseye from the wicketkeeper ends the first innings with 36 runs on the board. 8 wickets lost. They've not got enough. They've not got nearly enough against the Black Mambas. They need a terrific comeback here. It will be a comeback for the ages. They need their bowlers to fire, their fielders to back them up. And they need some divine intervention. They need some divine intervention to defend this low total. But it's the Black Mambas who've been untouchable, who've been the invincibles in this tournament. And they're bossing this game as well. All cards, all the aces in the Black Mambas dugout. But cricket is a game of glorious uncertainties. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato
e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. बजकर 10 मिनट हो चुके हैं और दर्शक अभी बड़े उत्सुक होकर इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। आखिर कौन बनेगा चैंपियन? आदित्य की पहली गेंद राहुल के लिए ऑफ के बाहर थी और इस गेंद को थोड़ा सा रीच करते हुए बल्ले का सिरा देकर कट भर कर दिया। पॉइंट की दिशा में फील्डर जहां पर मौजूद थे उन्होंने गेंद को उठा लिया, रन लेने का अवसर नहीं है।
तो राहुल इस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले वो इंतजार करेंगे, गेंद को चेक करने का उनका प्रयास रहेगा। गेंद को लेकर दूर वाले छोर से आदित्य की एक और गेंद, और इस बार ओवर द विकेट इस गेंद को खेलने के प्रयास में, गेंद को जी हाँ फील्डर गेंद का पीछा कर रहा है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ रनों का बनना शुरू हो चुका है, एक रन बगैर किसी नुकसान के। कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने सारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध है, कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने सारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध है थोड़ा सा वो साइड में है, थोड़ा सा साइड में आइएगा प्लीज, कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा सा साइड में आइए। तो इस छोर पर आदित्य आक्रमण पर दोबारा तैयार हो रहा है। उनकी यह गेंद ऑन द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से बल्ले को लगाकर उन्होंने खेल दिया, और रन अभी भी वहीं पर सिर है। दिलीप इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं, और दोनों बल्लेबाज इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो उनको पहले आसानी से रनों को बटोरना होगा। ऐसा नहीं है कि विकेट अगर गिर गया, इस बीच ये गेंद इस बार स्टंप्स के सीट पर थी, लंबाई में ज्यादा, और उस गेंद को दबाकर पुश भर कर दिया बल्लेबाज ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए। रन अभी भी वहीं पर से है। कभी कभार लो स्कोरिंग टोटल में आप देखते हैं कि जब बैट्समैन थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है तो परिस्थितियां बदल जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको नेचुरल स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत है, अपने प्राकृतिक खेल को दिखाएं। इस छोर से गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, और फील्डर आ चुके हैं मिड ऑन में, थोड़ा सा डीप है, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया, जबकि दोनों बल्लेबाजों के पास दौड़कर एक रन को पूरा करने का समय, और इस एक रन के साथ रन बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 पर। 2 रन बना लिए गए। राहुल स्ट्राइक एंड पर है, तो राहुल और दिलीप के बीच में कितनी भागीदारी बन पाएगी। इस छोर से आदित्य विकेटों की तलाश को अंजाम देने के लिए ये गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, और एक रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। पावर प्ले जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। स्वरूप भी कह रहे थे कि शुरुआत का ये पावर प्ले मैं समझता हूं कि बहुत मायने रखते हैं। इसमें अगर वाइकिंग्स ने अच्छा किया, वाइकिंग्स ने अगर विकेट प्राप्त कर लिए, रनों पर अंकुश लगाए, तो बात बन सकती है। जबकि दूसरी और विपक्षी टीम के लिए माम्बास पहले ही जानते हैं कि शुरुआत के पावर प्ले इनके लिए कितना बहुत जरूरी है कि इस ओवर में वो अच्छे खासे रन्स बनाए। बहरहाल पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर मात्र 3 रन अब तक बना लिए गए। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। एक छोर पर दिलीप है, दूसरे छोर पर राहुल है, तो दोनों के बीच में भागीदारी बनने जा रही है, लेकिन अब तक मात्र 3 रन बना लिए गए। दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए आक्रमण पर दूर वाले छोर से वैभव आ रहे हैं, और दूसरी ओर कहा जाए कि विकी वाइकिंग्स के कप्तान के पास इस वक्त एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि उनके पास जो विकल्प है, जो गेंदबाजी का ऑप्शन है, उसमें क्या कौन से गेंदबाज को वो किस वक्त कहां पर लगाएं, ये कप्तान की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि आमदनी उनके पास ज्यादा नहीं है। सिर्फ 36 रन उन्होंने बना लिए हैं, 37 रनों का लक्ष्य उन्होंने विपक्षी टीम को रखा हुआ है। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर वैभव तैयार हो रहे हैं, और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार। राउंड विकेट ये गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ थी, और गेंद को पुल कर दिया। फील्डर डीप में आ चुके हैं स्क्वायर लेग में। हालांकि एक खिलाड़ी नजदीक था, उनको बीट करती हुई गेंद गई, उनके पास कैच का मौका जरूर हो सकता था, लेकिन वो मिस कर गए, और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया। रन बढ़कर 4 पर पहुंच चुका है। दिलीप इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, राहुल नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। वैभव इस वक्त आक्रमण पर योजना बनाकर हर एक कदम फूक फूक कर उनको रखना होगा। राउंड विकेट ये गेंद हवा में खेलने का प्रयास था, फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे, लेकिन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया। तो जैसा मैंने कहा कि हर एक कदम को फूक फूक कर रखना होगा, उसी अंदाज में वाइकिंग्स के गेंदबाजों को हर एक गेंद को चुन चुन कर लाइन और लेंथ में डालना होगा, क्योंकि रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर ज्यादा नहीं बनाए। इस छोर से राउंड विकेट ये गेंद इस बार हवा में खेल दिया, गेंद को कैच हो सकता है, लेकिन फील्डर झुककर गेंद को अंतिम क्षणों में कैच करने के प्रयास में उनके हाथ से गेंद छूट गई, और बल्लेबाज को एक जीवन दान मिला, वो बच गए बाल बाल। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रन बढ़कर इस वक्त 6 पर पहुंच चुका है, 6 रन बगैर किसी नुकसान के।
राहुल और दिलीप इस वक्त पारी की बागडोर को संभालते हुए। दिलीप स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। वैभव की एक और गेंद, राउंड विकेट इस बार स्टंप्स के सीट पर थी, ड्राइव करने का प्रयास था और मिड ऑन क्षेत्र के फील्डर गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और इसको देखते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन को दौड़कर पूरा कर लिया। ब्लैक माम्बास, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा स्लो पॉइजन का काम करते हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त ये स्लो पॉइजन का काम ये दोनों बल्लेबाज करने जा रहे हैं। राउंड विकेट ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी और बल्ले का सिरा देकर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को डिक्लेयर एरिया के बाहर खेल दिया है। क्या बात है। राहुल इस वक्त गेंद को देखकर उसके मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद में थोड़ा सा विर था, टप्पा खाकर ऑफ स्टंप के बाहर उछल कर आई, अंतिम क्षणों में बल्ले पर आने दिया, फिसलने दिया गेंद को थर्ड मैन की दिशा में जहां पर डिक्लेयर एरिया था। 2 रन खाते में और राउंड विकेट एक और गेंद थी, फिर से गेंद को कट भर कर दिया। पॉइंट क्षेत्र में 1 रन को दौड़कर राहुल ने पूरा कर लिया। अपने साथीदार को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी, जबकि कुल रन संख्या इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 10 रन बन चुके हैं 2 ओवर के समाप्ति पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs, स्कोर इज ऑन 10 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 10 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी कि अभी आपको 4 ओवर्स में 24 गेंदों में, बचे हुए 24 गेंदों में 27 रनों की दरकार है। 27 more runs to get in 24 balls। 24 गेंदों में 27 रनों की दरकार। दोनों बैट्समैन इस वक्त आपस में बातचीत करने के पश्चात कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और वो निश्चित तौर पर एक योजना बना रहे हैं कि इस वक्त परिस्थिति की मांग क्या है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानबूझकर वो सिंगल को बटोर रहे हैं, प्लेसमेंट को करते हुए, गेंद को जब प्लेसमेंट करते हुए रनों को बटोरने का उनका प्रयास चल रहा है, ताकि सिंगल्स में थोड़ा सा लय उनको प्राप्त हो जाए, फ्लो प्राप्त हो जाए। मोमेंटम की तलाश कर रहे हैं। जब एक बार मोमेंटम मिल गया तो फिर आसानी के साथ रनों को बनाया जा सकता है। ऐसे में स्ट्राइक एंड पर फिर से राहुल आ चुके हैं और पावर प्ले का संकेत अंपायर ने संकेत किया। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर आदित्य अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। तो आदित्य क्या असर दिखा पाएंगे इस छोर से? उनकी ये गेंद ओवर द विकेट और इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया। खूबसूरत स्ट्रोक, 2 फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास है। 1 रन के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 पर 11 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 11 रन बगैर किसी नुकसान के। 37 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। राहुल और दिलीप, 2 ऐसे जाबाज जो ऐसे जहरीले सांप अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, माफ कीजिएगा, जोक सपाट इस छोर से, क्योंकि ब्लैक माम्बाज उन्होंने अपनी टीम का नाम रखा हुआ। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बल्ले को चूमकर विकेट कीपर के हथेलियों में जाकर समा गई। शानदार कैच के साथ ही पहला झटका लगा। थैंक यू दीजिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैमरामैन इस वक्त हर उस दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसीलिए जितने सारे दर्शक दूर दूर बैठे हैं चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान ले आइए कृपया, क्योंकि कैमरामैन तैयार है, कब वो आप कैप्चर करें आपके चेहरे को पता नहीं लगेगा। और देश विदेशों में ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो फिर आपका चेहरा अगर मुस्कुराता हुआ दिखे तो निश्चित तौर पर आपके पहचानने वाले बिल्कुल सराहना करेंगे। इस बीच गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। दूर वाले छोर से इस ओवर की गेंद उस विकेट पर आएंगे विश्लेषण के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, फिर से बल्ले को लगाने का प्रयास किया। एक बैट्समैन उस गलती पर अफसोस करने के लिए डगआउट में जाकर विश्राम कर रहे हैं और उस गलती को दोबारा करने का प्रयास था। इस बार हरिप्रसाद स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। एक बहुमूल्य विकेट जो कि गिर चुका है। दिलीप के रूप में बल्ले को लगाने के प्रयास में ललचा गए थे, बल्ले का महीन स्पर्श करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। अपने गलती पर अफसोस कर रहे हैं इस वक्त हरिप्रसाद स्ट्राइक एंड पर। उनके लिए गेंद, उन्होंने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया और शानदार 4 रन बटोर लिए।
थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिप्रसाद जैसे ही मैदान पर उतरे, निश्चित तौर पर जितने सारे चाहने वाले हैं उनके मन में कहीं ना कहीं गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि हरिप्रसाद वही बल्लेबाज है जिसने पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों को बटोरा, अपनी टीम को जीत का स्वाद चखाया। इस वक्त उनके शानदार चौके ने रंग बदल दिया है। इस छोर से एक और गेंद, इस बार उछालने का प्रयास थोड़ा सा बीट हो गए। आदित्य की यह गेंद अच्छी गेंद थी, लेंथ में ज्यादा, और इस गेंद को घुमाने का प्रयास जिसमें बीट हो गए। तो वो स्ट्रोक जिसको खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाकर जैसे ही ऊपर उठी, एक प्रेडिक्शन था, एक पूर्वानुमान था कि गेंद इस अंदाज में आएगी, वो बहुत बिल्कुल सही साबित हो गया और गेंद को पुल कर दिया। उस छोर से आदित्य आक्रमण पर दोबारा कूदने के अंदाज में वो दौड़ते हैं, रनअप लगाते हैं, उनकी गेंद को दोबारा स्क्वायर लेग की दिशा में उछाल दिया है। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, हवा में गेंद को उठ खेल दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक था और इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025। अगर आप रिप्ले में इस स्ट्रोक को देख रहे हैं तो गेंद जिस तरह से स्विंग हो रही थी, पूरी तरह से पहले लाइन के ऊपर आ गए और इस गेंद को जो हाफ ट्रैकर के अंदाज में, टप्पा खाने के बाद थोड़ा हाफ ट्रैकर तो नहीं थी, लगभग थोड़ा सा गॉ शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाकर जैसे ही ऊपर उठी उस गेंद को खूबसूरती के साथ लपेटे में लेकर स्क्वायर लेग के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के ने पूरे विश्वास पर पानी फेर दिया गेंदबाजों के, क्योंकि शुरुआत में जो दबाव बनाने का प्रयास वाइकिंग्स कर रहा था, मांबा ने अपने जहर से उसको पूरा साफ कर दिया। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 21 रन बना लिए गए हैं, यानी कि अब बचे हुए 3 ओवर्स में 18 गेंदों में आपको रन 16 रनों की दरकार है। 18 गेंदें शेष बची हैं और 16 रनों की दरकार है। 16 रन टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। 18 गेंदों में 16 रनों की दरकार। एक छोर पर हरिप्रसाद है और राहुल एक छोर पर है। राहुल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अब चिंता का विषय इस वक्त विकी वाइकिंग्स के कप्तान के माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें कि किसको गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जाए। नवनीत आक्रमण पर आ रहे हैं, उनकी यह गेंद दिशाहीन गेंद थी और अंपायर ने कहा कि वाइड है। एक अतिरिक्त रन के साथ अब 15 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए ब्लैक मांबास को। और राहुल ने गेंद को देखा, जाने दिया, जानते थे कि गेंद वाइड हो सकती है। ऐसे में नवनीत आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। नवनीत को सोचना होगा कि कप्तान ने उनको किस जिम्मेदारी के साथ मैदान पर इस वक्त गेंदबाजी के लिए उतारा है। ओवर द विकेट ये गेंद, इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता था। इनफील्ड को बीट करती हुई गेंद जा रही थी, डीप में एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने गेंद को अंदर की तरफ फुटबॉलर की तरह गेंद को रोक लिया। दूसरे फील्डर ने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया, लेकिन इस दौरान राहुल ने 2 रन का रास्ता बना लिया। इन 2 रनों के साथ कुल मिलाकर रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 24 पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 24 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल नाम में ही कुछ अलग है, कुछ जबरदस्त दिखाई पड़ता है। ये गेंद पीछे हटे, गेंद को धीरे से टैकल किया, बहुत खूबसूरती के साथ योजना बनाकर। वहां पर खाली स्थान था, लगभग पॉइंट बैकवर्ड की दिशा में गेंद को हल्के हाथ से पुश कर दिया। 1 रन चुराकर अपने साथीदार को यानी हरिप्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी है। हरिप्रसाद स्ट्राइक पर है। इस छोर से ओवर द विकेट ये गेंद, और हरिप्रसाद ने गेंद को हवा के रास्ते उछाल दिया, कैच होगा। फील्डर लॉन्ग आउट क्षेत्र में आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। बहुत बड़ा विकेट, शानदार विकेट गिर चुका है। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शानदार कैच के प्रायोजक थे क्षेमा प्रीमियर लीग 2025।
ये मैदान, ये कैंपस का मैदान बहुत खूबसूरत, जिसमें प्रकृति के साथ बड़ी बड़ी इमारतें उगाई हुई हैं, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है। फ्लडलाइट की रोशनी झिलमिलाती हुई शानदार दृश्य, और एक शानदार विकेट इस वक्त गिर चुका है। इस छोर से ओद विकेट ये गेंद, इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर गेंद को खेलना चाहते थे, बच गए कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। एक बहुत बड़ा विकेट इस वक्त गिर चुका है। आउट होकर हरिप्रसाद विश्राम कर रहे हैं डगआउट में। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा रुक कर खेलने की जरूरत थी, लेकिन क्या करें, क्रिकेट की अनिश्चितताएं रंग दिखा रही है। ये गेंद फुलटॉस थी, गेंद को थोड़ा सा फ्लैट शॉट के अंदाज में लॉन्ग आउट क्षेत्रों में खेल दिया। एक रन को दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ रन्स बढ़कर 26 पर पहुंच चुका है। इक्वेशन आपको बता दे, बचे हुए कितने गेंदों में कितने रनों की दरकार है। इस छोर से वो विकेट, 13 बॉल्स टू गो, 11 रन टू गेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर ने कहा कि वाइड है। वाइड के इस रन के साथ अभी मुझे लगता है कि शायद 10 रनों की जरूरत है। 13 गेंदें शेष बची हैं। 13 बॉल्स टू गो एंड 10 रन्स टू गेट। चैंपियन बनने के लिए 10 रनों की जरूरत। इस छोर से गेंद इस बार पीछे हटे, क्या बात है, राहुल ने बल्ले का सिरा दे दिया है गेंद को, और गेंद डिक्लेयर एरिया में 2 रन खाते में, और इसी के साथ अब 8 रनों की जरूरत है। ओवर समाप्त हो चुका है, तो कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 4 पर, और 4 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यानी कि बचे हुए 12 गेंदों में अभी 8 रनों की दरकार है। 12 गेंदें शेष बची हैं, 8 रनों की दरकार। ब्लैक मम्बर्स के शुरुआत के पहले क्रम के बल्लेबाज इस वक्त डगआउट में जाकर विश्राम कर रहे हैं, अलावा इसके कि राहुल एक छोर पर डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आक्रमण पर मुरली शंकर भट्ट आक्रमण पर आ रहे हैं। उनकी गेंद, और इस गेंद को हालांकि वाइड का संकेत किया अंपायर ने। गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा पीछे हटते हुए बल्लेबाज गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बच गए कि बल्ला नहीं लगा, वरना अंपायर इस वाइड को रद्द कर देते। 1 रन अतिरिक्त के खाते में अभी 7 रनों की जरूरत है। रॉकी स्ट्राइक पर है, वो तो विकेट रॉकी के एक लिए गेंद, और रॉकी के लिए गेंद, माफ कीजिएगा, हवा के रास्ते गेंद को खेल दिया। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर गेंद को नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। एक और शानदार विकेट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार रॉकी आउट होकर पवेलियन लौट गए, और ये कैच लपक लिया गया। और पिछले मैच की अगर बात करें, विकी वाइकिंग्स का कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले मैच में बिल्कुल चमत्कार ही हुआ। 52 रनों का वो पीछा कर रहे थे, कैसे किस तरह से रन बने और आखिर में किस तरह से वो जीते, ये बिल्कुल एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। उनकी प्रशंसा करनी होगी। पूरी टीम वर्क के साथ वो काम कर रहे हैं। शानदार क्षेत्ररक्षण इस वक्त फैलाया गया है। मुरली कृष्ण इस वक्त मुरली शंकर इस वक्त आक्रमण पर, ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार थोड़ा सा चेक करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। बोपन्ना स्ट्राइक एंड पर है, 7 रनों की दरकार है। गेंदें धीरे धीरे कम हो रही है, और मुरली शंकर भट्ट योजना के साथ, योजनाबद्ध तरीके से वो हर एक गेंद को बिल्कुल बहुत सटीक लाइन और लेंथ में करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बैट्समैन को ज्यादा मौका न मिले। और इस वक्त उन्होंने जानबूझकर एक खिलाड़ी को, आमतौर पर जिस तरह से टेस्ट में खिलाड़ी फील्ड प्लेसमेंट रखा जाता है, उस अंदाज में रखा है। ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया, 1 रन चुरा लिया गया है। एक रन के साथ अब कुल मिलाकर 30 रन बना लिए गए। 6 रनों की दरकार है आखिर में, और राहुल इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं।
31 for the loss of 3 wickets. राहुल स्ट्राइक एंड पर। इस छोर से मुरली शंकर भट्ट की गेंद इस बार हवा में गेंद को खेल दिया और फील्डर वहां पर कवर में मौजूद है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच। In the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, थैंक यू, life is your थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल आउट होकर पवेलियन लौट गए और एलविश इस वक्त आ चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन आपको बता दें, 8 गेंदों में 6 रनों की दरकार। आश्चर्य की बात है, पिछले मैच में 82 रनों को बनाने वाली ये टीम यानी कि ब्लैक माम्बाज जो इस वक्त इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए परिश्रम उठा रही है। पीछे हटकर गेंद को बल्ले का सिरा देकर खेल दिया, 1 रन खाते में और जोड़ लिए गए और इस 1 रन के साथ अब 5 और रनों की जरूरत है ब्लैक माम्बास को एक नया इतिहास रचने के लिए। वाइकिंग्स के गेंदबाज कप्तान इस वक्त अभी भी बहुत जोरों शोरों के साथ उनके उत्साह, जी हाँ, विश्वास के साथ गेंदबाजी उनकी चल रही है। खास तौर पर मुरली शंकर भट्ट योजनाबद्ध तरीके से वो हर एक गेंद को सटीक लाइन और लेंथ में करने का प्रयास कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव कर दिया लेकिन फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई। रनआउट का मौका शायद बन जाए लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर की तरफ संकेत किया है। क्या होगा ये कुछ ही देर में पता लगेगा। क्या बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए या नहीं, ये देखने के लिए तीसरे अंपायर इस वक्त एक्शन में है। डीजे थैंक यू डीजे। तो अंपायर ने तीसरे अंपायर ने कहा कि बैट्समैन सुरक्षित हैं। 1 रन को पूरा कर लिया गया है। तो फिर से आपको दोहरा कर बता दें, पिछले मैच में ब्लैक माम्बास ने 86 रन बनाए थे निर्धारित 6 ओवर्स में। वही टीम इस वक्त 36 रनों का 37 रनों का पीछा कर रही है और काफी मुश्किलातों का सामना उनको करना पड़ रहा है। 1 रन के साथ मुझे लगता है कि अब सिर्फ 4 और रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए ब्लैक माम्बास को। और ओवर समाप्त हुआ, कुल मिलाकर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 33, यानी कि 4 रनों की दरकार, 6 गेंदें शेष बची हैं। कौन बनेगा चैंपियन? क्या विकी वाइकिंग्स के पास एक ऐसा गेंदबाज जादूगर मौजूद है जो आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 4 रनों को रोक सकता है? जबरदस्त संघर्ष इस वक्त मैदान में, सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं। कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों बल्लेबाज आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं। अंपायर इंतजार कर रहे हैं कि कब दोनों खिलाड़ी जी हाँ खेलता कब शुरू होगा, इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कप्तान किस गेंदबाज को इस वक्त आक्रमण पर ले आते हैं? एलिवेशन ऑन स्ट्राइक एंड पर है, बोपन्ना स्ट्राइक एंड पर है और आक्रमण पर दूर वाले छोर से बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम 12th मैन अगर कोई हो तो बता दे कृपया। बॉलर्स नेम जस्टिन आक्रमण पर आ रहे हैं
बोपन्ना उनके सामने मौजूद हैं। 6 गेंदों में 4 रनों की दरकार। कौन बनेगा चैंपियन इस खेमा प्रीमियर लीग 2025 का? ऐसे में इस छोर पर जस्टिन आक्रमण पर तैयार, बोपन्ना स्ट्राइक एंड पर है। 6 गेंदों में 4 रनों की दरकार और ऑन साइड की दिशा में गेंद को उछाल कर खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया है। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैटिंग टीम से कृपया एक खिलाड़ी यहां पर आए। बैट्समैन नेम प्लीज। वेंकटेश इस वक्त स्ट्राइकर पर आ रहे हैं। जी हाँ, जस्टिन गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और पिछला विकेट ऑन साइड पर घुमाकर खेलने के प्रयास में कैच कर लिए गए। कमाल का कैच था, एक बार हाथ से बाहर निकल गया लेकिन फिर से उसको क्लपक लिया फील्डर ने। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत खूबसूरती के साथ ये गेंद, जस्टिन की गेंद साएं साएं कर निकल गई। उछाल भी ज्यादा था, रफ्तार लगभग 75 km की रफ्तार की ये गेंद। 4 गेंदों में 4 रनों की दरकार है। जबरदस्त संघर्ष है इस छोर से इस ओवर की ये गेंद। वेंकटेश स्ट्राइक एंड पर है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पटकी हुई गेंद, अंपायर ने कहा कि वाइड है। एक अतिरिक्त रन। जस्टिन न मालूम क्यों इस बार कंधों का ज्यादा उपयोग करते हुए गेंद को पटक दिया उन्होंने, लेकिन गेंद दिशा से बाहर गई और अंपायर को मजबूरन इस गेंद को वाइड करार देना पड़ा। तो एक अतिरिक्त रन, यानी कि अभी 4 गेंदों में 3 रनों की दरकार है। इस छोर से यह गेंद वेंकटेश स्ट्राइक एंड पर है, उनके लिए गेंद, उन्होंने गेंद को हल्के हाथ से पुश पर कर दिया। गेंदबाज खुद आकर गेंद को उठा रहे हैं अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ अब गेंदें बची हुई हैं 3 और रनों की दरकार है 2। 2 रन्स टू गेट इन 3 बॉल्स। 3 गेंदों में 2 रनों की दरकार। एक छोर पर वेंकटेश है, अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज एल्विश आ चुके हैं। तो वेंकटेश ने एल्विश को समझा दिया है, उनको उनके कान में 2 शब्द डाल दिए हैं और वो इस वक्त तैयार हो रहा है। एक छोर पर गेंद को लेकर जस्टिन लंबे बॉलिंग मार्ग से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। बहुत संघर्ष के साथ ये मैच चलता हुआ, इस बार लेग स्टंप के बाहर थे और अंपायर ने हाथों को फैलाकर दोबारा वाइड का संकेत किया। एल्विश ने अपने शरीर को अंदर की दिशा में, स्टंप्स की दिशा में खींचकर इस गेंद को जाने दिया। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन बन गया है। मैच बराबरी पर आकर टिका हुआ है, 1 रन की दरकार है और ऐसे में ब्लैक मांबास जीत की ओर अग्रसर है। दोनों बल्लेबाज आपस में दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। वेंकटेश ने आकर फिर से एल्विश के कान में कुछ शब्द डाल दिए हैं। योजना बन रही है। जस्टिन ने इस ओवर में 2 वाइड फेंके हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफी परिस्थितियां बदल गई। जस्टिन आक्रमण पर तैयार, इस छोर से उनकी गेंद, एल्विश स्ट्राइक एंड पर है, ऑफ स्टंप के बाहर थे और इस गेंद को वाइड करा दिया है। और इस वाइड के साथ ब्लैक मामा जो कि इस शानदार क्षेमा प्रीमियर लीग 2025 के बन चुके हैं चैंपियन। पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी कोई दीवानी, मिला जो संग
दीजिए दीजिए, बस 1 मिनट आपका लूंगा, फिर आप शानदार तरीके से धुन को बजा सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मैनी कंग्रेचुलेशंस ब्लैक माम्बास को। उन्होंने अपने नाम के अनुसार इस मैच को बहुत शानदार तरीके से जीत लिया, उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी ओर विकी वाइकिंग्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो रनर्स अप रह चुके हैं, उनको भी अभिनंदन। आइए इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच का प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देना बाकी है। तो एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा ऑलराउंडर जिसने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में कमाल किया है, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो शानदार प्रदर्शन करने वाला एक ऐसा गेंदबाज जिसने गेंदबाजी में शानदार 2 विकेट अर्जित कर लिए और बल्लेबाजी में एक शानदार छक्का, एक शानदार चौका लगाकर 10 रन बनाने वाला हरिप्रसाद शेट्टी, कमाल की बल्लेबाजी और कमाल की गेंदबाजी, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे लगता है कि बस इतना ही। मेरे साथ स्वरूप जो कि आपको अंग्रेजी में बहुत शानदार तरीके से विवरण सुना रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अंपायरिंग में तीनों अंपायरों ने बहुत शानदार काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्कोरिंग पैनल में हमारे साथ जितने स्कोरर्स मौजूद थे ऑनलाइन और मैनुअल स्कोरिंग में, उन सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और ऑर्गेनाइजर्स ने, आयोजनकर्ताओं ने इस क्रिकेट श्रृंखला में हमें आमंत्रित किया अपने योगदान के लिए, इसीलिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरा कार्यक्रम जो कि मेन स्टेज पर पोडियम की दिशा में कृपया कैमरा को ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो, सीधे से Ninad, man of the series here tuyara. Match, man of the match here Hari Pandit. What happened? Man of the match series here.
ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಪವನಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ ಕೊನೆ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೀರೀಸಿಗೆ ಹರಿಕೂರ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅದೆಂತ ಉಂಟು ಅವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಎರಡು It was a wonderful day today. Each and every match went to the wire. I should congratulate all the players for sportingly enduring the sun and going to this next wonderful morning. We have come to the end of KPL 2025. For the award ceremony, I request Murli sir to escort Professor Dr. Sripada Mahendale, Head of the Department of Anesthesiology. And I also call upon the owners of the teams who are still with us at this hour. Please come on the stage. From the Black Mambas, the Raj Blasters, anyone from? Okay, we'll go to the prize distribution straight away. For the man of the finals, any guesses? Call upon man of the finals is Hari Prasad. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸರ್ ನಾನು ಅದು ಫೈನಲ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ವಿಜ್ಜ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಬೌಲರ್ ವೈಸ್ ಇರೋದು ಮತ್ತಿಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹರಿ The sponsor of this award is Kishan Alwa. The best batsman goes to Hari. Murli. Best bowler idu. Elvis 7 wickets, Hari Prasad 7 wickets, Aditya 6 wickets, Anup ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 5 wickets. ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ The best bowler goes to Elvis. The prize sponsored by Dr. Naresh Rai. A small mistake from my part. The best batsman actually is Rahul Gedda. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ Hari Prasad. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಜಿ ಜಿ ಅವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ Shripad. ಸರ್ ಎಸ್ Cash was sponsored by Dr. Sripada. And the best man of the series, Hari Prasad.
Now I ask the second best team of the tournament to come and collect their silver medals. The team of Wiki Vikings, led by Captain Murli Shankar Bhatt. Please. Congratulations, boys. I request all of you to stay back and also Papa. They win the runners trophy. Murli, the captain of team Wiki Vikings, owned by Dr. Vikram Shetty, head of the Department of Orthopedics. Come sit, some of you. Well played, boys. Murli sir, just 30 seconds. The day I selected the T-shirt, that time only I knew I am going to be the runner-up because this is New Zealand T-shirt. Okay. And two things sweeter in this finals. One thing, after so many KPLs, first time captaining any team, I reached at least finals. Otherwise, I lose in semi-finals or my team will be fantastic and at the end, somehow, some bad luck, I will lose and I will be out of the finals. So this is sweetest. And cash back to my owner, Vikram sir told every time we reach the finals. So at least as a captain, I am happy that honors money is back. Okay, baki dida amele. So I actually congratulate the winning team. They have played wonderfully throughout, just like how Indian team played in the Champions Trophy. Similarly, okay, they have played, and their shirt is blue team, blue jersey. So that was also in my mind. So, and all the other teams who have played here and the organizers, including me, wonderful work. Congratulations to everyone. Congrats and thanks, Murli. Now I call upon the winning team members, led by Dilip, to come and collect your medallions. Sajal pui. Venki pui. Na bartina. Nimman bit hogala na. Pui. Kirader. Move pass.
Dilip, before you receive the trophy, 2 words. As I told before, as the Black Mambas, we have won, and we made our owners proud. And my last year's dream got this year's. Congratulations, Dilip. You are led commendably. Now you are going to receive an award. Congratulations, Team Black Mambas, the champions of KPL 2025. It was a wonderful evening. Sorry to say that we have come to the end of the day. First of all, I would like to thank the management for giving us an opportunity to organize this tournament. I thank Professor Dr. Sripad sir for accepting our invitation and came here as a chief guest for this function. Thank you, sir. I thank all the organizers, Dr. Karunakar Shetty, Dr. Siddharth Shetty, Dr. Murali Shankar Bhatt, Dr. Avnish Bhandari, and others who have helped us in organizing this tournament. A big thanks to you guys. I thank the officials who did a splendid job, not even one controversy in this entire tournament. Hats off to you officials. Thank you guys. Commentary was superb. You made us proud by the way you spoke. Thank you, dear commentators. Rajesh Anna, you did a wonderful job. If not for you, it wouldn't have been possible for us to organize this tournament. Dear owners, a big thanks to you guys. You guys made this tournament happen. Thanks to you guys. Media guys, lovely coverage. This was super. Everyone enjoyed it and everyone saw to that. Everywhere it was seen. Maintenance, thanks to you guys. You made it wonderfully arranged for us. I think I have not forgotten anyone's name. If I have forgotten, it is not intentional. Thanks to one and all. Dear all, thank you guys. Have a good night. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ